एक मिनट, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड बैठिए, एक सेकंड, एक मिनट, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड प्लीज, एक प्लीज, प्लीज, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज, 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 चुप। माननीय सदस्यगण, एक मिनट, प्लीज, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, कंट्रोल मेरे पास है, प्लीज सिट डाउन, प्लीज, एक मिनट, एक मिनट, माननीय सदस्यगण, एक मिनट प्लीज, 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 माननीय सदस्य, एक विषय मैं बता रहा हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ मैं, माननीय सदस्यगण, चलिए, माननीय जो एक मिनट, प्लीज, 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 हाँ, प्लीज, प्लीज बैठो, बहस का दे रहा हूँ, प्लीज बैठो, बहस का दे रहा हूँ मैं, प्लीज, प्लीज बैठिए, बहस का दे रहा हूँ, प्लीज। माननीय सदस्यगण, जो कुछ भी टेक्निकल चूक है मैं उसकी जांच करूँ, इसमें पॉइंट ओके, प्लीज, प्लीज, मैंने व्यवस्था दे दी है, इतनी बड़ी व्यवस्था दे दी है मैंने, नाउ जो टेक्निकल चूक हुई है उसको मैंने बता दिया ना, ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक चूक है भाई, प्लीज, ओके, प्लीज, क्या तरीका है, नो, எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் எழுப்பியுள்ள சில ஆட்சேபனைகள் குறித்து நான் விசாரணை செய்கிறேன் என்று லோக்சபா சபாநாயகர் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார். माननीय सदस्यगण प्लीज बैठिए, माननीय प्लीज एक मिनट बैठिए, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, आप बैठिए, 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 विषय आपको मौका देंगे, प्लीज चलिए, प्लीज, कोई अपमान नहीं है, टेक्निकल चूक है, ओके, प्लीज, 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 आप सदन के नेता ऐसे मत करिए, मैंने इतनी व्यवस्था दे दी, प्लीज, प्लीज, प्लीज। माननीय सदस्यगण, नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए पूरे देश को बधाई देते हुए मुझे बेहद खुशी है भरी है। புதுதில்லியில் நடந்த G20 உச்சி மாநாடு ஒரு வெற்றிகரமான மாநாடாக இருந்தது என்று நாட்டு மக்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். देश की नेतृत्व की क्षमता को एक नया आयाम दिया है। मैं इस आयोजन को आम जनों का आयोजन बना देने की माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन की सराहना करता हूं। இந்த உச்சி மாநாட்டை ஒரு பொதுமக்களின் உச்சி மாநாடாக ஒரு நிகழ்ச்சியாக நடத்தியது குறித்து பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு நான் என் பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். दुनिया भर से आए 42 प्रतिनिधि मंडलों के
विस्तार, भव्यता और प्रभाव में अभूतपूर्व था। பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து வந்து உலக தலைவர்கள் கலந்து கொண்ட இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு மாபெரும் விழாவாக, பிரம்மாண்டமான விழாவாக இருந்தது. भारत की G20 की अध्यक्षता समावेशी, आकांक्षी, कार्य उन्मुख, निर्णायक और जन केंद्रित रही है। பாரதத்தின் G20யின் தலைமை பொறுப்பு ஒரு முடிவெடுக்கும், சிறந்த முடிவுகளை எடுத்த ஒரு தலைமையாக இருந்தது. और ये आने वाले दशकों में वैश्विक व्यवस्था को नया रूप देने में सहायक। நம்முடைய இந்த தலைமை வருகின்ற காலங்களில் உலகத்திற்கு ஒரு புதிய திசையை கொடுக்கும் ஒரு தலைமையாக இருந்தது. समिट घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया और இந்த G20 உச்சி மாநாட்டில் நிகழ்ந்த विश्व स्तर पर ये स्वीकार किया गया है இறுதி அறிக்கை அனைத்து நாடுகளின் முழு சம்மதத்துடன் வெளியிடப்பட்டது என்பது ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம். उत्तर दक्षिण के बीच दूरी के बांटने और पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। வடக்கு உலகம் தெற்கு உலகத்திற்கு இடையே உள்ள தூரத்தை குறைக்கும் வண்ணமாக இந்த உச்சி மாநாடு அமைந்தது. प्रतिष्ठा तथा इस सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में किए गए कार्यों को दर्शाता है। माननीय प्रधानमंत्री கடந்த 9 ஆண்டுகளாக இந்த அரசு செய்து இந்த நற்பணிகளின் ஒரு भावना प्राप्त हुए விளக்கமாக இது அமைந்தது. प्रमाण है। ये इस बात की भी स्वीकृति है कि कई प्रकार के विभाजनों से ग्रस्त विश्व में भारत शांति और संयम की आवाज है। பல வேறுபாடுகள் நிறைந்த நம்முடைய பாரத திருநாடு ग्लोबल அமைதியும் आवाज ஒரு நிலைத்தன்மையும் கொண்டதாக இருக்கிறது. के केंद्र में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। உலக அரசுகளின் குரலை ஒரு புள்ளியில் ஒருங்கிணைத்த பெருமை இந்த G20 மாநாட்டில் தலைமை வைத்த பாரதத்திற்கு இருக்கிறது. मेजबानी की जिसमें 125 देशों के नेतृत्व ने भाग लिया। ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं को G20 एजेंडे में शामिल किया गया। தெற்கு உலகங்களின் ஆசைகளையும் எண்ணங்களையும் இந்த G20 உச்சி மாநாட்டில் जलवायु இணைத்த ऋण संबंधी समस्याओं से பாரதம் செயல்பட்டிருக்கிறது. स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास सहित विकासशील देशों के हितों से संबंधित विषयों को प्रमुखता दी गई। பாரத நாடு அடைந்துள்ள டிஜிட்டல் வளர்ச்சி अफ्रीकी உலகின் வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளின் வளர்ச்சியோடு ஒப்பிடத்தக்க வகையில் உள்ளது. ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। विश्व के शीर्ष नेतृत्व को राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सम्मान देते देखना एक உலக தலைவர்கள் அனைவரும் இணைந்து ராஜ்காட்டில் தேசப்பிதா மகாத்மா காந்தி அவர்களின் சமாதியில் மரியாதை செலுத்தியது ஒரு காணத்தகுந்த நிகழ்ச்சியாக இருந்தது. और वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता को स्वीकार किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार करने, उसमें समय के अनुसार बदलाव लाने का पुरजोर समर्थन किया। பாரத பிரதமர் அவர்கள் विश्व में स्थिरता உலக நாடுகளின் அமைப்புகளில் और विकास சில மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டியது பற்றியும் बहुपक्षवाद के புதிய நாடுகளை இணைப்பது பற்றியும் தன்னுடைய எண்ணங்களை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். G20 का दृष्टिकोण अर्थ केंद्रित न होकर अब व्यापक रूप से मानव केंद्रित हो गया है। G20 நாடுகளின் நோக்கம் ஒரு பொருளாதார அடிப்படையில் இல்லாமல் மனித தன்மையின் அடிப்படையில் இப்போது மாறி இருக்கிறது. डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना करने, हरित विकास समझौतों को प्रोत्साहित करने, महिलाओं के नेतृत्व உலகம் முழுவதும் டிஜிட்டல் करने, மயமாக்குதல், डिजिटल स्वास्थ्य पर ஒரு पहल करने, கிரீன் எனர்ஜி மயமாக்குதல் போன்றவை भूमिका को मान्यता दिए जाने G20 நாடுகளின் ஒரு முக்கிய நோக்கமாக இப்போது மாறி இருக்கிறது. है। G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को अधिक सक्रिय करना, विकास के लिए अधिक संसाधनों की उपलब्धता, पर्यटन का विस्तार, विश्व स्तर पर कार्य के अवसर, मोटे अनाज के उत्पादन और उपभोग के माध्यम से सुदृढ़ खाद्य सुरक्षा
कौशल की कमी और गतिशीलता की समस्या का समाधान G20 மாநாட்டின் மிக முக்கியமான முடிவுகளை நாம் பார்க்கும்போது சிறுதானியங்களின் வளர்ச்சி, करना MSME-களுக்கு ஒத்துழைப்பு நல்குதல், शामिल है, பொருளாதார வளர்ச்சி, पूरे देश को प्राप्त होगा। இதன் பலன் நாடு முழுவதற்கும் கிடைக்கும். के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन पहलों से एक कनेक्टेड भविष्य की नींव रखी गई है, जिसमें आगे भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी। पर्यावरण समर्थन के लिए लाइफ संबंधी उच्च स्तरीय सिद्धांतों को अंगीकृत किए जाने और जलवायु संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जलवायु वित्त और निवेश में बड़े पैमाने पर वृद्धि की आवश्यकता को சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதற்காக स्वीकार किए जाने வாழ்க்கையோடு தொடர்புடைய பல செயல்களை செய்வது பற்றியும், காலநிலை மாற்றம் பற்றிய हुआ है செயல்களை செய்வது பற்றியும் உச்சி மாநாடு பல முடிவுகளை எடுத்துள்ளது. जाने के बारे में G20 कार्य समूह के गठन के साथ साथ स्टार्टअप पर एक नए G20 की स्थापना के रूप में नई उपलब्धि दर्ज की गई है। खाद्य सुरक्षा के संबंध में डेक्कन उच्च स्तरीय पहल, भूमि संबंधी पहल पर गांधीनगर रोड मैप, पर्यटन के विषय पर गोवा रोड मैप, नीली और महासागरीय अर्थव्यवस्था पर चेन्नई उच्च स्तरीय पहल और काशी सांस्कृतिक पथ से आने वाले समय में विभिन्न क्षेत्रों में विश्व का मार्गदर्शन होगा और हमारे देश गौरवान्वित होंगे। இது பற்றிய பல தொடர் நடவடிக்கைகள் டெல்லியிலும், கோவாவிலும், சென்னையிலும், வாரணாசியிலும் நடக்கவிருக்கின்றன. पार्लियामेंट P20 फोरम की मेजबानी करने का सम्मान मिलेगा। मैं इस प्रतिष्ठित सभा के प्रत्येक मान्य सदस्यों से अनुरोध करता हूं G20 நாடுகளின் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் ஒன்று நடத்துவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. और वसुदेव कुटुंबकम நான் இந்த பாராளுமன்றத்தின் அங்கத்தினர்கள் அனைவரையும் இதை ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வசுதெய்வ குடும்பகம் என்பதை நாம் உலகிற்கு புரிய வைக்க நடவடிக்கைகளை நாம் ஈடுபட வேண்டும். ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की सराहना करने भारत के लोगों இத்தகைய வெற்றியை பெற்றதற்காக பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு பாராட்டுக்களை தெரிவிப்பதில் योगदान को सराहना करने में मेरा साथ देगी। என்னோடு நீங்கள் அனைவரும் இணைவீர்கள் என்று श्री सुनील நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. இப்போது சுனில்குமார் அவர்கள் பேசுவார். माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति का छठा प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। मान्य सदस्यगण, हमारा ये संसद भवन स्वतंत्रता प्राप्ति की ऐतिहासिक घड़ी से लेकर भारत के संविधान निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया மாண்புமிகு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களே, இந்த பாராளுமன்ற கட்டிடம் गौरवशाली நாம் சுதந்திரம் பெற்ற நாளிலிருந்து இன்று வரை स्वतंत्र भारत பல மகத்துவமான கூட்டங்களை நடத்தியிருக்கிறது. श्री गणेश वासुदेव मालंकर जी ने முதல் லோக்சபாவின் சபாநாயகர் கணேஷ் வாசுதேவ் மலங்கர் अपना पदभार ग्रहण किया था। देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के प्रथम अध्यक्ष के रूप में சபாநாயகராக முதலில் பதவி வகித்தவர். विशेषाधिकार समिति, कार्य मंत्रणा समिति सहित कई अन्य संसदीय समितियों की स्थापना की और सदन के अंदर उच्चतम परंपराओं की नींव रखी। இந்த சபையின் முக்கியமான பரம்பரையை உருவாக்குகின்ற பல கமிட்டிகளை அவர் நிறுவினார். विराजमान हुए और उन सभी ने श्रेष्ठ परंपराएं स्थापित की है। माननीय सदस्यगण, इस कक्ष के माध्यम से अब तक 15 माननीय प्रधानमंत्रियों का नेतृत्व प्राप्त हुआ। இதுவரை 12 பிரதம மந்திரிகளை இந்த சபை பார்த்திருக்கிறது. देश की दशा और दिशा तय की है। माननीय सदस्यगण, ये सदन संवाद संस्कृति का जीवन प्रतीक रहा है। विभिन्न दलों के बीच வாத பிரதிவாதங்களின் கேந்திரமாக இந்த சபை விளங்குகிறது. वर्षों में देश हित में सामूहिकता से निर्णय लिए गए। 75 ஆண்டுகளாக
நாட்டின் நலன் ஒன்றினை மட்டுமே கருதி பல முடிவுகளை இந்த சபை எடுத்திருக்கிறது. சமூகத்தின் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக பல முடிவுகளை இந்த சபை எடுத்திருக்கிறது. இந்த கட்டிடத்தில் இன்று கடைசி நாள். இன்று நாளை முதல் புதிய பாராளுமன்ற கட்டிடத்தில் நம்முடைய நடவடிக்கைகள் தொடரும். புதிய பாராளுமன்ற கட்டிடத்தில் நம்முடைய ஜனநாயகம் வெகு வேகமாக வளர்ச்சி அடையும் என்று எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. பிரதமர் அவர்கள் இப்போது தன்னுடைய எண்ணங்களை தெரிவிப்பார். देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே, 75 ஆண்டுகால பாராளுமன்ற வரலாற்றை மீண்டும் ஒருமுறை நினைத்து பார்க்கவும் புதிய பாராளுமன்ற கட்டிடத்தில் நுழைவதற்கு முன்னதாகவும் இந்த வரலாற்று சம்பவங்களை நினைத்து பார்க்கும் இந்த முக்கியமான நேரம் இது. நாம் அனைவரும் இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க பாராளுமன்ற கட்டிடத்திலிருந்து விடைபெறுகின்ற நேரம். ஒரு சமயத்தில் இந்த கட்டிடம் இம்பீரியல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கான இடமாக இருந்தது. நாம் இதை பாராளுமன்ற கட்டிடம் என்றே சொல்லி வருகிறோம். இந்த கட்டிடத்தை உருவாக்கும் அந்த முடிவு வெளிநாட்டு ஆட்சியாளர்களுடையதாக இருந்தது. புதிய பாராளுமன்ற கட்டிடத்தை கட்டுவதில் வேர்வை சிந்தியவர்கள் எங்களுடைய நாட்டு மக்கள். அதை அமைத்து உருவாக்கியவர்கள் பாரதத்தை சேர்ந்தவர்கள். இதற்கான செலவும் பாரத நாட்டுடையது. இந்த பாராளுமன்ற கட்டிடத்தில் பல ஜனநாயக செயல்கள் நடைபெற்றிருக்கின்றன. பலர் இதிலே உயிர் துடிப்போடு கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், சாட்சியாக இருந்திருக்கிறார்கள். இந்த கட்டிடமும் வருகின்ற சந்ததியினருக்கு ஒரு உற்சாகத்தை அளிக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கும். जो सारी दुनिया भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है, இந்த பொன்மயமான வரலாற்று பயணத்தில் இந்த கட்டிடம் எப்படி செயல்பட்டது என்பதை உலகிற்கு காண்பிக்க வேண்டிய ஒரு நேரத்தில் நாம் இருக்கிறோம். प्रथम प्रभा का प्रकाश राष्ट्र में एक नया विश्वास, नया आत्मविश्वास
नया उमंग, नए सपने, नए संकल्प और राष्ट्र का नया सामर्थ्य उसे भर रहा है. சுதந்திரத்தின் அமிர்த பெருவிழா காலத்தில் நாட்டில் ஒரு உற்சாகம், ஒரு எழுச்சி, கனவுகளை நிறைவேற்றும் இலக்குகள் அதனால் நிரம்பி வழிகிறது. और गौरव के साथ हो रही है. ये हमारे 75 साल के संसदीय इतिहास का एक सामूहिक प्रयास का परिणाम, जिसके कारण विश्व में आज वो गुण सुनाई दे. आदरणीय अध्यक्ष जी, चंद्रयान 3 की सफलता 75 ஆண்டுகளின் நம்முடைய வரலாற்று பயணம், அதனுடைய வெற்றி உலகம் முழுவதும் ஒலித்து கொண்டிருக்கிறது. சந்திரயான் பயணத்தின் வெற்றி நாடு முழுவதும், உலகம் முழுவதும் ஒலித்து கொண்டிருக்கிறது. एक नया रूप जो आधुनिकता से जुड़ा, जो विज्ञान से जुड़ा, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा, தொழில்நுட்பத்தோடு இணைந்த, அறிவியலோடு இணைந்த, புது யுகத்தோடு இணைந்த ஒரு புதிய திருப்பம் பாதை சந்திரயானின் வெற்றியோடு தொடங்கியிருக்கிறது. वो देश और दुनिया पर एक नया प्रभाव पैदा करेगा. இது நாட்டில் மீது, உலகத்தின் மீது ஒரு புதிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. माध्यम से मैं फिर एक बार देश के वैज्ञानिकों और उनके साथियों कोटि कोटि बधाइयां இந்த சபையின் மூலமாக நாட்டு மக்களுக்கும் அந்த விஞ்ஞானிகளுக்கும் கோடி கோடி வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ये सदन ने भूतकाल में जब नैम की समिट हुई थी, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके देश के इस प्रयास को सराहा. आज G20 की सफलता को भी आपने सर्वसम्मति से सराहा है. मैं मानता हूं देशवासियों का இந்த சபை G20 மாநாட்டின் வெற்றியை முழு மனதோடு, அனைவரின் சம்மதத்தோடு பாராட்டியிருக்கிறது. 140 करोड़ देशवासियों की G20 உச்சி மாநாட்டின் வெற்றி இந்தியாவின் 140 கோடி மக்களின் வெற்றி, இந்தியாவின் வெற்றி, பாரதத்தின் வெற்றி. किसी दल की सफलता नहीं है. இது ஒரு கட்சியுடைய வெற்றி அல்ல, फेडरल स्ट्रक्चर ने भारत की विविध பாரதத்தின் ஒரு கூட்டாட்சி மனப்பான்மைக்கு கிடைத்த வெற்றி. 200 से अधिक समिट और उसकी मेजबानी हिंदुस्तान के अलग अलग रंग रूप में 200க்கும் மேலான இடங்களில் G20 தொடர்பான கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டது. बड़े आन बान शान से की और ये प्रभाव पूरे विश्व भर के मन पर पड़ा हुआ है. இதனுடைய தாக்கம் உலகம் முழுவதிலும் देश के உணரப்பட்டது. बढ़ाने वाला. और जैसा आपने उल्लेख किया, भारत इस बात के लिए गर्व करेगा जब भारत अध्यक्ष रहा, उस समय अफ्रीकन यूनियन इसका सदस्य है. பாரதம் G20யின் தலைமை பொறுப்பை வகித்த போது ஆப்பிரிக்கன் யூனியனை அந்த G20 அமைப்பிலே இணைத்திருக்கிறோம் என்ற ஒரு பெருமையினை उन्होंने कितने में कहा कि मेरे நினைத்து கொள்ளும். पल थी, शायद मैं बोलते बोलते रो पड़ूं. आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी अपेक्षा और आशाएं पूरी करने का काम भारत के भाग्य में आया. இத்தகைய ஒரு பெரிய பணியை இந்தியா செய்து முடித்திருக்கிறது என்பது பற்றி எனக்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. कई लोगों का बना हुआ और जब आजादी मिली तब से चल रहा. इस बार भी यही था, कोई डिक्लेरेशन नहीं, असंभव है. लेकिन ये भारत की இந்த G20 உச்சி மாநாடு பற்றி और विश्व सर्व பல விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டது. சுதந்திரம் அடைந்ததிலிருந்தே இத்தகைய கருத்துக்கள் உள்ளன. G20யில் ஒற்றுமையான முழு சம்மதத்தோடு கூடிய ஒரு கூட்டறிக்கை வெளியிடப்படாது என்று சொன்னார்கள். ஆனால்
அனைத்து நாடுகளின் சம்மதத்தோடு நாங்கள் கூட்டறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறோம். இந்த G20 அமைப்பின் தலைமை பொறுப்பு நமக்கு நவம்பர் மாத இறுதி வரை நம்மிடத்திலே தான் இருக்கிறது. दुनिया भर के जो G20 के सदस्य हैं, P20 पार्लियामेंट के स्पीकर्स की एक समिट जैसे आपने घोषणा की, सरकार का अपने इस प्रयासों को पूरा समर्थन रहेगा, पूरा सहयोग। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सबके लिए गर्व की बात, आज भारत विश्व मित्र के रूप में अपनी जगह மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே, இன்று நாம் அனைவரும் பெருமைப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம், பாரதம் உலகத்தின் நண்பனாக பார்க்கப்படுகிறது, भारत की मित्रता விஸ்வ மித்திரனாக பார்க்கப்படுகிறது. और उसका मूल कारण है हमारे जो संस्कार है, वेद से विवेकानंद तक जो हमने पाया, இதற்கு முக்கியமான காரணம் நம்முடைய பரம்பரை. வேதத்திலிருந்து விவேகானந்தர் வரை நாம் பெற்ற அந்த படிப்பினைகள், विश्व को हमें साथ लाने में जोड़ रहा। இந்த படிப்பினைகள் மூலமாக நம்முடைய பணிகள் காரணமாக உலகத்தை நம்மோடு இணைந்து நடக்கும் பணியினை நாம் இப்போது செய்திருக்கிறோம். भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़ करके नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें, ஒரு குடும்பம் தாங்கள் இருக்கின்ற பழைய வீட்டை விட்டுவிட்டு புதிய வீட்டிற்கு செல்கின்றார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு ஏராளமான जब ये सदन எண்ணங்கள் பழைய வீட்டை பற்றி இருக்கும். तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ। அதே போலவே இந்த பாராளுமன்ற கட்டிடத்திலிருந்து புதிய பாராளுமன்ற கட்டிடத்திற்கு செல்லும்போது खट्टे मीठे பழைய கட்டிடத்தை பற்றிய பல எண்ணங்கள் நமக்கு இருக்கலாம். लोग भी रही, कभी संघर्ष का माहौल भी रहा है और कभी इसी सदन में उत्सव और उमंग का माहौल। இங்கே நகைச்சுவை நிறைந்த காட்சிகள் பல இருக்கின்றன. हमारे साथ ஒருவரை ஒருவர் எதிர்த்து சண்டையிட்ட காலங்கள் இருக்கின்றன. ये हम सबकी साझी विरासत और इसलिए इसका गौरव भी हम सबका साझा है। இது நம்முடைய சபை. இந்த சபையின் கௌரவமும் நம்முடைய கௌரவம். आजाद भारत के नवनिर्माण से जुड़ी अनेक घटनाएं इन 75 वर्ष में यही सदन में आकार लेती हैं। பாரதத்தில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற பல்வேறு வளர்ச்சிகள் அனைத்திற்கும் இந்த கட்டிடம்தான், இந்த பாராளுமன்ற கட்டிடம்தான் அடிப்படையாக இருந்திருக்கிறது. छोड़ करके नए सदन की ओर प्रस्थान करते थे, तब भारत के सामान्य मानवीय की भावनाओं को जहां जो आदर मिला है, सम्मान मिला है, उसकी अभिव्यक्ति का भी ये अवसर है। और इसलिए இந்த கட்டிடத்திலிருந்து புதிய பாராளுமன்ற கட்டிடத்திற்கு செல்லும்போது நம்முடைய பழைய நினைவுகளை எல்லாம் போற்ற வேண்டியது அவசியம். मैं पहली बार जब संसद का सदस्य था, अब पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने संसद भवन के पक्ति पर अपना शीश झुका करके நான் முதல் मुறை இந்த பாராளுமன்றத்தின் உறுப்பினராக வந்தபோது பாராளுமன்றத்தின் படிகளிலே என் தலையை வைத்து வணங்கினேன். श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई। அந்த நொடி என்னுடைய உணர்ச்சிகளின் ஒரு கொந்தளிப்பான ஒரு நொடியாக இருந்தது. लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवीय की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है। ये रेलवे प्लेटफॉर्म पर நான் கற்பனை கூட செய்து பார்த்திருக்க மாட்டேன். ஆனால் பாரதத்தின் ஜனநாயகத்தினுடைய ஒரு வெற்றி, பாரதத்தின் சாமானிய மனிதன் ஜனநாயகத்தின் மீது வைத்திருக்கின்ற ஒரு வெற்றி, ரயில்வே பிளாட்பாரத்தில் தேநீர் விற்று கொண்டிருந்த நான் இந்த நாட்டின் பிரதம மந்திரியாக இந்த பாராளுமன்றத்திற்குள் நுழைந்தேன். इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। இந்த நாடு எனக்கு இத்தனை ஆசீர்வாதத்தை அளிக்கும், இவ்வளவு
அன்பினை அளிக்கும் என்று நான் நினைத்து பார்க்கவில்லை. हम में से बहुत लोग हैं जो अंदर की चीजें लिखी गई हैं, कभी कभी उसका उल्लेख हमारे यहाँ संसद भवन के बाहर एक छांदोग्य उपनिषद का एक मार्ग है. நாம் இந்த பாராளுமன்ற கட்டிடத்தை பலமுறை சுற்றி பார்த்திருப்போம். இந்த उसका मतलब ही होता है பாராளுமன்றத்தின் வாயிலிலே சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தினுடைய ஒரு வாக்கியம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. कि कैसे वो अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते. हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ हमारे प्रवेश द्वार पर. हम सब और हमारे पहले जो यहाँ रहे हैं वो भी इस सत्यता के साक्षी हैं. आदरणीय अध्यक्ष जी, समय रहते जैसे जैसे वक्त बदलता गया, ये हमारे सदन की संरचना की निरंतर बदलती रही है. காலம் செல்ல செல்ல நம்முடைய இந்த அவையின் அமைப்பும் கூட மாறி வந்திருக்கிறது. समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधि विविधताओं से भरा हुआ சமூகத்தின் ஒவ்வொரு வர்க்கத்தின் अनेक பிரதிநிதியும் இந்த அவையிலே வந்திருக்கிறார்கள். अनेक खान पान सदन के अंदर सब அனைத்து மொழி, பல மொழிகள் பேசுபவர்கள், समाज के सभी तबके, பல சமூகத்தின் அங்கத்தினர்கள், चाहे वो सामाजिक रचना के हो, चाहे आर्थिक रचना के हो, चाहे गांव या शहर के हो, एक प्रकार से பொருளாதார அடிப்படையிலோ நகரத்திலிருந்தோ கிராமத்திலிருந்தோ என பல்வேறு அடிப்படையில் இங்கே உறுப்பினர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். जन सामान्य की इच्छा आकांक्षाओं को प्रकट करता है. அனைவரும் சாதாரண மக்களின் எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கின்றவர்களாக இங்கே இருந்திருக்கிறார்கள். महिलाएं हर न हर एक का धीरे 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 योग. பெண்கள் இந்த அவையிலே உறுப்பினர்களாக இருக்கிறார்கள். आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ में महिलाओं की सदस्य संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे ஆரம்பத்தில் பெண்களின் ஒரு எண்ணிக்கை கம்மியாக இருந்தது, सदन की गरीब குறைவாக இருந்தது. ஆனால் இப்போது सदन के சிறிது சிறிதாக அதிகரித்து बड़ा बदलाव लाने में उनका. இப்போது அதிக எண்ணிக்கையிலே மகளிர் இருக்கிறார்கள். आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ से अब तक एक मोटा मोटा हिसाब लगाता था, करीब करीब 7,500 से अधिक जनप्रतिनिधि दोनों सदनों में मिलाकर के योगदान दे चुके हैं. ஏறத்தாழ 7,500 பிரதிநிதிகள் இரண்டு அவையிலும் அங்கத்தினர்களாக இதுவரை இறந்திருக்கிறார்கள். करीब 600 महिला सांसदों ने भी இதே காலகட்டத்தில் 600 பெண்கள் பிரதிநிதிகள் இந்த அவையிலே இருந்திருக்கிறார்கள். और आदरणीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि सदन में आदरणीय इंद्रजीत गुप्ता जी 43 ईयर, अगर मुझे गलती नहीं है तो 43 ईयर இந்த அவையிலே மதிப்பிற்குரிய இந்திரஜித் குப்தா அவர்கள் 43 ஆண்டுகள் அங்கத்தினராக இருந்திருக்கிறார். और यही सदन है आदरणीय अध्यक्ष जी जहां शकीबुर रहमान जी 93 की एज में भी सदन में अपना योगदान देते थे. சசிதுர் ரஹ்மான் என்பவர் 93 வயதிலே கூட இந்த அவையின் உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறார். कि 25 साल की उम्र की चंद्रमणि मुर्मू इस सदन की सदस्य बनी थी. सिर्फ 25 साल की उम्र. சந்திரமணி முர்மு என்பவர் 25 ஆண்டுகள் வயதிலே 25 வயதிலே இந்த அவையின் உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறார். अध्यक्ष महोदय, वाद विवाद कटाक्ष ये सब कुछ हम सबने अनुभव किया है, வாதங்கள், விவாதங்கள், निषेध भी किया है. எதிர்ப்புகள் அனைத்தையும் நாம் இங்கே அனுபவித்திருக்கிறோம், எதிர்கொண்டிருக்கிறோம். शायद जो परिवार भाव हम लोगों के बीच में रहा है, हमारे पहले की पीढ़ियों में भी रहा, जो लोग இதற்கு பின்னரும் நம்மிடையே இருக்கின்ற அந்த அன்பு, மரியாதை,
நமக்கு முன்னால் இருந்த உறுப்பினர்களிடையேயும் இத்தகைய அன்பு மரியாதை இருந்தது. குடும்ப உறுப்பினர்கள் போல் நாம் அதனை உணர்ந்திருக்கிறோம். और उसके साथ साथ हम कभी कड़वाहट पाल करके नहीं जाते, हम उसी प्यार से सदन छोड़ने के कई वर्षों के बाद मिल जाए तो भी उस प्यार को कभी भूलते नहीं है, उस स्नेह भरे याद दिनों को भूलते नहीं है, वो मैं अनुभव कर सकता हूँ. அதே அன்போடு தான் நாம் ஒருவரோடு பழகுகிறோம். சபையை விட்டு போய்விட்டாலும் கூட பல ஆண்டுகள் கழித்து பார்க்கும்போது கூட இந்த அன்பு நிலைத்திருக்கிறது. अनेक असुविधाओं के बावजूद सांसद सदन में आए हैं और उन्होंने शारीरिक पीड़ा भी असह्य हो तो भी सदन में एक सांसद के रूप में जनप्रतिनिधि के रूप में अपना कर्तव्य निभाया है. பல துன்பங்களுக்கு இடையிலும் உறுப்பினர்கள் இந்த அவையிலே வந்து அவை நடவடிக்கைகளில் பங்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். गंभीर बीमारियों के बावजूद व्हीलचेयर में आना पड़ा. கடுமையான நோய்வாய்ப்பட்டிருந்த போது கூட சர்க்கரா நாற்காலியில் வரவேண்டியிருந்தால் கூட உறுப்பினர்கள் இங்கே வந்து பணியாற்றியிருக்கிறார்கள். कोरोना काल हमारे सामने उदाहरण, हर परिवार में रहता था कहीं बाहर जाए तो बहुत तो बुलावा न हो, उसके बावजूद भी हमारे माननीय सांसद கொரோனா காலம் இதுக்கு மிகச்சிறந்த உதாரணம். எங்கே வெளியில் சென்றால் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்து விடுவோமோ என்ற பயம் இருந்தபோது கூட நம்முடைய உறுப்பினர்கள் இங்கே வந்து தங்களுடைய கடமையை செய்திருக்கிறார்கள். आवश्यकता पड़ी डिस्टेंस रखना भी था और बार टेस्टिंग भी करना पड़ता था. सदन में आते थे लेकिन मास्क पहनना पड़ता था. बैठने की रचना भी अलग अलग थी, समय भी बदले गए. சபைக்கு வரும்போது முகக்கவசம் அணிந்து வர வேண்டியிருந்தது, தூரமாக அமர்ந்திருக்க வேண்டியிருந்தது. இருந்தாலும் இந்த அவையிலே உங்களுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக நீங்கள் அனைவரும் வந்தீர்கள். मंदिर जाने की आदत होती है वैसे उनको सदन में आने की आदत. 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உறுப்பினராக இருந்திருக்கலாம், 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உறுப்பினராக இருந்திருக்கலாம். ஆனால் இந்த பாராளுமன்றத்தின் அந்த மைய வளாக ஹாலில், சென்ட்ரல் ஹாலுக்கு ஒரு திருக்கோயிலுக்கு சென்று வருவது போல மக்கள் வந்து செல்வதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். आजादी के बाद बहुत बड़े विद्वान लोगों ने बहुत आशंकाएं व्यक्त की थी, पता नहीं देश का क्या हो. சுதந்திரத்திற்கு பிறகு பல அறிவுடையோர்கள் பலர் இந்த நாடு என்ன ஆகுமோ ஏதாகுமோ என்றெல்லாம் கவலை தெரிவித்திருந்தார்கள். ஆனால் இந்த அவையின் ஒரு வலிமை, தாக்கம், அதன் மூலம் முழு உலகிற்கும் இந்தியாவின் வலிமையை நாம் காட்டியிருக்கிறோம். சந்தேகங்கள் ஏராளமாக இருக்கலாம், கருப்பு மேகங்கள் நம்மை சூழ்ந்திருக்கலாம். இருந்தாலும் நாம் இந்த பாராளுமன்றத்தின் வலிமையின் காரணமாக வெற்றியை நிலைநாட்டியிருக்கிறோம். இதே கட்டிடத்தில் அரசியல் சட்ட நிர்ணய சபையின் 2 ஆண்டு கால கூட்டமும் நடந்தது. जनवरी 1950 को लागू
इन 75 वर्षों 1951ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 26ஆம் தேதி वो ये है நம்முடைய அரசியல் சட்டம் ஏற்கப்பட்டது. 1952 ஜனவரி 26 முதல் इस संसद पर அமல்படுத்தப்பட்டது. बढ़ता ही गया और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इस महान संस्था के प्रति, इस महान इंस्टीट्यूशन के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास अटूट रहे, विश्वास उनका बना रहे. ஜனநாயகத்தின் மீது மக்களின் நம்பிக்கை குலையாமல் இருக்க இந்த அவை அதற்கான பணிகளை இவ்வளவு நாள் செய்து வந்திருக்கிறது. का भवन भी बना दिया. यहाँ जन भावनाओं की पुरजोश अभिव्यक्ति हम देखते हैं. राजेंद्र बाबू से लेकर डॉक्टर कलाम, रामनाथ जी कोविंद और अभी द्रौपदी मुर्मू பாபு ராஜேந்திர பிரசாத் के संबोधन இலிருந்து ஆரம்பித்து அப்துல் கலாம் வரை, ராம்நாத் கோவிந்த் வரை उनका मार्गदर्शन मिला. आदरणीय இந்த அவைக்கு வழிகாட்டியிருக்கிறார்கள். पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, वहां से लेकर के अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक பிரதம மந்திரிகளாக பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு, லால் பகதூர் சாஸ்திரி முதல் ने इस सदन का மன்மோகன் சிங், வாஜ்பாயி போன்றவர்கள் सदन के माध्यम से देश को दिशा दी. இந்த நாட்டிற்கு புதிய திசையை காட்டியிருக்கிறார்கள். नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है. புதிய வளர்ச்சியை தருவதற்காக அவர்கள் உழைத்திருக்கிறார்கள். सबका गौरवगान करने का भी अवसर है. आदरणीय बेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहिया जी, चंद्रशेखर जी, अडवाणी जी, न जाने अनगिनत नाम जिन्होंने ராமனோகர் லோகியா, சந்திரசேகர் போன்ற எண்ணிக்கையில் இல்லாத பல தலைவர்கள் को समृद्ध करते हैं. देश के सामान्य से सामान्य व्यक्ति की आवाज को ताकत देने का काम इस सदन में किया. विश्व के भी अनेक राष्ट्राध्यक्ष நாட்டின் சாதாரண மனிதனின் குரலை இந்த அவையிலே எதிரொலிக்கச் செய்யும் பணியை அவர்கள் அனைவரும் செய்திருக்கிறார்கள். में भी भारत के लोकतंत्र के प्रति आदर का भाव व्यक्त किया. இதனால் உலகில் இந்திய ஜனநாயகத்தின் மீது ஒரு மரியாதை ஏற்படுத்தும் பணியினை இவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள். कभी सदन की आंख से आंसू भी बहे. ये सदन दर्द से भर गया जब देश को 3 अपने प्रधानमंत्री उनको अपने कार्यकाल में होने की नौबत आई. नेहरू जी, शांति जी, इंदिरा जी. तब இந்த நாட்டின் 3 பிரதம மந்திரிகள் அவருடைய பதவி காலத்திலேயே உயிரிழக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருந்தது. அந்த சமயத்திலே இந்த भीनी आंखों से அவை उन्हें विदाई दी. சோகத்தை வெளிப்படுத்தி அவர்களுக்கு விடையளித்தது. நெஹ்ரு அவர்கள், லால் பகதூர் சாஸ்திரி அவர்கள், இந்திரா காந்தி மூவரின் மரணத்தில் சோகத்தை இந்த அவை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது. हर सभापति ने बेहतरीन तरीके से दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाया है और अपने कार्यकाल में துணை குடியரசுத் தலைவர்கள், उन्होंने जो निर्णय किए சபாநாயகர்கள், वो निर्णय ஒவ்வொரு சபையின் சபாநாயகர்கள் से काल से இந்த அவைகளை வழிநடத்தி செல்வதில் मित्रा जी के कालखंड के हो या बिरला जी के, आज भी उन निर्णयों को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है. ये काम அவர்கள் எடுத்த முடிவுகள் இன்று கூட ஒரு 17 स्पीकर வழிகாட்டுதலாக எடுத்து காட்டப்படுகிறது. दो हमारी महिला स्पीकर ने भी मावलंकर जी से लेकर के सुमित्रा ताई तक और बिरला जी मार्गदर्शन आज भी हमें मिल रहा है. மாவலங்கல் இருந்து சுமித்ரா தாய் அவர்கள் வரை, நம்முடைய பிர்லா सबको साथ लेकर சாஹப் அவர்கள் வரை नियमों कानूनों के बंधन में இந்த மக்களவையின் हमें விதிமுறைகளை பின்பற்றி இதனை எப்போதும் ஒரு பெருமைக்குரிய ஒரு சபையாக நடத்தியிருக்கிறார்கள். அவர்கள் அனைவருக்கும் நான் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். आदरणीय बेटी, ये सही है कि हम जनप्रतिनिधि अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन सातत्यपूर्ण तरीके से हमारे बीच जो ये टोली बैठती है
उनकी भी कई पीढ़ियां बदल गई। कभी कागज लेके दौड़ के आते हैं, उनका भी योगदान कम नहीं। இந்த அவையிலே இந்த அவையின் பணியாளர்களுடைய பணியும் हमें कागज पत्र பல்வேறு வகையாக இருந்திருக்கிறது. ஒரு சில சமயங்களில் பேப்பர் எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் हो जाए उसके लिए அறையிலிருந்து இங்கே ஓடி வருவார்கள். काम उनके द्वारा हुआ। அவர்கள் மூலமாகத்தான் இந்த பணிகள் நடந்திருக்கிறது. सदन के क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस में तेजी लाने में बहुत बड़ी मदद की। मैं उन सभी साथियों का இந்த அவையின் பணிகளிலே ஒரு விரைவுத்தன்மையை கொண்டு வந்ததற்காக இந்த அவை பணியாளர்கள் அதிகாரிகளுக்கு நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். सदन मतलब ये खंड ही नहीं, पूरे परिषद अनेक लोगों ने, किसी ने हमें चाय पिलाई, பாராளுமன்ற அவை என்றால் இந்த அறை மட்டுமல்ல, இந்த வளாகம் முழுமையும் सदन को किसी को भूखा पेट रहने नहीं दिया। இந்த कई प्रकार की सेवाएं की। பராமரித்தல், किसी ने माली ने इसके बाहर के एनवायरमेंट को இதனுடைய யாரையும் பசியோடு இருக்க விடவில்லை. न जाने இந்த அவையின் வளாகத்தில் இருக்கின்ற தோட்டத்தை பாதுகாக்கின்ற தோட்டக்காரராக இருக்கலாம். जिन्होंने हम सब अच्छे ढंग से काम कर सके, இதை போன்ற எண்ணிக்கையில்லாத பலர் நாம் அனைவரும் சிறப்பாக பணிபுரிவதற்காக பின்னணியிலே பணி புரிந்திருக்கிறார்கள். நாட்டை முன்னேற்றுவதற்காக பணிபுரிந்திருக்கிறார்கள். ये जो माहौल बनाना, व्यवस्था बनाना, उसके लिए जिसने योगदान, இத்தகைய பணிகளை எல்லாம் செய்வதற்காக பின்னணியிலே பணிபுரிந்த सदन की तरफ से அனைவருக்கும் विशेष रूप से नमन। இந்த சபையின் வாயிலாக என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र का ये सदन, आतंकी हमला हुआ पूरे विश्व में। यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला இந்த அவையின் மீது ஒரு தீவிரவாத தாக்குதலும் நடந்தது. घटना को कभी भूल नहीं सकते। ஜனநாயகத்தின் அன்னையான இந்த அவையின் மீது அந்த தீவிரவாத தாக்குதல் நடந்தது. அந்த தீவிரவாதிகளோடு बचाने के लिए और हर सदस्य சண்டையிட்டு जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेली சிலர் தங்கள் நெஞ்சிலே துப்பாக்கி குண்டுகளை சுமந்து को भी नमन। உயிர் தியாகம் செய்தார்கள். நான் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी रक्षा की। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब आज हम इस सदन को छोड़ रहे हैं, तब मैं उन पत्रकार मित्रों को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने जीवन में, இந்த कुछ लोग तो ऐसे பாராளுமன்ற கட்டிடத்தை விட்டு कार्यकाल में புதிய பாராளுமன்றத்துக்கு செல்லுகின்ற அந்த நேரத்திலே இந்த சபையின் நடவடிக்கைகளை எல்லாம் வெளியுலகத்திற்கு தெரிவித்த பத்திரிகையாளர் நண்பர்களை நான் பாராட்டுகிறேன். उन्होंने यहाँ की पल पल की जानकारी दी। இந்த அவையின் ஒவ்வொரு நொடியிலும் நடந்த நிகழ்ச்சிகளை உலகத்திற்கு தெரிவித்த நண்பர்கள் அவர்கள். यहाँ की बात पहुंचाते और उनका सामर्थ्य था वो अंदर की भी पहुंचाते थे और अंदर की भी पहुंचाते थे। இங்கே நடக்கின்ற விஷயங்களின் உள்ளர்த்தங்களையும் அதற்கு பின்னும் இருக்கின்ற உள்ளர்த்தங்களையும் அவர்கள் வெளியுலகத்திற்கு தெரிவித்தவர்கள். जिन्होंने संसद को कवर किया, शायद उनके नाम जाने नहीं जाते, அவர்களுடைய பெயர்களை எல்லாம் நாங்கள் அறிந்திருக்க மாட்டோம். और खबरों को लिए नहीं, भारत की इस विकास यात्रा को संसद भवन से समझने के लिए வெறும் செய்திகளை மட்டும் அவர்கள் எடுத்துச் செல்லவில்லை. पुराने जो இந்த அவையிலே आते हैं और जिन्होंने कभी நாட்டின் வளர்ச்சி பற்றிய செயல்களை எல்லாம் அவர்கள் எடுத்துச் சென்றிருக்கிறார்கள். अपनी आंखों से देखी होती, कान से सुनी होती, जो अचरज करी। अरे एक प्रकार से जैसी ताकत यहाँ की दीवारों की रही है, वैसा ही दर्पण उनकी कलम में रहा है और उस कलम में देश के अंदर
संसद के प्रति, संसद सदस्यों के प्रति एक अहोभाव का भाव அவர்களுடைய எழுதுகோள்கள் மூலமாக அவர்கள் कई पत्रकार இந்த அவையின் பல செய்திகளை வெளியுலகிற்கு தெரிவித்திருக்கிறார்கள். मेरे लिए ये सदन छोड़ना भावुकपन है. அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். पत्रकार बंधुओं के लिए भी ये सदन छोड़ना எப்படி எனக்கு இந்த அவையை விட்டு புது பாராளுமன்ற கட்டிடத்திற்கு செல்வது ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறதோ அதே போல இந்த பத்திரிகையாளர்களுக்கும் ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான விஷயமாக இருக்கும். आज उनके उस महत्वपूर्ण लोकतंत्र की ताकत बनने के लिए योगदान देने के भी याद करने का अवसर. பாராளுமன்றத்தின் ஒரு முக்கிய அங்கமாக விளங்கும் அவர்களுடைய பணிகளையும் நினைவு கூற வேண்டிய தருணம் இது. सदन के अंदर आते हैं हमारे यहाँ नाद ब्रह्म की कल्पना है. हमारे शास्त्रों में माना है किसी एक स्थान पर अनेक बार एक ही लय उच्चारण होता है वो तपोस्थली बन जाता है. उसके एक पॉजिटिव वाइब नाद की एक ताकत होती है जो स्थान को सिद्धि स्थान में परिवर्तित करती है. நாங்கள் இந்த அவையிலே நுழையும் போது ஒரு நாத பிரம்மத்தின் அனுபவத்தை உணர்கிறோம். 7:30 ஒரு புதிய இசையின் அனுபவத்தை உணர்கிறோம். बार शब्द गूंजे जो वाणी यहाँ गूंजी है उसने इस सदन में हम बैठकर आगे चर्चा करें या ना करें लेकिन इसकी गूंज इसे तीर्थ क्षेत्र बना एक जागृत जगह बन जाती है और लोकतंत्र की प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति आज से 50 साल அந்த இசை அந்த ஒலி இந்த இடத்தை ஒரு புண்ணிய தீர்த்தமாக மாற்றிவிட்டது. उस गूंज की अनुभूति होगी कि कभी भारत की आत्मा की आवाज यहाँ पर गूंजती थी. और इसलिए अध्यक्ष महोदय ये वो सदन है जहाँ कभी भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त उन्होंने अपनी वीरता सामर्थ्य से अंग्रेज सल्तनत को जगा दिया था बम का धमाका करके. பகத்சிங் वो बम की गूंज भी ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக குண்டு வீசிய அந்த சம்பவம் அது கூட இங்கே எதிரொலிக்கிறது. आदरणीय अध्यक्ष जी ये वो सदन है जहां पंडित जी को इसलिए भी याद किया अनेक बातों के लिए याद करेगा लेकिन हम जरूर याद करेंगे इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती है. பண்டித ஜவஹர்லால் நேருவை பல விஷயங்களுக்காக நான் நினைவு கூற முடியும். ஆனால் இந்த அவையிலே தான் அவர் शब्द ஆகஸ்ட் 15 நடுஇரவில் जाएगी पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी த டைரஸ்ட் வித் டெஸ்டினி என்ற தன்னுடைய உரையை நிகழ்த்தினார். आदरणीय अध्यक्ष जी पंडित नेहरू की जो प्रारंभिक मंत्री परिषद थी बाबा साहब आम्बेडकर जी एक मंत्री के रूप में दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस भारत में लाने पर बहुत जोर दिया करते. பண்டிட் நேரு அவர்களின் அமைச்சரவையில் ஒரு அமைச்சராக இருந்த பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் அவர்கள் ஒரு சிறப்பான அரசியல் சட்டத்தை நம் நாட்டுக்கு கொண்டு வருவதில் பெருமுயற்சி செய்தார். बाबा साहब आम्बेडकर ने देश को नेहरू जी की सरकार में वाटर पॉलिसी दी और उस वाटर पॉलिसी बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर की बहुत நேருவின் அமைச்சரவையிலே அமைச்சராக இருந்த அம்பேத்கர் அவர்கள் நாட்டின் வாட்டர் பாலிசியை கொண்டு வந்தார். हम ये जानते हैं कि भारत में बाबा साहब आम्बेडकर एक बात हमेशा कहते हैं कि भारत में सामाजिक न्याय के लिए भारत का औद्योगिकरण होना बहुत जरूरी है क्योंकि देश के दलित पिछड़ों के पास जमीन ही नहीं है वो क्या करेगा. பாரதம் ஒரு தொழில்மயமான
நாடாக மாற வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார். जो पंडित नेहरू के मंत्री थे, उन्होंने इस देश में और पहले वाणिज्य मंत्री के रूप में और उद्योग मंत्री के இங்கே இருக்கின்ற பலருக்கு விவசாயம் செய்வதற்கு நிலம் இல்லை, எனவே தொழிற்சாலைகள் வர வேண்டும், அந்த தொழிற்சாலைகளில் அவர்கள் பணிபுரிய வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார். उसकी आत्मा वही होती है जो पहली सरकार के थी और उनका भी बहुत बड़ा अहम योगदान रहा था. आदरणीय अध्यक्ष जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 के युद्ध में हमारे देश के जवानों में हौसला बुलंद करना, उनके सामर्थ्य के लिए को पूरी तरह राष्ट्र லால் பகதூர் சாஸ்திரி அவர்கள் 1965ஆம் ஆண்டு लाल बहादुर शास्त्री की போரின் போது நம்முடைய இராணுவ வீரர்களின் உற்சாகத்தை அதிகரிப்பதற்காக பாடுபட்டார். नींव लाल बहादुर शास्त्री जी ने. आदरणीय अध्यक्ष जी, बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी வங்க தேசத்தில் சுதந்திரம் பெறுவதற்காக நடந்த யுத்தத்தில் பெற்ற வெற்றி பற்றிய அறிவிப்பையும் இந்த அவையிலே இந்திரா காந்தி அவர்கள் வெளியிட்டார்கள். देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी. वो राष्ट्रीय संघ இதே அவைதான் सामर्थ्य भी ஜனநாயகத்தை வலிமையோடு மீண்டும் கொண்டு வந்த காட்சியையும் நமக்கு காண்பித்தது. हमेशा ऋणी रहेगा, क्योंकि इसी सदन में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी ने ग्रामीण मंत्रालय का गठन किया, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री. इसी सदन में இந்த சபையில் मतदान की முன்னாள் பிரதமர் சரண் சிங் அவர்கள் उम्र 18 करने का निर्णय கிராம நிர்வாகங்கள் பற்றிய ஒரு युवा पीढ़ी को சட்ட முன்வரை கொண்டு வந்தார். प्रेरित किया गया है, उत्साहित किया गया है. हमारे देश ने गठबंधनों की सरकारें देखी, நம் நாடு கூட்டணி கட்சிகளின் ஆட்சியையும் பார்த்திருக்கிறது. चला लंबे अरसे से दिशा में देश जा रहा था. आर्थिक नीतियों के बोझ पर देश दबा हुआ था, लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार थी जिन्होंने हिम्मत के साथ पुरानी आर्थिक नीतियों को छोड़ करके नई राह पकड़ने का फैसला किया था. इसके आज பொருளாதார சுமைகளால் நாடு அழுத்தப்பட்டிருக்கின்ற இந்த நேரத்தில் நரசிம்மராவ் அவர்களின் தலைமையில் இருந்த ஆட்சி सरकार भी அதிலிருந்து விடுபடுவதற்கான செயல்களை செய்தது. देश में आज वो महत्वपूर्ण बन गया है. आदिवासी कार्यालय मंत्रालय अटल जी ने बनाया, नॉर्थ ईस्ट का मंत्रालय अटल जी ने बनाया. ஆதிவாசிகளுக்கான ஒரு அமைச்சரை அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் அவர்கள் நியமித்தார். इसी सदन में வடகிழக்கு இந்தியா பற்றிய ஒரு அமைச்சரவையை வாஜ்பாய் அவர்கள் உருவாக்கினார். सरकार कैश फॉर वोट को भी, उस कांड को भी सदन ने देखा. மன்மோகன் சிங் ஆட்சி காலத்தில் सबका साथ, सब பணம் கொடுத்தால் ஓட்டு விழும் என்ற காட்சியும் நாம் பார்த்தோம். अनेक ऐतिहासिक निर्णय, दशकों से लंबित विषय, उनका स्थायी समाधान भी इसी सदन में. பல ஆண்டுகளாக இருந்த பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளும் இந்த அவையிலே நாம் பெற்றிருக்கிறோம். ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि सदन के कारण वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया. ஒரே நாடு ஒரே வரி என்ற ஜிஎஸ்டி பற்றிய முடிவையும் இந்த அவை எடுத்திருக்கிறது. ये भी इसी सदन ने देखा. गरीबों के लिए 10% आरक्षण कोई विवाद के बिना पहली बार इसमें करने में किया. ஏழைகளுக்காக 10% இடஒதுக்கீடு வேலைகளில் आदरणीय अध्यक्ष जी, எந்த விவாதமும் இன்றி இந்த அவை ஏற்றுக்கொண்டது. तंत्र में तमाम उतार चढ़ाव हमने देखे. இந்திய ஜனநாயகத்தில் பல ஏற்ற இறக்கங்களை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். ताकत है, लोकतंत्र की ताकत की साक्षी है, जन विश्वास का एक केंद्र बिंदु रहा है. மக்களின் நம்பிக்கை தான் இந்த ஜனநாயகத்தின் அடிப்படையாக இருந்திருக்கிறது. लोगों का आज भी अग्रहित होता है. ये सदन है जिसमें कभी 4 सांसद वाली पार्टी सत्ता में होती थी और 100 सदस्य वाली पार्टी
विपक्ष में बैठे இதே அவையில்தான் 4 உறுப்பினர்களை கொண்ட ஒரு கட்சியின் का परिचय कराता है और यही सदन है जिसमें एक ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தது. 100 உறுப்பினர்களை கொண்ட ஒரு கட்சி எதிர் கட்சி வரிசையில் அமர்ந்திருந்தது. ये भी इसी सदन में आज अनेक छोटी छोटी रीजनल पार्टियों का प्रतिनिधित्व हमारे देश की विविधता को, हमारे देश के एस्पिरेशन एक प्रकार से वो आकर्षक केंद्र बिंदु बना है. இன்று பல சிறிய சிறிய கட்சிகளின் உறுப்பினர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். நம் நாட்டின் வேற்றுமைகளை, அதிலே இருக்கின்ற ஒற்றுமையை காண்பிப்பதற்காக कांग्रेस அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். लेकिन एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट का नेतृत्व कर रही है, ये भी इसकी विशेषता थी. और हमारे अंदर सिमाराव जी, वो तो बिस्तरा गोल करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे, निवृत्ति की घोषणा कर चुके थे. लेकिन यही लोकतंत्र की ताकत देखिए, सदन की ताकत देखिए. பல ஆண்டுகள் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்தது. இப்போது காங்கிரசுக்கு எதிரான ஒரு கட்சி நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறோம். நரசிம்மராவ் அவர்கள் இனி அரசியலே வேண்டாம் என்று மூட்டை கட்டி கொண்டு ஊருக்கு செல்லவிருந்தார். ஆனால் அவர் பிரதம மந்திரியாக இந்த அவையிலே வந்து அமர்ந்தார். कठिन से कठिन कार्य होते हुए हमने देखे 2000 की साल थी अटल जी की सरकार, इसी सदन में 3 राज्यों का गठन सर्वस्वीकृति से और बड़े उमंग उत्साह से किया. जब छत्तीसगढ़ की रचना हुई तो उत्सव छत्तीसगढ़ ने भी मनाया, उत्सव मध्य प्रदेश ने भी मनाया. जब उत्तराखंड की रचना हुई அடல் பிஹாரி வாஜ்பாயின் ஆட்சி காலத்தில் 2008இல் 3 மாநிலங்கள் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட போது சத்தீஸ்கரிலும் விழா எடுக்கப்பட்டது, மத்திய பிரதேசத்திலும் எடுக்கப்பட்டது. உத்தராகண்ட் உருவான போது உத்தராகண்டிலும் விழா எடுக்கப்பட்டது, உத்தரப்பிரதேசத்திலும் விழா எடுக்கப்பட்டது. இவ்வாறு ஒரு குடும்பம் என்கின்ற வகையிலே செயல்கள் நடந்தன. तेलंगाना के हक को दबोचने के लिए भारी प्रयास, खून की नदियां भी बही और बनने के बाद न तेलंगाना उत्सव मना पाया, न आंध्र उत्सव मना पाया. एक कटुता के बीज बो दिए गए. अच्छा होता उसी उमंग और उत्साह தெலுங்கானாவை ஆந்திராவிலிருந்து பிரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக பெரிய போராட்டம் நடந்தது, ரத்தம் சிந்தியது. ஆனால் 2 பிரிக்கப்பட்ட போது ஆந்திராவிற்கான விழாவும் நடக்கவில்லை, தெலுங்கானாவிற்கான விழாவும் நடக்கவில்லை. आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन की परंपरा रही है. संविधान सभा ने उस समय अपना दैनिक भत्ता 45 रुपये से कम करके 40 कर दिया. उनको लगा हमें इसको कम करना चाहिए. आदरणीय अध्यक्ष जी, यही सदन है कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी जो बहुत कम पैसे में खाना मिलता था, इसी सदस्यों ने उस सब्सिडी को भी खत्म कर दिया और पूरा पैसा लेकर के अपने आदरणीय अध्यक्ष குறைந்த விலையில் இந்த அவையின் பாராளுமன்றத்திலே கிடைக்கின்ற உணவை உண்டு வந்த जिन्होंने இதே அவை உறுப்பினர்கள் அந்த சப்சிடியை இல்லை என்று சொல்லி அனைவரும் காசு கொடுத்து சாப்பிட வேண்டிய நிலைமையை இந்த அவை உருவாக்கி இருக்கிறது. कोरोना काल में इसी सदन के सांसदों ने अपने तनख्वाह में 30% कटौती की. கொரோனா காலத்தில் இதே அவையின் உறுப்பினர்கள் தங்களுடைய சம்பளத்தின் 30% கொரோனா பணிகளுக்காக தந்துள்ளனர். आदरणीय अध्यक्ष जी, हम गर्व से कह सकते हैं, ये सदन में बैठे हुए लोग भी कह सकते हैं, हमारे पूर्वज जो सदन में बैठे थे वो भी कह सकते हैं कि हम ही लोग हैं जिन्होंने हम पर डिसिप्लिन लाने के लिए हमारे यहाँ जनप्रतिनिधित्व कानून में समय समय पर कठोरता नियम இதே அவையில் உள்ள உறுப்பினர்கள் பெருமையோடு சொல்லிக்கொள்ளலாம், இதற்கு முன்னால் இருந்த அவையில் இருப்பவர்களும் சொல்லிக்கொள்ளலாம், நமக்கிடையே ஒரு ஒழுங்கினை கொண்டு வருவதற்காக இந்த அவையின் உறுப்பினர்களுக்கான சட்டத்தில் பல கடுமையான நிபந்தனைகளை நாம் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். मैं मानता हूँ कि कभी कभी उन चीजों को भी याद करना चाहिए. இவற்றையெல்லாமும் நாம் நினைவு பார்க்க வேண்டும், நினைவுபடுத்தி பார்க்க வேண்டும். वर्तमान सांसद उनके लिए तो ये विशेष सौभाग्य का अवसर है. सौभाग्य का अवसर इसलिए है कि हमें इतिहास और भविष्य
दोनों की कड़ी बनने का अवसर मिला। வரலாற்றையும் வருங்காலத்தையும் ஒன்றிணைத்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்திலே நாம் இருக்கிறோம். அதற்காக நாம் பெருமைப்பட வேண்டும். कल और आज से जुड़ने का हमें अवसर मिल रहा है और आने वाली कल निर्माण करने का एक नया विश्वास நேற்றையும் இன்றையும் இணைக்கின்ற ஒரு हम यहाँ से विदाई लें। வாய்ப்பு, இன்றையும் நாளையையும் இணைக்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. आज का दिवस सिर्फ और सिर्फ इस सदन के सभी 7,500 जनप्रतिनिधि विधायक चुके उनके गौरवगान इन दीवारों से हमने जो இந்த நாள் प्रेरणा 7500 உறுப்பினர்களின் பெருமையை பற்றி பேசுகின்ற ஒரு நேரம். बहुत सी बातें ऐसी थी जो सदन में हर किसी की ताली की हकदार, लेकिन शायद राजनीति उसमें भी आड़े आ गई। ஒருவரை ஒருவர் பாராட்டிக் கொள்கின்ற ஒரு நேரம். இடையிலே அரசியல் வராமல் இருக்க வேண்டும். कौन सदस्य होगा जिसको ताली बजाने का मन न करे, लेकिन उसके बावजूद भी देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है हम सब ने अपने यहाँ सोच रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में और इस अनुभवी माननीय सांसदों के सामर्थ्य से हम नई உங்களுடைய में जब जाएंगे வழிகாட்டுதல்களோடும் இந்த அனுபவம் மிகுந்த உறுப்பினர்களோட துணையோடும் புதிய பாராளுமன்ற கட்டிடத்திற்கு நாம் செல்லும்போது நாம் மிகச் சிறப்பாக செயல்படுவோம் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. एक अच्छे वातावरण में सबको याद करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबका आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि अपने जीवन की ऐसी मधुर यादों को यहाँ हम जरूर व्यक्त करें ताकि देश तक पहुंचे। இந்த அருமையான ஒரு சூழ்நிலையை எனக்கு உருவாக்கி தந்ததற்காக உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த அருமையான நினைவுகளோடு நாம் இங்கே நம்முடைய சிந்தனைகளை பகிர்ந்து கொள்வோம். अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार इस धरती को प्रणाम இந்த இந்த எண்ணங்களோடு இந்த அவைக்கு என் வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த உலகிற்கு என் வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். दीवार के ईंटे को प्रणाम करता हूं और पिछले இங்கே இருக்கின்ற ஒவ்வொரு சுவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். वाले हर गुंज को उस नाद ब्रह्म को नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम कर देता हूं। அந்த நாத பிரம்மத்திற்கு வணக்கம் தெரிவித்துக் கொண்டு என் உரையை முடிக்கிறேன். வணக்கம். माननीय सदस्यगण, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सदन की सीख, अनुभव, यहाँ की प्रेरणा, यहाँ की गूंज के बारे में व्यक्त किया है। மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களே, कि आज का दिन பிரதமர் அவர்கள் இந்த அவையின் அருமை பெருமைகளை பற்றி பேசினார்கள். में हम चर्चा करें। ஒரு அருமையான சூழலில் நான் இதை பற்றி ஆன விவாதங்களை यहाँ से செய்ய வேண்டும். हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी इस देश को लोकतंत्र को दिया है उसके बारे में सकारात्मक विचार रखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अधीर रंजन चौधरी जी। प्रधानमंत्री को उपस्थित रहना चाहिए तो हमारी बात सुन ले। ये क्या हमारी याद आ रही सर ये हमारे ये उनका बैग यहीं पे है, उनका बैग यहीं पे है, उनका बैग यहीं पे है। ये देखिए बैग आपके बैग यहीं पे। आप तो चले नहीं गए, आप तो चले नहीं गए, आ अरे। रहे वापस। चिंता नहीं आ रही है। आपके कहाँ गए? बहुत लंबी भाषण के। अरे आ रहे भाई, आप कहाँ जा रहे? सर सर Please. Sir, I must appreciate your endeavor for offering this opportunity to ventilate our views on the constitutional दिवस, संविधान दिवस। लेकिन बात यह सर, कहे तो जाते हैं 75 साल, लेकिन जब तक मेरा जानकारी है
सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सभा हुई थी वो 1946 में, और 1949 26 नवंबर में ये अडॉप्ट हुई थी, और 1950 26 जनवरी ये चालू हुई थी हमारे संविधान इस देश में। लेकिन आप कहां से 75 साल की अमृतकाल ये लाया गया, ये मुझे समझ में नहीं आते हैं। सर, सही मायनों में जब ये सदन ये खबर मिल रहे हैं कि आज ये सदन की अंतिम दिवस है, तो सही महीनों में भावुक तो होना स्वाभाविक है। कितने सारे विद्वजनों ने, ज्ञानियों ने, पंडितों ने और देश प्रेमी ने हमारे ये सदन, उसके साथ साथ हमारा संविधान और ये देश की लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए न जाने कितने योगदान किए होंगे। बहुत सारे हमारे पूर्वजों ने ये दुनिया छोड़ के चले गए, उनका याद हम करते रहेंगे। जिंदगी में ये सदन जरूर कहेगी कि जिंदगी में कितने दोस्त आए और कितने बिखर गए। किसी ने 2 रोज के लिए आए, तो किसी ने चलते ही सांस भर लिए। माननीय सदस्य प्लीज डाउन, प्लीज माननीय सदस्य, नाम लेके पुकारूंगा, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए, बैठिए। सर कैसे जिंदगी में कितने दोस्त आए और कितने बिखर गए। வாழ்க்கையில் எத்தனை நண்பர்கள் வந்திருக்கிறார்கள், எத்தனை நண்பர்கள் किसी ने चलते ही सांस भर लिए। சென்றிருக்கிறார்கள்। जिंदगी की दूसरा नाम है दरिया, वो तो बस बहते रहेंगे, चाहे रास्ते में फूल गिरे या पत्थर। उसी तरह हमारी ये सदन की कारवां ये भी चलते आ रहे हैं और आज भी ये चल रहे हैं। Sir, today I may come to that conclusion that this is the last day. Naturally, we are all present here to bid the adieu of our. இன்று இந்த அவையின் கடைசி நாள். எனவே நாம் அனைவரும் இணைந்து இந்த கட்டடத்திலிருந்து விடைபெறுகின்ற ஒரு நேரம். Because tomorrow onward we will be shifting to a new parliamentary. நாளை முதல் நாம் ஒரு புதிய பாராளுமன்ற கட்டிடத்தில் நம்முடைய பணிகளை தொடங்குவோம். ये कहना चाहते हैं, मैं ज्यादा समय तो नहीं है हम लोगों के लिए, कि जब संसद में संविधान की चर्चा हो, लोकतंत्र की चर्चा हो, तो हमारे पंडित नेहरू जी और बाबा साहेब अम्बेडकर, नेहरू जी तो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते थे, बाबा साहेब अम्बेडकर எப்போதெல்லாம் பாராளுமன்றத்தை பற்றிய பேச்சு இங்கே எழுகிறதோ அப்போதெல்லாம் பண்டித் நேரு அவர்களை பற்றியும் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்களை பற்றியும் நாம் பேசுகிறோம். அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்த ஜனநாயகத்தை உருவாக்கியவர்கள், இந்த அரசியல் சட்டத்தை உருவாக்கியவர், ஜனநாயக சிற்பி. कहना चाहते हैं सर, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया नेहरू had said parliamentary democracy demands many virtues. It demands, of course, ability, it demands a certain devotion to work, but it demands also a large measure of cooperation, of self-discipline, of restraint. We know very well that there are not many countries in the world where it functions successfully. I think it may be said without any partiality that it has functioned with large measure of success in the country. Why? Not so because we, the members of this house, are exemplars of wisdom, but I think because of the background of our country
and because our people have the spirit of democracy in them. Jawaharlal Nehru, you detested cultism. He was humble in his submission to constitutional requirement. In an interview with Mr. P.K. Karanjia, he specifically mentioned, "You are wrong in using words like the Nehru epoch or Nehru policy." Though he enjoyed massive majority in the parliament, he was tireless in listening opposition voice and never mocked. நேரு அவர்கள் பிகே கரந்தியா அவர்களோடு நடத்திய ஒரு நேர்காணலில் He never believed in சொல்லியிருப்பது என்னவென்றால், இது நெஹ்ருவுடைய குரலோ நேருடைய கொள்கையோ அல்ல, member. இது பாராளுமன்றத்தின் குரல், பாராளுமன்றத்தின் கொள்கை. Smoothly, he was not only led the nation in a difficult அவர் பெரும்பான்மை வகித்த போதும் எதிர்க்கட்சிகளின் குரலை கேட்பதற்கு தயங்கியதே இல்லை. for parliamentary democracy by his immense contribution. Sir, मैं आपके संगठन में लाना चाहते हैं. Even Speaker Bell would ring for Jawaharlal Nehru when he exceeded time limit while making his speeches in the parliament. It shows that no one was beyond parliament prerogative and that was நெஹ்ரு பேசும்போது அவர் நேரம் கடந்து பேசினால் ஸ்பீக்கர் சபாநாயகர் அவர்கள் அவருக்கு parliamentary democracy in விரைவில் முடிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துவார். England in the அந்த வகையில் பாராளுமன்றத்திற்கு நேரு அவர்கள் மரியாதை அளித்தார். the glorious beginning of our parliamentary democracy where healthy debate and discussion were order of the day. Sir, अगर सदन में जवाहरलाल नेहरू की चर्चा ना होगी तो it will be equivalent of the performance of Hamlet without the presence of Prince of Denmark. At the stroke of midnight hour, the iconic speech has delivered in the parliament still has been reverberating the entire precinct of this house. Sir, another one, most illustrious person, Baba Saheb Ambedkar. Sir, Baba Saheb Ambedkar, who is regarded as the father of our constitution, he suggested that political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity, which are not to be treated. இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்பட்ட They form a union of trinity. டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்கள் Both one from the other is to defeat சமூகத்தில் ஒவ்வொரு equality, பகுதியில் இருந்தும் not be divorced சமத்துவம் from liberty. நிலவ வேண்டும். Cannot be divorced from equality. And or equality and liberty can be divorced from fraternity. Now we need the mantra of Baba Saheb Ambedkar. The mantra லிபர்ட்டி இருந்தால்தான் ஈக்குவாலிட்டி வரும், ஈக்குவாலிட்டி இருந்தால்தான் லிபர்ட்டி வரும் என்று அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார். make this parliamentary democracy glorious for us to be remembered again and again. Sir, ये पार्लियामेंट में कभी भगत सिंह जी एक बम फेंका था, लेकिन किसी को आहत करने के लिए नहीं, ब्रिटिश सरकार को जगाने के लिए. இந்த அவையிலே தான் பகத்சிங் அவர்கள் குண்டு வீசினார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் யாரையோ கொல்வதற்காகவோ அழிப்பதற்காகவோ அல்ல, हमारे ஆங்கில அரசை और सारे लोग விழிக்கச் செய்வதற்காக, விழித்து கொள்ளச் செய்வதற்காக அவர் அந்த நடவடிக்கை எடுத்தார். हमारी तरफ से श्रद्धा अर्पण करना चाहते हैं. ये सदन के सारे मेंबरों के साथ साथ हमारे जितने स्टाफ है सर, ये मेहनत करते हुए आज इस सदन को इतना गरिमामय बनाया है. सर आप उनके चौक जाओगे सर, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान की ये प्राइम मिनिस्टरशिप को संभाला, ये देश को अगुवाई करने के लिए तैयार हुई, तब हिंदुस्तान की हालत क्या थी जानते हैं सर? हमारे आयु थी
महज 32 साल। हमारा साक्षरता थी महज 12%। सर, पर कैपिटा हमारा रोजगार क्या था जानते हैं सर? सिर्फ 245। आप सोचिए, एक तरफ अकाल, विभाजन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा, लाखों की तादाद के लोगों को जान गंवाने पड़े, सारे देश में तही तही मच गई थी। उसी कठिन हालात में जवाहरलाल नेहरू साहब को ये सरकार को संभालने पड़ी। இந்த நாடு வறட்சியில் துன்பப்பட்டு கொண்டிருந்த போது, நாடு பாகிஸ்தான் இந்துஸ்தான் என இரண்டாக பிரிந்து இருந்தபோது, அந்த ஒரு கஷ்டமான கடினமான சூழ்நிலையில் பண்டித் அவர்கள் இந்த நாட்டின் பிரதம மந்திரியாக இருந்தார். 14-15 साल तक ये देश की हर व्यक्ति की रोजगार बढ़ाया गया था 72,000 रुपया। अभी उससे और बड़ी होगी। इसका मतलब किस जगह से उन्होंने शुरू किया था और किस जगह पहुंचे। इसीलिए उन्होंने कहा था उसी दिन कि लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेक ट्विस्ट विद डेस्टिनी and the time comes when we will redeem our faith. அதனால்தான் அவர் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நம்முடைய தலையெழுத்து என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் முடிவு செய்தோம், அதற்கான நேரம் இப்போது வந்துவிட்டது என்று அவர்கள் சொன்னார்கள். आगे बढ़ाएंगे और देश आगे बढ़ते बढ़ते सर, चंद्रयान की बात हो रहे थे। आपको जानकारी देना चाहते हैं, 1946 में हमारे देश की आजादी के पहले ये नेहरू जी के नेतृत्व में एटॉमिक रिसर्च कमेटी बनाया गया था। 1948 से हमारे देश में ये नेहरू जी के नेतृत्व में हम सिर्फ आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आज की साइंस विज्ञान की तरफ हम आगे निकलते हुए சந்திரயானை பற்றி பேசும்போது 1940லேயே நேரு அவர்கள் இந்த பயணத்தை தொடங்கி வைத்தார் என்பதையும், அறிவியல் வளர்ச்சிக்கான திட்டங்களை 1948லேயே தொடங்கினார் என்பதையும் நாம் அறிய வேண்டும். இஸ்ரோ இப்போது உருவாகவில்லை, 1964லே உருவாகியது. இப்போது இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் என்று இருக்கிறது. இது எப்படி மாறும் என்று தெரியவில்லை. எங்கிருந்து பாரத் என்ற வார்த்தையை அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை. Sucheta Kripalini, a member from Uttar Pradesh, sang the first verse of Vande Mataram to mark the opening of special session. Prime Minister Jawaharlal Nehru delivered his famous speech. அரசியல் நிர்ணய சபையின் தலைவராக ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்கள் இருந்தார். வந்தே மாதரம் என்ற பாடலை பாட வேண்டும் என்பதை சுச்சேதா கிருபலானி அவர்கள் கொண்டு வந்தார். Under the shadow of double calamity, the sad demise of the tallest man of our age, who has led us from slavery to independence and reappearance of the cult of political violence in our country. Mavalankar said, a glory that was said by Mavalankar ji. What Nehru ji uttered, a glory has departed, and the sun that warmed and brightened our life has said and is shivered in the cold and dark. Sir, सदन में चर्चा होगा, वो भी स्वतंत्र की मुद्दे पे, हमारे कौशल की मुद्दे पे, और महात्मा गांधी जी के नाम जिक्र नहीं होने से अच्छा नहीं लगता है सर। सर, हमें बाजपेयी जी को बहुत श्रद्धा करते हैं, अभी भी करते हैं। सर, उन्होंने दिखाया ताकत,
1974 में इंदिरा जी पोखरान में एटॉमिक एक्सप्लोजन किए। सर उस समय से विदेशों की ताकतों ने हमें कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन अटल जी रुके नहीं। नरसिम्हा राव की जमाने में भी ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने के लिए सोचा गए थे, लेकिन इसको साकार किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और 1974 வெளிநாட்டு சக்திகள் நம்மை பலவீனப்படுத்த முயற்சி செய்யும் போது நம்முடைய குரலாக இந்திரா காந்தி அவர்கள் அடல் பிகாரி வாஜ்பாயி அவர்களை ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கு அனுப்பினார். அதே போல நரசிம்மராவ் அவர்கள் பிரதமராக இருந்தபோதும் நாட்டின் பிரச்சனைகளை பேச வாஜ்பாயி அவர்களை அனுப்பினார். मौन नहीं थी, लेकिन बात कम करते थे और काम ज्यादा करते थे। फर्क है सर। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील किसकी अगुवाई में हुई बताइए सर। इसी सदन में इस चेयर में बैठा होते हुए सोमनाथ चटर्जी साहब देश के लिए वो यूएस न्यूक्लियर डील को समर्थन किया और अपने पार्टी को नकार दिया। तो ये उदाहरण है। तो ये इंडो यूएस न्यूक्लियर डील अगर नहीं होते तो आज अमेरिका देश हमारे साथ इतना जुड़ाव ना दिखाते। ये भी हमें विचार करना पड़ेगा सर। हमारे इस पार्लियामेंट में क्या क्या हुई सर, छोटा सा मैं ब्यौरा देना चाहती हूँ सर। देखिए सर, इस सदन में सर 1951 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पारित हुई थी to ensure that people are given the right to vote। अगर वोट देने के अधिकार ना होते तो आज बाकी बात करने की हमें गुंजाइश ना होती। सर दूसरा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, a law that has helped the government regulate the production, supply and distribution of essential commodities such as drugs, oil, kerosene, coal, iron, steel, pulses। सर तीसरा क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया 1967। 4 nationalization of banks, 14 banks were nationalized with enhanced banking infrastructure and services and created option of cheaper credit to farmers। बता दें सर 1974 में एटॉमिक जब एक्सप्लोजन हुई थी ना, हमारे प्रधानमंत्री इस समय रही थी सर ये इंदिरा गांधी। ये भी आपको याद दिला। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब हुई थी हमारे देश में क्रांति के स्वरूप से, एक क्रांति के रूप से हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी। आज तो हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। शुरुआत हमारे स्वर्गीय राजीव जी ने किए थे। शायद हम सबको ये याद करें। सी डॉट से लेकर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना भी एवोल्यूशन होते हैं, इसका पीछे क्या इतिहास है इसको हमें ध्यान में रखना है। हिस्ट्री को हम भूलना नहीं चाहिए। History is the remembrance of the past. It transmits from generation to generation. अगर history को हम cancel check नहीं बता सकते, history could not be treated as a cancel check. Rather, it should be treated as a promissory note in future. And now, what? And we should spend it wisely. That should be the agenda of the any government. Sir, Anti-Defection Law 1985 or Child Labor Act 1986, the Scheduled Caste and Tribes Prevention of Atrocities Act 1989 to prevent atrocities against members of scheduled caste and scheduled tribes। सर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एक्ट, ये और एक क्रांतिकारी एक्ट है। ये enacted in 1992। This act aims to decentralize power and ensures local self-government, enhancing grassroots democracy। सर आज देश में 3 सरकार है, केंद्र की सरकार, सूबे की सरकार, ग्राम की सरकार, लोकल सरकार। ये it was a social revolution, and that social revolution occurred without shedding even a drop of blood। That is the significant achievement of our former government of under Rajiv Gandhi ji। Sir, Member of Parliament Local Area Development Scheme 1993, the Right to Information Act 2005, it is a landmark
The Right to Information Act 2005 is a landmark legislation that revolutionized transparency and accountability in government. In governance, it empowers citizens to request information from public authorities, thus promoting openness and reducing institutional corruption. Sir, I am being tempted to refer the name of my leader, Madam Sonia Gandhi ji. Sir, Madam Sonia Gandhi ji, who took the initiative to pass the landmark legislation Right to Information Act. History will remember. The scheduled tribe and other traditional forest dwellers, recognition of Forest Rights Act 2006, National Rural Employment Guarantee Act NREGA. ये नरेगा के खिलाफ कटुक्ति करते हुए कहते किसी ने ये मरेगा, लेकिन नरेगा मरे नहीं, नरेगा जिए हैं। और नरेगा से हमें ग्रामीण लोगों को अभी भी ग्रामीण लोगों को इसके सहारे जीने का मौका मिलते हैं। सर, राइट टू एजुकेशन एक्ट और एक क्रांतिकारी विधेयक पारित किए गए 2009 साल में। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट की तहत इट मेड एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन एजेड 6 to 14 years. Again, Food Security Act, National Food Security Act 2013. The Food Security Act aims to provide subsidized food grant to large section of the population, ensuring food security. It sought to address malnutrition and hunger by guaranteeing access to essential food items. Sir, the issue is, sir, जानते हैं गरीबी बढ़ रहे हैं, सारा देश में गरीबी बढ़ रहे हैं। सर, पॉवर्टी इंडेक्स में 117 की देश के अंदर हम 107 पे आ गए। सर, कभी हमारे देश को देखते हुए रेज और अमर्त्य सेन ने ये कहा था कि इट लुक्स लाइक द आइलैंड ऑफ कैलिफोर्निया इन ए सी ऑफ सब-सहारन कंट्री। इसलिए हमारा ये गरीबी को सबको चुनना है। एक तरफ बढ़ते हैं कुछ चुनिंदे लोगों ने, लेकिन दूसरी तरफ हमारा गरीबी भी बढ़ते जा रहे हैं। इसको ध्यान में रखना चाहिए। सर, राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट 2013, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014। सर, बाद में क्या देखा हमने? बाद में हमें विरोध करने पड़े, क्योंकि सदन के अंदर विरोध करने का अधिकार तो हमें है, और विरोध करने के अधिकार हमारे संविधान भी हमें देते हैं। सर, इंडो-यूएस न्यूक्लियर डील जब चर्चा होते थे, जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था इस सदन में, तो कौन सा पार्टी कौन सा पक्ष में थे, शायद आपसे ज्यादा जानकारी है। मैं आज इसी शुभ एक अवसर पर किसी को और नहीं बोलना चाहते, लेकिन सर, डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी नोट इन 2016 हमने विरोध किया। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स जीएसटी उस समय भी लाए गए थे जिस समय दूसरा सरकार थे, लेकिन फिर भी लाने में जो कमियां थी वो बार बार हम लोग उसका उजागर कर चुके हैं। सर, हमें एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड फ्लाइट ऑफ कश्मीर, ये मुद्दे को भी हमें आलोचना जरूर की थी। कश्मीर हमारा अंग है। सर, आज भी देखिए कश्मीर में हमारे फौजों को जान गंवाने पड़ती, इसमें तो यह साबित होते हैं उस दिन हमारी तरफ से जो शंका जाहिर किए थे वो शंका सही है। सर, आज मैं ये चाहता हूं कि हमारे सदन के अंदर हमारे जो रणकुबड़े जो फौजों ने वहां जान गंवा रहे हैं, उसके लिए कम से कम हम थोड़ा सा मौन व्रत करते थे, थोड़ा सा साइलेंस ऑब्जर्व करते थे, अच्छा होते सर। एक तरफ मणिपुर, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर जल तो रहे हैं दोनों, और हम जल तो रहे हैं, इसलिए हमें बहुत कुछ करना बाकी है। ये तो सिर्फ एक झांकी है, हमें बहुत कुछ करना बाकी है। सर, और एक देखिए, और एक डिविजिव लेजिस्लेशन, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एंड एनआरसी। तो इस तरीके की डिविजन लेजिस्लेशन के विरोध हम लोग किए हैं सदन के अंदर। जो हम किए हैं बताते हैं। सर, हम लोग विरोध किए हैं, ये फार्म लोग के चलते हम विरोध किए हैं, और हमारे विरोध के चलते, देश की किसानों की विरोध के चलते ये सरकार को फिर वापसी तो लेने पड़ी। सर, फिर डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग तो विरोध किए थे सर। जो किए हैं हम वजह क्या है बता दिए हैं सर, और ये सारे हमारी तरफ से बात रखे गए हैं। सर, हम तो ये चाहते हैं कि आज की हालत में हमारी तरफ से और एक मांग
आपके पास रखना चाहते हैं। वो मांग ये है सर कि हमारी सदन में एक आप नियम चालू करें, इसमें विपक्ष के लिए सिर्फ एक दिन विपक्ष के लिए डेडिकेटेड किया जाए। उस दिन विपक्ष सब कुछ बोलेगा, विपक्ष को जो मर्जी विपक्ष को बोलते रहेंगे। इसलिए एक दिन विपक्ष के लिए अब रख दिया करो। सर आपको शायद ये भी जानकारी होंगे कि हमारे पार्टी की तरफ से, खासकर हमारे पार्टी की सीपीपी चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी जी वोमेन रिजर्वेशन बिल के लिए सदन में कितने बार सवाल किए हैं और उन्हीं की अगुवाई में राज्यसभा में पारित होते हुए भी ये आज तक साकार नहीं हो पाए। तो हमारी तरफ से फिर हम ये मांग करते हैं कि आपकी सरकार रहते हुए वोमेन रिजर्वेशन बिल को पारित किया जाए। ये हमारे देशवासी எங்களுடைய கட்சியின் தலைவர் சோனியா காந்தி அவர்கள் பலமுறை இந்த அவையிலே மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதாவை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார். நீங்கள் இந்த கூட்டத்திலாவது அந்த மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதாவை கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी के बीच मैं ये कहना चाहते हैं कि आज देखिए एक माहौल पैदा होते जा रहे हैं कि मेजोरिटी रहने से सब कुछ हम कर सकते हैं। सर देयर आर फियर्स ऑफ एन एम्बिशन टू एस्टैब्लिश ए वन पार्टी डिक्टेटरशिप। ये देश में एक माहौल पैदा हो रहे हैं। दिस हैज लेड टू द साइडलाइनिंग ऑफ द ऑपोजिशंस रोल इन पार्लियामेंट, destabilization of opposition-led governments through tactics like the purchase of members of the assembly and the selective use of பெரும்பான்மை இருப்பதால் எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்ற எண்ணம் இப்போது நிலவுகிறது. எதிர்க்கட்சிகளின் குரலை ஒடுக்கும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. and the erosion of parliamentary procedure have become particularly pronounced during the second term of this dispensation. In 2021, the Parliament convened for fewer than 50 days with minimal discussion on legislation and inadequate scrutiny of legislative bills. The decline in the referral of bills to standing committee is also notable, dropping from 60 to 70% during the previous government to only 22%. आपके लिए अच्छा होगा, ये हमारे डिप्टी लीडर है, पूछिए ना सर, हो गया. The first term of this government, a mere 13% in the second term. Additionally, the opposition has been denied the right to raise issues and press for vote during the legislative process. பாராளுமன்றத்தில் விவாதங்கள் இல்லாமல் பல சட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. பாராளுமன்ற கமிட்டிகளின் கூட்டங்களும் சரியாக நடத்தப்படுவதில்லை. India's transition, sir, मान के चलिए, India's transition from one party dominant system to multi-party system, and more recently to a nation one-party system under this regime has fundamentally altered the dynamics of engagement with Parliament. One positive aspect of parliamentary story is its representativeness. Initially in 1952, Parliament consisted mainly of lawyers associated with the freedom movement and the independent legislative bodies. But now, scheduled caste, scheduled tribe, OBC, all have been included in the legislative mechanism. It's a very positive idea. Sir, मैं जानता हूँ सर आपको थोड़ा जल्दबाजी है, मैंने आपको पहले बोल दिया था सर। मैं ये कहना चाहते हैं, देखिए सर, ये हमारे देश, इसमें तरह की बात तो की जाती है, लेकिन सच तो ये है कि इंक्लूसिवनेस की बात होते हुए भी इंक्लूसिव नहीं है हमारे पास। आप खुद देख लीजिए, नंबर देख लीजिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को संख्या देख लीजिए और खुद तय कर लीजिए। मैं कुछ नहीं कह रहा आज, कटुता हम नहीं चाहते सर। बात यह है कि सर ये हिंदुइज्म की अगर बात करेंगे, हिंदुइज्म क्या होता है? हिंदुइज्म में 4 वेद, मिलियंस ऑफ गॉड, 18 उपनिषद सर, 6 क्लासिकल स्कूल ऑफ फिलोसफी सर, 2 एपिक। நீங்கள் இந்து இசத்தை பற்றி பேசுகிறீர்கள். இந்து மதத்தில் 4 வேதங்கள் இருக்கின்ற, 18 உபநிடதங்கள் இருக்கின்றன, 2 இதிகாசங்கள் இருக்கின்றன. What does it suggest? It suggests that plurality is the
essence of our civilization. We may be a young nation, but certainly we can proud of old civilization. Sir, हमारे civilization क्या कहते हैं? Pluralism की बात करते हैं. India as a nation or as a civilization is an unending celebration of pluralism. Sir, pluralism accommodates different. ப்ளூரலிசம் என்பது நம்முடைய பாரம்பரியத்தில் இருக்கிறது. सर ये हम कहना चाहते हैं, जब ये कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम मतलब क्या है? यही तो मतलब है, सबको चिंता को, सबकी भावना को शामिल करना चाहिए. வசுதெய்வ குடும்பகம் என்றால் என்ன? அனைவருடைய எண்ணங்களையும் அனைவருடைய பாவனைகளையும் நாம் அணைத்து கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதுதான். ये संस्कृत में ये भी दोहरा गया है, अहंकारम बलम दर्पम क्रोधम. सर अहंकारम बलम दर्पम ये वर्जित कहते हैं हमारे हिंदू धर्म. सर इसलिए मैं कहना चाहते हैं अहंकार को छोड़ना चाहिए हम सबको. हो सकता है आपका बहुत क्षमता हो सकता है, आपको कभी हमको, लेकिन इसको वर्जन करना चाहिए. अहंकारम बलम दर्पम ग्रामम क्रोधम समस्थिता मम आत्मा सर्वदेहेषु प्रदो विष्णु उपस्वाका. मतलब क्या है? मतलब ये होते हैं कि ऊपर वाले को गुस्सा की आप आमंत्रण ना करें तो बेहतर है. सर इसलिए आज जब सदन के अंतिम दिन है, मैं उस बुजुर्गों को स्मरण करते हैं जो हमारे बीच अभी नहीं है. இன்று இந்த கட்டடத்தின் கடைசி நாள் கூட்டம். நாம் நம்முடைய முன்னோர்களுக்கு வணக்கம் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். सर मैं और एक बात करना चाहते हैं. सर बस लास्ट बात. देखिए सर, हम सब ये हमें भुगतना पड़ता है सर इसके लिए, इसलिए मैं रखना चाहते हैं आपकी निगाहों में. ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है मानना. अब सुन लीजिए सर, इट इज द मोस्ट फंडामेंटल पार्लियामेंट्री राइट ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. Every member is entitled to freely and fearlessly express himself on the floor of the house inter alia on burning issues of the day and matters of urgent public importance. If a member fails to do so under one of the available procedural devices, he often takes recourse to what has come to be known as zero hour. While unparliamentary or objectionable expression may be expunged from the proceeding of the two houses of parliament by the respective presiding officer under the existing rule, shutting off or blinding the proceedings of any house under the presiding officer's direction, that nothing of what is said without his permission would go on record may be questionable desirability, in as much as in that case the reports of the proceedings cannot really be regarded anymore as a faithful record of all that happened. This applies equally well to the expurgated and edited version of the selected proceedings that may be telecast. In any case, when the question hour or any other part of the proceeding is telecast live, how can the presiding officer expunge an order operate? सर इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे अधिकार को ये दे जाना चाहिए. सर हम चाहते हैं कि सदन की जो गरिमा, वो गरिमा बरकरार रही है. सर आज स्पेशल सेशन है, ये नॉर्मल सेशन है, क्या है किसी को पता नहीं. हमें बाहर से मीडिया वालों के हवाले से पता चलता कि स्पेशल सेशन है ये नहीं. सर जब मिडनाइट सेशन होते हैं, जैसे कि आज़ादी की दिन हुई थी 14-15 अगस्त, वैसा मिडनाइट उसमें चर्चा नहीं होते. जैसे कि जीएसटी के लिए नरेंद्र मोदी जी किए थे, चर्चा नहीं होते, लेकिन बाकी स्पेशल सेशन में चर्चा होते. लेकिन उसके साथ साथ बाकी लेजिस्लेशन नहीं जा सकते. लेकिन यहाँ 8-9 सारे मुद्दे को आप शामिल किए हैं. पता नहीं इस तरीके की कैसे आप सदन को गरिमा को बरकरार रखेंगे. क्वेश्चन आवर में हमें शामिल होने का मौका नहीं है, जीरो आवर उठाने का मौका नहीं है. फिर आप कहते हैं कि गणतंत्र गरिमा को बजाय रखना. இந்த சிறப்பு பாராளுமன்ற கூட்டத்திலே பாராளுமன்றத்தின் பழைய வரலாற்றை பற்றி பேசுவதற்காக கூட்டப்பட்டிருக்கிறது என்பது இங்கு வந்த பிறகுதான் தெரிகிறது. இந்த கூட்டத்தில் என்ன பேசப்பட இருக்கிறது என்பதை பற்றி நாங்கள் பத்திரிகைகள் மூலமாகத்தான் தெரிந்து கொண்டோம். இங்கே கொச்சின் அவர் இல்லை, ஜீரோ அவர் இல்லை. हम नया सदन में जाएंगे, लेकिन पुराने को याद में रखेंगे. सर फिर एक बार कहना चाहते हैं, हमारे राजेश खन्ना जी बाबू मोशाई एक पिक्चर थे, उसमें कहा था जिंदगी बड़ी होना चाहिए, लंबी नहीं. हम रहे या ना रहे, लेकिन आज सदन के अंदर हम जो करते जा रहे हैं
अगले दिन हमारा पीढ़ियों ने इसको याद रखेंगे। इसलिए जिंदगी बड़ी होना चाहिए, लंबी नहीं। ये बात कहते हुए मैं अपना बात माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करना है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का संयुक्त ग्रुप फोटोग्राफ, राज्यसभा सदस्यों के ग्रुप फोटोग्राफ और सभी लोकसभा के सदस्यों का ग्रुप फोटोग्राफ मंगलवार 19 सितंबर 2023 को 9:30 बजे संसद भवन के प्रांगण नंबर 1 द्वार संख्या 1 सेंट्रल हॉल के बीच में किया जाएगा। अतः मैं आपसे अनुरोध है कि ग्रुप फोटोग्राफ के लिए 19 सितंबर 2023 को செப்டம்பர் 19ஆம் தேதி அதாவது நாளை பாராளுமன்றத்தின் மத்திய ஹாலில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கும் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. காலை 9:30 மணிக்கு அனைவரும் அந்த இடத்திற்கு வருமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். The DMK now presided by the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. M.K. Stalin, has been part of all historical discussion in this house and also in the other house. இந்த அவையிலும் ராஜ்யசபையிலும் எல்லா வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்ச்சிகளிலும் There is nothing special. எங்களுடைய கட்சி தமிழகத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களின் தலைமையில் ஆட்சி செய்கின்ற எங்களுடைய கட்சி பங்கெடுத்து கொண்டிருக்கிறது. Government building has been constructed at an enormous cost without a wealth need. Money has been carved. இந்த புதிய பாராளுமன்ற கட்டிடம் மிக பெரிய பொருட்செலவில் தேவையில்லாமல் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. Inaugurated with much fun and fare. But why the last session was not held? Was it due to any vastu consideration or any only today you could find the auspicious moment? More than auspicious time, what is needed is an auspicious agenda of business, which augurs well. அந்த பாராளுமன்ற கட்டிடம் திறக்கப்பட்டு விட்டது. ஆனால் இன்றுதான் அந்த உள்ளே செல்வதற்கான நேரம் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏதாவது வாஸ்து தொடர்பாகவா என்று தெரியவில்லை. Certain urgent mission of the ruling party to fulfill certain ulterior objects only in violation of democratic norms. This sitting will take stock of இந்த அவையின் விதிகளுக்கு மாறாக independent nation. ஆளும் கட்சியின் ஏதோ ஒரு ரகசிய திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக இந்த கூட்டம் கூட்டப்பட்டிருக்கிறதோ என்ற சந்தேகம் எங்களுக்கு ஏற்படுகிறது. We have already stepped into 76 years. If at all any special event has to take place of the long journey, it has been done. It should have been done last year itself. Okay, even accepting the நாங்கள் 76 ஆண்டுகளை நம்முடைய ஜனநாயகம் கடந்துவிட்டது. ஏதாவது சிறப்பு நிகழ்ச்சி நடத்துவதாக இருந்தால் சென்ற வருடமே நடத்தியிருக்க வேண்டும். historic parliament, house where the country's destiny was decided further nurtured and renewed in 1947. India, our country, our dear nation, the largest and vibrant democracy in the world, is today because of the invaluable contributions of firstly of the people of the country. Then comes to the political parties and the leaders who steer governments for the majority of the time. That is, for the past 60 years, government of India was run by parties other than the present party. The strong base of the modern India, the developed India was laid by 6 decades of planned work done by sovereign leaders starting from Jawaharlal Nehru, the light of Asia. வளர்ச்சியடைந்திருக்கின்ற இந்தியாவின் Indira Gandhi, அடிப்படையை 60 ஆண்டுகளாக ஆட்சி செய்த பெருந்தலைவர்கள் நிறுவியிருக்கிறார்கள். பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு, லால் பகதூர் சாஸ்திரி, இந்திரா காந்தி, நரசிம்மராவ் போன்ற தலைவர்கள் நிறுவியிருக்கிறார்கள். VP Singh ensured social justice to them, which was denied to those marginalized. விபி சிங் அவர்கள் சமூகத்தில் அநீதி இழைக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நீதி அளித்திருக்கிறார். To stand out and shine in our modern history of progress, his government was pulled down with vengeance by forces inimical to the empowerment of weaker section. Leaders and their parties who led the country with a lot of sagacity and foresightedness, but whenever there was political instability, when single party majority evaded mainstream parties, it was like saving and protecting standard person
It happened in 1989, 96, 98, 99, 2004 and 2014. The leaders who came to the rescue of the nation at critical times were Devagowda, I.K. Gujaral, Atal Bihari Vajpayee, and ஒரு கட்சி பெரும்பான்மை பெறாத சமயத்தில் பல கட்சிகள் இணைந்து கூட்டணியாக நாட்டின் அரசாட்சியை செலுத்திய காலகட்டம் இருந்தது. தேவகவுடா, ஐ.கே. குஜரால் போன்றவர்கள் பிரதமர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள். திரு கருணாநிதி அவர்கள், சுரஜித் சிங் பர்னாலா அவர்கள் போன்றவர்களுடைய பங்களிப்பை எல்லாம் நாம் நினைத்து பார்க்கும்போது இது நமக்கு புலப்படும். minority population group. DMK in parliament since 1962. Our total leader Anna, who was in high esteem by his contemporary leader Nehruji, Vajpayee and others. 1962 இந்த அவையின் உறுப்பினராக இருந்த எங்கள் கட்சியின் தலைவர் திரு அண்ணாதுரை அவர்களை பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேருவும் வாஜ்பாய் அவர்களும் மிகவும் மரியாதையோடு பார்த்தார்கள். அண்ணா அவர்கள் திராவிட நாடு கோரிக்கையை கைவிட்ட போதும் தனி நாடுக்கான தேவை இன்னமும் இருப்பதாக நாங்கள் நினைக்கிறோம். Promises given to his members, state and just aspiration of the people of the state, with various cultural traditions have been broken by Union of India. The latest example is repeal of Article 370 and snatching away the special status of Jammu and Kashmir, like lighting the பல்வேறு வாக்குறுதிகள் பொதுமக்களுக்கு கொடுத்ததை இந்த ஒன்றிய அரசு நிறைவேற்றவில்லை. பல மக்கள் விரோத நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்கிறார்கள். உதாரணமாக காஷ்மீரில் 370 சட்டப்பிரிவை நீக்கியது. சந்திராயன் வெற்றியை ஒரு கட்சியினுடைய வெற்றியாக நாம் பார்க்க முடியாது. கோடிக்கணக்கான மக்களின் பங்களிப்பு அந்த வெற்றியிலே இருக்கிறது. Union of India should go extra mile to get full confidence of the people of states and fulfill the regional aspirations in terms of secularism, equal rights for development, linguistic, political and democratic rights. While mentioning about the crucial role played by DMK party in ensuring stability and national government at center, I have tell you about the support extended to Indiraji government in 1969 and Vajpayee government in 1999. After vertical split support by Congress in 1969, the Indiraji government lost majority. It becomes a minority government. This happened after leader Anna has passed away in 1969. Congress was not our friend then, but when mattered to our great leader Kalangar, who succeeded Anna as Chief Minister and President of DMK, was stability of the Union of India. Still the scars of 1962 was with China was still paining us. Therefore, Kalangar decided with a clear vision to support Indiraji with our 26 members in Lok Sabha. With our continued support, she was able to bring the revolutionary policy measures like abolition of privy purse, nationalization of banks and other poverty alleviation programs. Anna, a good friend. காங்கிரஸ் கட்சி இரண்டாக உடைந்தபோது சீன போரின் விளைவாக நாடு சிரமப்பட்டு கொண்டிருந்த போது நாட்டை காப்பாற்றுவதே முக்கியம் என்று எண்ணி கலைஞர் அவர்கள் இந்திரா காந்தி ஆட்சிக்கு ஆதரவு கொடுத்தார். இதன் மூலம்
ராஜாக்களுக்கு அளித்து வந்த பிரிவி பர்சு ஒழிக்கப்பட்டது. Of Vajpayee government. The government was in ICU for 13 months. She was gifting life to Vajpayee government on a daily basis. What a pity. Ultimately, she pulled out and government fell at 13th month in March 1989. And the confidence motion in Lok Sabha, DMK supported Prime Minister Vajpayee, but he lost by one vote. In the subsequent election, வாஜ்பாயினுடைய 13 ஆண்டுகால ஆட்சியை for the Prime Minister, because of அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தங்களுடைய ஒத்துழைப்பை விலக்கியதால் வீழ்ந்தது. animosity towards all நம்பிக்கை ஓட்டெடுப்பின் போது திமுக வாஜ்பாய் அரசை ஆதரித்த போதும் ஒரு ஓட்டு வித்தியாசத்தில் அவர் தோல்வியுற்றார். only that Vajpayee has asked his other leaders in his party to stick to Adithanar. He was able to complete his full term as Prime Minister with prestige and hope. Worked on test and Kargil victory was possible because of stability of Vajpayee's government with the DMK support and our leader Dr. Kalai's support was the main reason அதற்கு பிறகு சில வருடங்கள் கழித்து வாஜ்பாய் மீண்டும் இந்தியாவின் பிரதமராக ஆனார். of India's history. திமுகவின் முழு ஒத்துழைப்போடு அவர் 5 ஆண்டு காலம் This important பிரதமராக இருந்தார். how DMK has played a respectable role in providing stable government at the center, sir. In the building of the modern India, the role of former young Prime Minister Sir Rajiv Gandhi has an exceptional place. In fact, he is the father of the so-called digital India. His confidence and involvement of the people of village level resulted in Panchayat Raj Act, ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் rural people நவீன டிஜிட்டல் இந்தியாவின் தந்தை என்று கருதப்படுகிறார். in pursuit of public services unparalleled in Indian history, sir. With this, I thank you for having me. Thank you. இந்த கருத்துக்களோடு என்னுடைய உரையை முடிக்கிறேன். Sir, I rise to speak on the discussion on parliamentary journey of 75 years, starting from Samvidhan Sabha, which has not yet been discussed in details at all in the House. Achievements, experience, memories and learnings. Sir, this is the last day of the current Parliament House. And this is possibly the last agenda we are going to discuss. So on the day of the nostalgia, we feel a flood of memories. The past and pledge to preserve our best democratic traditions for the future. Sir, the journey began just after independence with the covering of the Samvidhan Sabha, or Constituent Assembly. The list of members who registered and presented their credentials on the discussion held on December 9, 1946 from Bengal had been a vertebral roll of honor. Many speakers took part. I will just remember their role. It read as follows. 1. Dr. B.R. Ambedkar from Bengal. Mr. Sarat Chandra Bose. Mr. Kiran Shankar Roy. Mr. Frank Reginald Anthony. Mr. Satyaranjan Bakshi. Dr. Prafulla Chandra Ghosh. The list included another 25 members from Bengal who took part on this debate for the final publication of the Indian Constitution. Sir, the proceedings of the Constituent Assembly would have been very dull, Dr. Ambedkar said in his final speech in the Samvidhan Sabha, if all members had yielded to their party lines or party discipline in all its rigidity, then it could be a gathering of yes men only. But few persons raised their voice of their own, going out of the placed resolution, which there were rebels
rising to the lent qualified support to Dr. Ambedkar motion to pass the constitution, one of these rebels was Hari Vishnu Kamath, suggested that we the people of India. And that was inducted in the constitution with the proposal of Hari Vishnu Kamath, we the people of India, had come to the end of a long journey, which was, however, the beginning of a longer, a more arduous and a more hazardous one. True to the Indian genius, he noted, our struggle, our awakening began with a spiritual renaissance, which was pioneered by Ramakrishna Paramahansadev, Swami Vivekananda and Swami Dayananda. In the wake of those spiritual leaders came the political renaissance and the cultural renaissance, of which the torchbearers, the leaders, the guides were Lokmanya Tilak, Aurobindo and Mahatma Gandhi, and last but not the least, Netaji Subhash Chandra Bose. Today, we once again pay our tribute to those great leaders of our freedom struggle. Start the journey of a next 75 years. The covering of a 17th Lok Sabha in this historic house. Before moving from an old building to a new one, we need to understand the true meaning of the name of our country, India, that is Bharat. We are happy and comfortable with both the names. That we want to reiterate here also. Sir, while speaking inspiration from achievements and memories of the past, that is the main learning we must take for the future. We who currently in the opposition rededicate ourselves to defending democracy against authoritarianism and commit ourselves to building our new India on the strong foundations of secularism and federalism. One of our colleagues, Sugata Basu, now he is the head of the Harvard University, was MP in the 16th Lok Sabha, delivered a beautiful speech on this subject, which I remember very much. Sir, India has a parliamentary system of government. We are watching it since last 75 years. The Union of Parliament is the supreme legislative body of India. Our parliamentary democratic system stands upon the principles of communal harmony, secularism, and unity of the country. Ethos of our constitution vibrated as, after the constitution was passed, unity in diversity. This spirit is to be kept maintained. India is a country which almost believes on principles of Nana Bhasha, Nana Mat, Nana Poridhan, Bibidher Majhe Dekho, Milan Mohan. This is unity in diversity. This spirit was reflected from the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, and that should be reflected so long we remain in the country. We speak Ek Jati, Ek Pran Ekota, Ei Desh Hamader Vidhata. This country is godly to us, and this is one country, one feeling should percolate to the hearts of the every Indian. We believe the principles of unity amongst Hindu, Bauddha, Sikh, Jaina, Parsi, Muslim, Christian. Somewhere we are finding this idea is not being implemented in all parts of the country. Indian Parliament, sir, is famous for its ornamental speeches, records of debate and discussions since last its inception. Spirit of brotherhood and feeling of respect always used to maintain between one party MPs to the other parties, from which we are now lacking. This system is vanished
Prime Minister was expressing no claps from the opposition. I was hearing. But the system has been collapsed and this is not a good sign which we are going to face. Sir, Indian Parliament at different occasions and different era have proven that how much powerful can Indian Parliament become at the time of crisis of nation. Whole Parliament stands by India or Bharat. Earlier Prime Ministers, sir, of all times responded to the questions raised by the members. But somehow we are not finding this since last 10 years. Why it is happening? I am here, sir, last 12 Lok Sabha. I have interacted with so many Prime Ministers in question hours. But this time I am not finding it. I hope this will be reflected at the new House. Continuous process of discussion in connection with international and very important national issues were part of regular parliamentary practices. Nowadays, it is totally invisible, sir. Indian Parliament have shown their unity amongst themselves when China or Pakistan invaded India. Atal Bihari Vajpayee praised Indira Gandhi by pronouncing her as Ma Durga. At the time of war in Bangladesh, we still remember it. There are exemplary precedents like this in the history of Indian Parliament. Opposition praising treasury benches opposition, these were reflected in the House on many occasions, on several times, but which is now being totally invisible. Keeping faith upon international solidarity and brotherhood, our Parliament has expressed solidarity with many other countries who have fought for their independence. Sir, I was first elected in 12th Lok Sabha as Trinamool Congress candidate. That time, our party leader, Mamata Banerjee, it was the first time a new political party entered into the Parliament. And that time, she raised her voice in Parliament for 1/3 reservation of in Lok Sabha and Assembly. The incident we still remember. She caught one MP by neck when she was going to clear the bill which was going to be placed on the floor of the House. Now Sonia ji has also written a letter to Honorable Prime Minister to take it up. Sir, our demand would be that in the next current new Lok Sabha building, Parliament building, let this women reservation bill be tabled and let it be passed without further delay. Let it be initiated with a positive direction by which this Parliament can initiate its journey with a very positive outlook. Sir, fall of government by one vote, we have witnessed it sitting on the floor of the House. And we have seen the power of the Parliament. How peacefully the voting pattern went on. And just next to me, Chandrasekhar ji was sitting. He asked me, Sudeep, what is the result of the vote? I said, Vajpayee ji has been defeated by margin of one vote only. He said it to me, oh, if I had the idea, I could have voted for Vajpayee ji, by which the vote pattern could have been different. So these are the memories which haunt me always. Sir, let the present House run with a positive direction. Common principle of parliamentary democracy is that House belongs to the opposition. I tell it at the all-party meetings whenever Honorable Speaker convenes, that in a parliamentary democratic system, House should belong to the opposition. But nowadays, bills are being passed without debate or discussions. It is not a good system. Both sides are to be more objective in their approach, in their outlook. And when a House can run properly, if the ruling party takes a positive decision, then only it becomes possible. Otherwise, it is not possible for the
opposition to run the house in a proper manner. The GST declaration being celebrated by convening midnight parliament session. It was held to make it historical, but many important and extraordinary situations prevailing in the country are not being allowed to raise and discuss in the House. Sir, brute majority in Parliament by one political party at this present Parliament reflects its arrogance is not desirable. What my long experiences say that if brute majority persists, they are in a mood to gag the voice of the opposition. It is neither desirable nor it is supported by all the members. So we will approach to the ruling party to make themselves restrained in the coming sessions. Long since it is proven, Parliament session must reflect with more positivity and become as result-oriented. But in few last sessions or in few last years, this Parliament session is not becoming result-oriented. That is a part of sorrow. The attitude of the ruling party of Parliament can make it viable and functioning. They will come, sir, if this way runs. The people will start losing their faith in the parliamentary system of process. That what this Parliament is going to give to us. And once people start losing their faith upon this parliamentary system, it is a very dangerous system. So, sir, we must try to remain more committed and faithful at the 75th year of Indian independence to see that parliamentary democratic system remains alive with its massive strength. Sir, we hope we are entering into a new parliament. Let all these systems be approached, be focused, be presented, be ventilated in a positive manner. Whole country should feel the change from one building to other building will also carry some feelings, good sense of ideas prevail, and we each one become to the respectful to each other sections in a broader mind. So lastly, I must say the slogan that whatever manner country proceeds, we must say long live secularism and federalism. The federalism structure of the country is under big threat, where West Bengal is one of the major victims. I should take it up. We are trying our best to draw the attention of the government, and as a leader of a Trinamool parliamentary party in Lok Sabha, I should keep it on record as mentioned. Sir, I repeat, no attempt is to be taken to create division in between India and Bharat. We firmly stand by both. Jai Hind, sir. Jai India, Jai Bharat. Shri M. Srinivas Reddy ji, please. Sir, thank you very much, sir. Speaker, Please, sir. please. Madam ji, just 1 minute, ma'am. I wanted to tell about, my 12th Lok Sabha under your leadership. I was a Congress member also. 2 minutes, ma'am. Then I will talk. Sir, thank you very much, Chairperson, sir. She will listen you, definitely. Yeah. Because she was my leader. Yeah, please, please. Sir, I compliment our Honorable Prime Minister for, conducting G20 summit successfully, and internationally the country's name also in the worldwide totally. India is known everywhere also now, sir. So really, he has put a lot of, effort and hard work for this. My complimentaries again to him, sir. And one more thing, sir, my Chief Minister of Andhra Pradesh, via Jagannath Reddy, wishes to all the honorable members of this Parliament on the occasion of, 75 years, Samvidhan Sabha, sir. He was also 2 terms,
a member also of this house. So my experiences, I wanted to share. As my colleague, with the Sudeep ji, has mentioned about it. My 12th Lok Sabha I entered also, madam. That time, Madam Sonia ji was the president of the Congress party, and on Congress party ticket, I won, and I come to the parliament also, that is in 12th Lok Sabha, sir. So the experience, as earlier, my colleague have mentioned, that time, after 13 months, Vajpayee's government, when ADMK withdrew the support for the Vajpayee's government, then strength has come down, sir. It has become a minority government. So that time, because confidence motion has been moved by Vajpayee also. So the voting pattern and everything was on slips generally. Everybody was in tense generally. How we know the result will be there? Because of the floor management. Everything, we all also thought that, okay, Vajpayee also will come out and everything. But lastly, when the result has come with one vote, he was defeated. The government was defeated. That too, the then Chief Minister Giridhar Gomango ji was also a member of parliament in this house. Yes, Sudhir? Yes. So he came and voted. Then otherwise it would have become equal and decided by the speaker also. That time the speaker was Honorable GMC Balayogi. So how the parliament also depends on nature only, finally. God has to decide how it has happened. When we see all these experiences, we cannot forget in our lifetime, sir. So I have seen a lot of speakers also in this, because when I entered about 25 years back, before that itself, my family, my late brother and sister-in-law were also members of parliament. I used to come to the Central Hall regularly, enjoy the Central Hall, sitting there yourself. Sorry. Sorry, ma'am. Sorry. The luxury of the Central Hall, sir. When you sit in the Central Hall and look at the dome, you will feel so comfortable also. Because that only now we are going to miss in the new parliament. And these experiences cannot be, generally, only memories will be there always for us also, sir. And regarding, again, in 14th Lok Sabha, sir, main, important, agreements, Indo-US agreement. This has happened on 23rd August 2006. So the bill that time, to be passed, this agreement, was also a potentiable thing. Later, 14th Lok Sabha itself, 22nd July 2008, conference motion of Dr. Manmohan Singh ji. That also was a tensionable thing. It was also, floor management could able to do everything. So that was also in a tensionable, all this, strength of strength and everything used to happen in the midnight only, sir, generally. So the result of the thing was so joyful at the time. Then if you look at it also, sir, 15th Lok Sabha, that is, was thing for our Andhra Pradesh itself. The division of both the states. Andhra Pradesh has been divided into two states, that is Andhra Pradesh and Telangana. 18th February 2014, the bifurcation, the bill, AP reorganization bill has been passed. But problems are so far, after 9.5 years also, whatever the promises made on the floor of the house, both the houses have not been fulfilled, sir. The special category status, which has been, for 10 years awarded by both of the houses, so far, now we are not getting even, any inch of it also, it has been no move, sir. In spite of, our Honorable Chief Minister, Jagan Mohan Reddy Garu, used to come and visit also and meet Prime Minister and our respect to other related ministers also, sir. So I request you, sir, the special category status is a must for Andhra Pradesh for the development of the state, sir. In spite of, my Chief Minister, Jagan Mohan Reddy Garu is working hard. If it is there, to add to that also, he can do, a lot of wonders there in this, sir. Sir, now if you see that, 17th Lok Sabha, we are here. So 17th Lok Sabha also, this Lok Sabha, I have seen also, sir, Article 370 passing also, great thing, and introduction of GST, other things also, sir. So all my experiences,
I want to put it to you here, sir, because it is only to tell always to my colleagues that this house got only 543 members only. So, becoming a member of parliament is God's nature's gift only. One should be lucky to become a member of parliament in this house, because 140 crore people are there, sir, now. Only 543 people are recognized in this. So this is the temple of democracy. From Sarpanch also should think of whatever is passed, Panchayat Sarpanch, in the parliament, will go into that also, they have to implement that. So when the temple of democracy, when it is there, so here we have to make some suggestions also, sir. It is very much required also, sir. And to tell you frankly, sir, my dear colleague also mentioned some of the things. Number of days, working days has to be increased here. That is the main thing. And other thing is private members' bill, sir, should be implemented properly also. And the third one, sir, 30% of the agenda should be suggested by the opposition parties. Then only the house can function properly. And apart from that, sir, respect for MPs are a little bit coming down, what I could able to see, sir, now. So that earlier when I entered in, that is 1998, 25 years back, the ministers used to give appointments, right away, without much time or anything, and the secretaries used to give appointments also right away. And now, that is lacking. And not only that, sir, what is required is because our country's thing is, only 10%. That means strength of the ministers have been decided by long ago. That is 10% of the Rajya Sabha and the Lok Sabha members only can be made as the council of the ministers. See, this time, this thing has been decided when the... This kind of rights we have to fight, and this history we are going fighting, madam. Madam, and also, apart from that, now we are facing so many problems, but the parliament also were raised regarding, for example, take a pandemic situation. At that time, we all united together how to solve this problem. Our Prime Minister, Narendra Modi ji, successfully has done so many wonderful things. And also state government, Edapadi Pallisamy, during this period, implemented a lot of schemes to save the people of India. Because central government also gave a lot of assistance to the state government this work with us. With the help of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Order Edapadi Pallisamy, done excellent work at that time as a democratic way, because the history shows how the parliament is functioning and how we are playing the game for the welfare of the people. Therefore, even though the building is, we are seeing that sometimes they say it is built by British people. It's not. It's our Indian property we are having here. Even though we were moving from this building to another building, the site is also on the same area where the British people established our building. It's not somewhere not removed from this place to any other place. Therefore, convenience sake only we are moving to that place. I am appreciating our Modi ji. நம்முடைய சௌரியத்திற்காக நாம் இந்த பழைய கட்டடத்திலிருந்து புதிய கட்டடத்திற்கு நகர்கிறோம். இந்த புதிய கட்டடத்திற்கு நாம் நகர்வதற்காக புதிய கட்டடத்தை கட்டித்தந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களை நான் பாராட்டுகிறேன். 75 ஆண்டுகளாக நாம் இந்த பயணம் இங்கே நடத்தியிருக்கிறோம். பல விஷயங்களை பற்றி விவாதித்திருக்கிறோம். கூட்டாண்மை காப்பாற்றப்பட வேண்டும். மாநிலங்களுக்கு அதிகாரங்கள் அதிக அளவில் வழங்கப்பட வேண்டும். Especially the official language of the country, that is the spirit we have to see for whatever we got for freedom. தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், மராட்டி போன்ற 16 அபிஷேக மொழிகளையும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகளையும் அலுவலக அரசு மொழியாக மாற்ற வேண்டும். Languages of the schedule must be said, languages of the national, that is one of the things. That is the spirit of the democracy and also federalism. That is the parliament which we have to make the thing. Once again, I thank my leader, MGR, Prajitari MGR, send me the parliament
and has made him a deputy speaker at that time. Rajiv Gandhi was at that time Prime Minister. Afterwards, Amma made me the central minister in Vajpayee government. என்னுடைய தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் என்னை இங்கே பாராளுமன்றத்துக்கு அனுப்பினார். நான் துணை சபாநாயகராக இருந்தேன். அதற்கு பிறகு அம்மா அவர்கள் என்னை பார்லிமெண்ட்டுக்கு அனுப்பினார். நான் இங்கே அமைச்சராக இருந்தேன். ஸோ பாராளுமன்ற ஜனநாயகம் என்பது உணர்வுபூர்வமாக கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும். மத்திய அரசும் பல திட்டங்களை செயல்படுத்த விரும்புகிறது. ஆப்போசிஷன் எதிர்க்கட்சிகள் தங்களுடைய கருத்தை சொல்ல விரும்புகின்றன. இரண்டும் ஒரு புள்ளியில் இணைய வேண்டும். இதை போன்ற ஒரு ஜனநாயகம் தொடர வேண்டும். Because we are speaking, it is Rajya Sabha. It's not an elder's house. It's not. I am not elder man. He may be elder man. It's not elder man. There are young people also there. It's not the elderly house. It's the Rajya Sabha. State representatives are here. Therefore, இங்கே மாநிலங்களுடைய உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள். எனவே இந்த கூட்டாட்சியினுடைய தன்மையை, ஃபெடரலிசம் என்கின்ற இந்த கூட்டாட்சி தன்மையை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். நான் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கும் ஜெயலலிதா அவர்களுக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். How much time you want to give me, madam? 12 minutes. 5 minutes? 12 minutes. 12. Thank you very much, ma'am. Whatever it is, you have the time. Ma'am, get up to speak on this 75 years. Everybody knows we have really done, we have achieved great strides of progress during this period. There's no doubt about it. I don't want to politicalize the entire thing. But let me tell you, our journey has been a tragic journey. It has a beginning. We thought of independence for a nation, but we got two nations. It would have been all right if they were two nations, but unfortunately it became two people. It would have been all right if it were two people, it had become two races. The entire world has started fighting against each other. This is one thing we could not withstand, nor could win over during the last 75 years. This really hurts me. Today, the hangover continues. Today, the people are getting identified more by their religion and caste and region than themselves. This is something the 75 years of independence could not get it. Although economically we have done very, very good, better than many of the states, we are fast-growing nation. But this kind of divide that we still have, which the British took advantage at one time to differentiate those two people, the Hindus and Muslims, that was the divide they depended on, is still continuing. Its shadows are still lingering. This is something which really hurts us today when we are standing to gain out of it. Madam, to really speak, it is not 47, it is 1930 where the Congress party declared itself as an independent and they passed the resolution, and there were all over the country the celebrations of independence at that time. Anyhow, whatever it is. But we did not have at that time, when we had partition, and when Nehru went to give his stirring speech of Tryst with Destiny, where he had said, we had promises to keep, not if totally, at least substantially. And we have really done substantially well during the past 25 years. I'm not talking about these 10 years. Even these 10 years you also might have done good. This morning we were hearing a statement made by the chairman, a resolution, I don't know in what kind it came, but it did come. It spoke very well. The wording was good. I only hope that we followed it in our country to give rise to the people's voice as you want to do it internationally, when you want all the 125 countries to do it. This should have been really good for them. That is the feeling one carries along. Madam,
when we think of Nehru's speech, there is some guffe in that. Nehru, after the speech, went to give his list of ministers to Governor General. You know, he went and gave an envelope, an empty envelope. There were no paper at all inside. There were no names of the ministers. It was only 15 minutes before the real swearing in that they found the paper and found. Why I'm mentioning this is, please look at the kind of polity we had at that time. It might be Gandhiji who said, we got independence for the nation, not to the Congress. We had in that cabinet, we had people who were adversarially opposed to Congress. Absolutely, who had aversion, who did not participate in the freedom struggle at all, 3 of them. But yet, Nehru did not have any scruples, any reservations in including them. I'm taking Ambedkar or Shyam Prasad Mukherjee, who were against Congress and who were against the movement. They were supporting the rulers at that particular time. I'm not trying to please diminish or dilute the importance, but I'm telling you the kind of mind we had, the broad mind that time government had. It wanted to take all people, it wanted to be inclusive. That, as I said, is being lost today. In the name of, you call Hindutva, whatever it is, today majoritarianism has come as a mass mobilization movement, which is wrong. We have never thought of majoritarianism of Hindus. We knew it had 82% of people, but today it has become a mass movement. That also is something which we must still fight for. So, as I said, it was Sen who said, Amrita Sen who said, Hindutva movement that seeks to convert the religion of the majority in an identity of mass mobilization. He said secularism, as it is practiced in India, to some degree, the working of Indian democracy, which remains the best guarantee of Indian pluralism, have served to create the postulates of India's various particularisms. India was a particular. If we look to each decade, it had its own map. We had the second thing that we had to do after getting the independence was not only get this kind of inclusive cabinet to govern, but we had also wanted to get all people on the board. This is what exactly Congress did at that particular time, because there's no other party, so let me not talk about it. But at the same time, we had what is called the other challenges that we had to see. The challenge of language, challenge of caste, where the challenge of religion, the challenge of the states, which has turned out to be the issue of federalism, the class, rich and poor. This was very important. These are things which had to do. Then gender. Sir, I will go and first try to tell you the class approach or the class situation that we inherited at that time. Some being rich and some poor. What did we do in these 75 years? We did not bridge it at all. We had allowed it to continue. So much so, today, in a given developing situation, it shows you more cracks than the bridging elements. This has to be understood. I'm only trying to point out it because I don't want to take much time, because we can talk much about rich and poor divide and how the 1% of people are holding the 40% of the nation's wealth. All this can be discussed, but I'm only trying to mention, because all of you in this house who have discussed these issues earlier know it better, that what exactly is the situation as far as the class is concerned. We always talk about the caste. Caste is there. The Varna system that we have inherited is something which is a debase, which is an insult to our nation. Yesterday I was trying to raise in the leaders' opposition meeting something about Sanatana Dharma. Because I'm a student of Hindu philosophy. Let people sitting that side know that you are not the monopolist of the Hindu philosophy. Because Hinduism is some word which came only in the 6th century.
All right, let us forget. When we talk about Sanatana, I'm talking to because the Constitution speaks about it. The Constitution, its preamble, ensures, although it did not use the word secular, it said, when it said about equality of religions, it talked about secularism. But I should congratulate again later this government, this nation, for bringing the 42nd Amendment, wherein they made it specific, a secular, a socialist secular nation. These were the two things which were missing, although they were practicing. This nation was essentially a socialist nation. We must understand at least 64% of people were really poor. 36 below the party line. At the word socialist meant the equidistribution of the nation's wealth. This exactly we realized, and we brought in an amendment to the Constitution itself in its preamble. This is another great achievement that we have done. Having brought that, did we do anything? Did we walk the talk? We did not. The system did not allow. Today, unfortunately, when we are trying to talk about 75 years of journey, I tell you for the last 10 or 12 years or even 15 years, let me say 91, when we thought of liberalism, even we had given, if not total goodbye, we have started diluting the importance of looking to poor and looking to the development from the socialistic angle. We had a socialistic view from the awardee session when Congress moved the social pattern of society. Even Communist Party had to close down their shutters because you do everything that the nation wanted ideologically came from them. And all of us who were in the schools in those days, I'm a witness to this 75 years journey, sir. Because I'm today 84, but I have seen this 75 years journey. At the time when the awarding session came, as a socialistic pattern of society, it was not, we did not talk about socialism as such, because there was a crisis at that particular time. This is a part of 75 years journey. We must understand, great debate went on. Whether we should go totally on the Russian model or should have a socialism of our own, because Raman Royaji and other socialists in this country thought that socialism can be caught for the Indian ethos. Be confused by this kind of, if not dichotomy, a discourse, schism, Panditji thought we'll say same thing, but as a pattern of society. But he committed the society to develop on the basis of socialistic ethos. When he said this has come. So the third thing that we have achieved, great thing, was during the BP Singh's time. When BP Singh came, the Mandal issue was there earlier. The reservation to BCs was there in the Congress session. I was a minister during the Congress regime. We knew that we brought in 15% to 25% in states, but yet accepting it at the national level as these people whom you under Varna system considered as something lower, I would not like to say, because I resist the very word Varna. So VP Singh is the one person who has brought this. This is something goes to the credit and goes as a feather in the cap of the Indian achievements. Sir, when we come to one unfortunate part, is time over? Yeah, 12 minutes. Sir, we come to the part of religion. Today, as I said earlier, today we are trying to be identified more by our religion rather than by our nation. Mussolini, the great Italian writer, said, Italy we got, but Italians we not yet got it. Not that Nehru is the person who has made all of this. We were Indians. They were cynics at the time when we got our independence, like Secchi, like Churchill, like Kipling, many, Dubé, who are not, name them, you get them. All of them thought that India will not be able to sustain democracy at all. It will go back to the age of barbarism, age of privation of the middle classes, and this kind of thing.
but India not only sustained, not only democracy lived, but lived so well that other nations are looking to us for democracy. It is because we had a democratic tradition from the millennia. In Maurya style, we had done run up as republics, something like 260 republics in the Mauryan Empire. What we talk today as caste was a jati at that time. We had something like 3,000 jatis at that time. But there was no kind of clash as we find today. This is how we have not been able to manage. This is a recent phenomenon. Let me also tell you. We had real communal tension, we had a communal violence, but at present it has become some kind of pride. As I said, majoritism has become an issue for mass movement, mass mobilization. So once it comes, please conclude. It really troubles you most. Sir, when I come to Hinduism, I'm not trying to take on the fundamental Hinduism, because there's nothing like fundamentalism at all in Hinduism. Take it from me. Hinduism is a way of life. Anything that transcends time and space is called truth. What you say today, if after 100 years people believe the same thing, and anywhere else in the world is the same thing, it remains a truth. That is, Gandhi reduced very aspect of God as a concept and said truth is God. This is what Hinduism is all about. It is only because, not because I should believe in Rama or I should believe in Krishna. Just now, the ADMK man was telling me, in Madras we had a movement which totally opposed it. Today we have people who don't believe. If Hinduism is all that big, there wouldn't have been a need for Judaism. If Judaism is all that big, there wouldn't have been a need for Christianity. If Christianity is all that big, there wouldn't have been a need for the Islam. If Islam is all that big, there wouldn't have been a need for the Sikhism. So all this come time and space, take it. They included truth. That is what exactly Hinduism has done. I consider this as one of the greatest thought processes. Hinduism is one of the great thought processes which takes everybody to it. I am a Charvaka in me. If I believe in God, I am a Hindu, sir. Your time is If over. I don't believe in God, I am Charvaka, sir. I am a Hindu, sir. If I believe in somebody who religion is good, I am a Buddha, I am a Hindu, sir. If I am Jaina, all of you are the Buddha, sir. Karnataka, yesterday I was studying the leaders of opposition, they have got their funds. They don't believe in God, they believe in Shiva, they believe in... So what is Hinduism? It is self-realization. So let us all believe that. Let not the Prime Minister of the day say that all Sanatanis should join unite, as if it is a war crime. I think, at this age, this is not something which is good to come from a people, because we accept all religions. Yesterday, Mr. Chidambaram was saying something, Mr. Chidambaram was saying, he was quoting Madhavacharya, 16th century saint, Indian saint. When he said, Sarva Dharma Samahava, so same thing, it is quoting Madhava or other saints. But all the believers in Hinduism believe that all are there. That is why we say, Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti. People may call it by different names, but truth is only one. We believe in it. Unlike others, I'm not trying to criticize other religions at this time. They believe that mine is there. There is no Mr. Christ or no Mr. Muhammad or no Mr. Zoroaster or no Mr. Confucius. We had a Hindu thought process as such. So this, I don't know, we are losing track. We must get on to that. We must build a nation, Indian nation as such. We are first Indians, last Indians. We are Indians. There is no question of first or last. Saying, like Sanatana is saying, there is no beginning and there is no end. If there is no beginning, where is the question of it being there? So let us not think, it is there, it is truth. It is all pervading. So I tell you, sir, the 75 years journey has been really rewarding, has been very good. I also congratulate, we had beginning, I told you, Taji, the G20 was a welcome thing. But as I suggested earlier, let us
learn to live with what we always boast of. We have today morning gave that big statement. I think you give scope for expression from all sides. Then what I call freedom of expression, that should be respected. The people's urges should be respected. You should not use your own agency because you are powerful. If that were to be the case, earlier regimes would have done that. Nobody has done it. They have respected nation. We have allowed the nation to grow. As Gandhiji said, independence is not for Congress, independence for the nation. Let us all think this nation, development is for the entire nation, not for one party or one thing. Thank you very much. Sir. Thank you. Now, Mr. G.K. Vasan, 3-4 minutes. Sir, thank you, sir, for giving me an opportunity. We all understand, sir, historic Parliament building. Today is the last day of our speech in this building. Maybe tomorrow we are all moving to the new Parliament, sir. This is the time to salute and respect our leaders who fought for our independence and got independence for us. This is the 75th year of our independence, sir. We remember the father of nation, Mahatma Gandhi, and all our leaders from various parts of India who were with Gandhiji and who fought for this country's freedom and who taught us ahimsa in this country, sir. Sir, we also have to be very proud that we are the largest democracy in this country, sir. We have genuinely, sir, preserved the sovereignty, integrity, security, solidarity of this country with pride, sir. We have made remarkable progress in the 75 years in the field of education, agriculture, healthcare, industrial growth, economic equality, and even in scientific space research, sir. Above all, as Indians, we are all proud today that our nation is looked upon by foreign countries for our helping hand and support even in international problems today, sir. This is the Parliament where legends have spoken, sir, in various subjects for the interest of this great nation, sir. We should be very thankful to our regional leaders, sir, who have been in this Parliament, spoken for the interest of the country. From Tamil Nadu, sir, I would like to proudly quote Rajaji and Kamarajji, sir, who have been the pioneers, and even today, sir, they are leaders who are the icons for youth in this country, sir, especially Tamil Nadu, sir. The national approach and outlook of leaders from the south, sir, has been great in the development of this country, sir. I must also place on record, sir, that India has achieved great heights during this 9 years under the Prime Minister of Modi ji, sir. To conclude, sir, I would say that schemes, plans and programs launched by the government has embraced every citizen and have enhanced and improved the living conditions of every Indian, sir. With this, sir, I conclude my speech. Thank you very much, Chairman, sir, for giving me opportunity. Thank you. Ramnath Thakur ji. धन्यवाद श्रीमान the chair when our chances will come. No, it's just that's a question. I was told that he will speak after half an hour. No. Who said? I did not say. I also said like that educator. No. No, it is good that we should make new traditions, but then we have to follow the traditions also, how the house runs. Please let him speak. So, welcome. Ramnath Thakur ji. But I have a right to ask a question. Shriman,
कलिता जी, श्रीमान, no, I appreciate your support, Shriman, but then in the process, our terms are not coming. this is no discrimination. Shriman, Yeah. He will also get you a chance. श्रीमान, Yeah, please. मैं आपको He will also get धन्यवाद you a देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण सदन 75 वर्ष के He will get you a chance. No worry. 75 वर्ष में जो इस सदन का गरिमा रही है, जितने जितने महान पुरुष इस सदन के सदस्य रहे हैं, पीलू मोदी, राधा कृष्णन, अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर, चंद्रशेखर, राजनारायण, उन महत्वपूर्ण सदस्यों ने जनता की आवाज को जो उठाने का काम किया है, उसी संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवादियों का जो ध्येय था, समाजवादियों की जो मांग थी, उस मांग को यहाँ प्रस्तुत किया गया था। काका कालेलकर का जो रिपोर्ट था, जो नहीं उस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था, 1978 में इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया और बिहार में पहला राज्य था जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण लागू करने का काम किया। 1990 में मंडल आयोग के इसी सदन में जो दबाव पड़ा था, इसी सदन की बात है, जो दबाव पड़ा था, उस दबाव के चलते मंडल आयोग लागू हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार का मॉडल जो था वो जातीय गणना का पूरे देश में होना चाहिए था। बिहार ने इसको लागू करने का काम किया। महिला को गैर बराबरी 2005 से जो नगर निकाय में, पंचायत में जो आरक्षण दिया गया था, उस आरक्षण को बिहार ने लागू करने का काम किया। श्रीमान, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि नए भवन में जो हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्यों नहीं सरकार महिला को 33% आरक्षण दे करके इसमें लागू करे। मैं तो समझ रहा था कि जो विशेष सत्र बुलाया गया है सरकार के द्वारा, उस सरकार में ये मणिपुर पर चर्चा होगी, मणिपुर के समस्याओं को सरकार दूर भगाने का अनाउंसमेंट करेगी, लेकिन अभी तक मणिपुर के बारे में कोई काम नहीं हो सका। मैं 2-3 बातें कह करके अपने सुझाव को रख करके आपके सामने रखना चाहता हूं। ये 75 वर्ष में 9 वर्षों में जो सरकार काम किया है, हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जेलों में जो बंद कैदी है, जिन पर कोई आरोप नहीं है, गरीब हैं, दुखी हैं, वंचित हैं, पैसे नहीं है उनके पास कि अपने को वो बेल करा सकें और केस लड़ सकें, तो हम आज 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जो आपने जो ये सत्र बुलाने का काम किया है, तो जेल में बंद हुए कैदियों को छोड़ने का काम करें, यह आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं। दूसरी बात, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इसी तरह विशेष सत्र बुला करके या विशेष दिन रख करके महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए और उसका निदान करना चाहिए। उसी तरह आपको चाहिए था, जो बेरोजगार है, बेरोजगारी जो बढ़ी है, बेरोजगारों के लिए नौकरी के लिए आपको अनाउंसमेंट करना चाहिए, आपकी सरकार की उपलब्धि बढ़ती। इसीलिए हम आपके माध्यम से एक निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि सब लोग देख रहे हैं जहां वो हैं, सब लोग देख रहे हैं जहां वो हैं, हम देख रहे हैं, देखने वालों की नजर देख रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ
हम आपसे आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जिन जिन मुद्दों को हमने उठाने का काम किया सरकार ध्यान दे और उस पर अमल करने का काम करें। धन्यवाद। Dr. John Britas, 6 minutes. Thank you, sir. Sir, when we are having a discussion with regard to the Amritagal, I would say that I have a three-dimensional view of the Indian Parliament. I used to watch the Parliament from outside, from above, and now I am being part of this Parliament, sitting below, sir. Sir, when we speak about Parliament, the basic aspect which we need to keep in mind, that is parliamentary democracy, sir. That is very important. Sir, what is the tenet of parliamentary democracy? The fundamental cardinal principle of parliamentary democracy, as Karge Saab said, accountability of executive to the legislature. Narendraj Saab, aap senior advocate. Sahi hai na? Have you ever seen an accountability of the executive to the legislature? Have you ever seen? Now, the opposition leader was speaking about the presence of the Prime Minister. I was trying to dissect that. You know what is the presence of the Prime Minister in Parliament? 0.001%. 0.001%. So that is the period in which he attended the Parliament sessions. Sir, the leader of the House was very vocal, but he missed many crucial names, sir, including Jawaharlal Nehru. Yes. Intention. And I know that when Dharmendra Saab is speaking, he would deliberately fill those void and would bring in Jawaharlal Nehru, Ambedkar Saab. Sir, I am telling you, sir, the names which have been missed by Piyush Goyal ji, you will have to spell out when you are speaking. Dharmendra Saab. I agree with you. Sir, the exercise would be meaningful if you discuss about the dreams and goals of our architects of Constitution. Sir, I will just dwell on the preamble of it. So it speaks about, say, what does it say? Liberty, equality and fraternity. Sir, if you take justice, you will notice that we have reached the bulldozer era. That is justice now. The justice that is being imparted is the bulldozer era. Sir, if it is economic justice, sir, we don't want to speak about the Oxfam report because that's not a good company for good organization for the present dispensation. It's blacklisted. You see the inequality that is spiraling up, sir. Sir, the liberty that has been assured, where has it reached, sir? Now it is more manifested in the form of sedition and UAP. That is a liberty which has reached. Sir, another cardinal principle is equality of status and opportunities. This government is honest to say that they don't believe it, sir. Ambedkar, who they try to appropriate now, was absolutely clear when he said that democracy is not the law of majority, but the protection of minority. Rajiv Chandrasekhar Saab, protection of minorities. It's not said by John Britas, by Ambedkar Saab. Sir, what is the representation of 20 crore Muslims in executive, in legislature, judiciary, even in media? P.T. Ushaji, you know that, the representation of Muslims, Christians, minorities in Kerala. What is the situation in Delhi, in Parliament, in executive, sir? Sir, we all talk about this government's pet topic is to, discuss about Mughals. I think they talk about Mughals more than the Indians now, actually. Sir, in Akbar's court, or even in Aurangzeb court, more than 50% of the ministers were Hindus. Dheeraj Saab, Birbal, aapko jante hain na kaun Birbal tha? He was a Hindu, sir. Can you spot somebody in this executive now? What is the status of the representation of minorities, sir?
Sir, Nehru's cabinet, that was the first ministry. It was a model government. It had given representation to every segment. Dharmendra Prasad Saab, two Muslim cabinet ministers. You know Maulana Asad, Rafi Ahmad, John Matai, that was a Parsi, Sikh, everyone. Of course, Shama Prasad Mukherjee. And even not having ideological, I would say, togetherness. I know Derek Saab, representation from Bengali, of course. Sir, it was Maulana Asad who stood on the steps of the Juma Masjid and said, this country is ours. We have built up this country. There is no need of going away from this country. You want to obliterate the last set of memory about Maulana Asad, you scrap the scholarship. Dharmendra Prasadji, you scrap the scholarship. Not you, I think Smriti Irani ji, I think. Even that, not he didn't scrap. Sir, come into fraternity. Sir, what is the new usage of fraternity? Madam, you know what is the new usage of fraternity? Go to Pakistan. Go to Pakistan. If somebody speaks, they will say, you go to Pakistan. Sir, we are part of this country. We are as patriotic as you are, sir. Sir, maybe more. So now G20, there have been a lot of discussions, fanfare about G20. We appreciate if India get a standing amongst the other nations. But if you look at the indices, Rajiv Saab, what is indice? Per capita GDP, Human Development Index, Hunger Index, hum last hai. Bilkul last hai. And is that the reason why you brought in African Union to the G20? So that we did not be last? Anyway, I appreciate that. Sir, coming to the preamble again, sir. Sovereign, socialist, secular, democratic republic, sir. Sir, what is sovereignty now? Hugging Western leaders from Trump to Biden doesn't mean sovereignty. You finished up now because Nehru's name is there. We don't want non-alignment movement to be there. Just because Jawaharlal Nehru was instrumental in setting up non-alignment movement. Now, sir, the second word, socialism. What is socialism, sir? Socialism has become Adanism. That is a new word, Adanism. P.T. Usha, madam. Socialism badal gaya, Adanism ho gaya. Chupchap baith rahe aap. You should be standing up and talking about that. Now, sir, secularism. Another thing, sir. See, secularism. You know, a gentleman sitting in Prime Minister's office had the audacity to say, Dharmendra Prasad Saab, Dharmendra ji, suniye sir, Vivek Debroi, this constitution has become useless. Only 17 years it can stand. And he said he doesn't understand the meaning of socialism and secularism. A gentleman heading the Economic Advisory Council of the Prime Minister had the audacity to come and say that he doesn't understand the meaning of secularism and socialism. I would have expected a cabinet minister, the stature of Dharmendra Pradhanji, to say, shut your mouth. Did you say, sir? You should have said it. Sir, now, another word, sir, democracy. See, many of the members think, sir, democracy has turned to be namocracy or modiocracy. Sir, namocracy or modiocracy because we don't see the Prime Minister. My daughter was asking, did you get an opportunity to sit with the Prime Minister? Sir? I said, no. Very rarely only I get, sir. So, what does it mean, sir? Democracy means accountability of the executive to the Parliament and Parliament being accountable to the people. That is democracy, sir. Sir, republic. I know where is Rakesh Sinha ji. For Rakesh Sinha and others, you know what is the meaning of republic? Vice Chairman, sir, you know what is the meaning of republic? Arno Goswami. That is the meaning of republic for many of the treasury benches people. Sir, that is the state of affairs of this country. Dharmendra ji, please don't look me like this. Please. You will, sir. Please conclude. Sir, please. this time you will have to give me, sir. John, Please conclude. I will lead, sir. I will please lead. hear me. अध्यक्ष जी, अभी मेरे मित्र जॉन बिटा सच्चे बोलते हैं.
और उनकी मुंह से हम लोग नेहरू जी की प्रशंसा सुन रहे थे, अच्छी है। मेरे को लगता है जॉन बिटास थोड़ा अच्छा रहता। राज्यसभा में जब नमूद्रीपद जी की सरकार को केरला में पहली बार तोड़ दिया गया था, राज्यसभा ने क्या डिबेट किया होगा, उनकी पार्टी ने क्या व्यू लिया था। अभी बहुत तो नसीहत डेमोक्रेसी के बारे में दे रहे थे, अभी उनके बारे में जिस विचार पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने जीते केरला में, उन्हीं की सरकार को जिनकी आज कसीदा पढ़ रहे हैं, उन्होंने उनको बर्खास्त किया, इलेक्टेड गवर्नमेंट को, नमूद्रीपद की गवर्नमेंट को बर्खास्त किया। तो उस समय में राज्यसभा में सीपीएम के मित्रों ने क्या बोला होगा, थोड़ा अगर लाइट डालते तो शायद जॉन बिटास से हम ये अपेक्षा कर रहे थे। ये मोकरी, जॉन बिटास, यू आर वेरी एनलाइटेंड एंड वेरी नॉलेजेबल पर्सन, डोंट लाफ एट योर कॉलीग्स, you may get box news in the Indian Express, but we expect some good light, good view of yours. When Namboodiripad was dismissed from the Kerala, what was the view of CPM in the Rajya Sabha? Please enlighten us. Thank you, sir. Sir, thank you, Dharmendra ji, for reminding me about the dismissal of EMS Namboodiripad. For such misdeeds, they have been punished. They are sitting here. Precisely that is the reason. Otherwise, do you think that they would have been put here? But you are repeating the same mistake. You are calling us, depicting us as Somalia. Say extreme poverty, let us look at. Extreme poverty in UP and Bihar is 30-40%. In southern states, it is 10%. In Kerala, it is almost zero. Yes, almost zero. Extreme poverty. Sir, it is because, sir, so much of disruption, sir. I want your protection, sir. I want your protection. You have my protection. Yes, sir. Sir, this happened because, Mr. Muralidharan seems to be a Keralite, but his only job is to act against Kerala. Yeah. His only job is to act against Kerala. Sir, when we talk about 75 years of Indian democracy, we cannot forget the name of Mahatma Gandhi. I was surprised that nobody from the Treasury bench even referred to Mahatma Gandhi. Just because he held Gita, Quran and Bible close to his chest, he was assassinated. Only because of that. Everybody knows about it. Sir, you are replacing Mahatma Gandhi with Savarkar. That's why, sir, the new parliament has been inaugurated on the birth anniversary of Savarkar instead of Mahatma Gandhi. You should have. If you had some respect, you would have done, sir. Sir, further, sir. Time allotted is over. Sir, I wanted to say your time is over, sir, so but much I came to know your time sir, can 2 never minutes, be sir, over. 2 minutes. I will finish, sir. Sir, 2 minutes. Sir, the biggest business, sir, please. The main business of this government is to appropriate people. Sardar Patel. They think that Sardar Patel is theirs. Sir, wasn't Sardar Patel who banned RSS after the assassination of Mahatma Gandhi? Yes. What did he say, sir? The banning was to root out the force of hate and violence that are at work in our country and imperil the freedom of nation and darken her fair name. Sir, another person who is being appropriated is Vivekananda. Didn't he say so? Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence. That is what Vivekananda said, sir. Sir, the unfortunate part, sir. Sir, you are a legal luminary. We are very happy that you preside over this house, sir. Yes. Your rich knowledge. Sir, I have seen you as a minister. In 1989, when you came to Lok Sabha, sir, I was in the gallery, sir. With huge admiration, I have been observing you and watching you, sir. Sir, but the unfortunate part is that, sir, the demolition of every institution in this house, in every institution, from parliament to election commission. Please conclude. Sir,
Sir, I am talking about you also, sir. Sir, That is why you have to conclude. sir, I am going to talk about you also, sir. Conclude. Every institution in this country is being demolished. From Parliament to Election Commission. So what is Election Commission now? Now they are bringing the status of the Election Commissioners from the Supreme Court judge status to Cabinet Secretary. And day after tomorrow, Dharmendra Pradhanji will bring a bill to make them a chaprasi. That is going to happen, sir. Sir, every institution is being disbanded, sir. Sir, Article 1. Sir, what? Last one. Siri Vaiko. Sir, I'm just writing it. One minute. Sir, 1 minute. It says that India, that is Bharat, shall be union of states, sir. Sir, federalism, sir. Kerala contributes 1 rupee and get back 25 paise. That is the status of federalism in this country, sir. Yes, it has turned to be like that. The honorable... Sir, I would say that. You told me, Once sir. again. Chairman, sir, you wanted us to have some change. The honorable member has made a statement of fact. Yes, sir. He will authenticate. I will authenticate. Sir, Kerala contributes 1 rupee to the national kitty, gets back 25 paise. I repeat it. I will place the document on the table of the House. During course of the day. Sir, and sir, last thing, sir. Sir, it's good that we are taking stock of this country. Democracy, institutions, parliament in this Amritagal. Sir, structure doesn't matter, sir. New parliament or old parliament. The process matters. The content matters. Can we enrich the parliamentary proceedings? Can we enrich the democratic process in this country? You can build mansions, structures, but sir, that will not strengthen the democracy in this country. Unless you enrich, sir. Please So, now I would urge conclude. I would urge upon the treasury benches through you, sir. Let us all resolve to enrich the democracy of this great nation. Thank you, sir. Okay. On a point of information from you, have you been to Statue of Unity? Have you been to Statue of Unity? Sir, I haven't gone, sir. I will go. I strongly suggest you go there once. I will go, sir. I will go, sir. If you give an invitation, I will go, sir. Great effort to appropriate someone. Sir, if you give an invitation, I will go, sir. I've been there. Sir, and sir, I'll be happy to go with you, sir. No, I'll go with you. Sir, Mr. Vaiko. Sir, let me have a towering personality beside me when I go. Let us hear Mr. Vaiko. Mr. Chairman, I am extremely thankful for giving me this opportunity to participate in the discussion on parliamentary journey of 75 years. இந்திய பாராளுமன்றத்தின் 75 ஆண்டுகால பயணத்தில் பேசுவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்காக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். It was also a long journey for me, having entered parliament in 1978 as a member of Rajya Sabha. நான் 1978 ராஜ்யசபா மெம்பராக இந்த பாராளுமன்றத்திற்குள் நுழைந்தேன். I had the honor to be a member of the Lok Sabha for 2 terms, in the 12th Lok Sabha and the 13th Lok Sabha. நான் 12வது லோக்சபாவிலும் 13வது லோக்சபாவிலும் இருமுறை மக்களவை உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறேன். What is shocking me, why the name is changed as Bharat? ஆனால் எனக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கும் விஷயம் என்னவென்றால் ஏன் நாட்டின் பெயர் பாரத் என்று மாற்றப்பட்டுள்ளது என்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. So we are not representing India. Then you call it United States of India. That should be called. நீங்கள் இந்தியாவை பிரதிநிதிப்படுத்த விரும்பவில்லை என்றால் நீங்கள் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்த வேண்டும். From Sanadana and Hindu Rashtra. So சனாதனத்திலிருந்து பாரத் என்ற பதத்தை நீங்கள் பயன்படுத்த விரும்புகிறீர்கள் அல்லது இந்து ராஷ்டிரம் என்கின்ற சொல்லை பயன்படுத்த விரும்புகிறீர்கள். tell them, you never entered our area. Guptas never entered. Mauryas never entered. Nobody entered to Tamil Nadu. But we have come to. ஆனால் குப்தர்கள் எங்கள் பகுதிக்குள் வரவில்லை, மௌரியர்கள் எங்கள் பகுதிக்குள் வரவில்லை. I am very sorry. The Prime Minister of India is putting Bharat
instead of India. இந்தியா என்பதற்கு பதிலாக பாரத் என்று பெயரை வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற Afraid of India, the formation of India. பிரதமரை பற்றி எனக்கு மிகவும் வருத்தமாக இருக்கிறது. ஏன் அவர் இந்தியாவை எதிர்த்து பயப்படுகிறார் என்று புரியவில்லை. இந்தியா என்று எதிர்க்கட்சி கூட்டணி அமைத்திருக்கிறதால் அவர் பயப்படுகிறார் என்று நினைக்கிறேன். I don't want to take much time because you have given me a privilege to take this time. I demanded installation of Ambedkar portrait in Central Hall of Parliament, allowing army men. பாராளுமன்றத்தின் மத்திய ஹாலில் அம்பேத்கர் அவர்களின் புகைப்படம் வைக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொண்டேன். The Sanatana forces are threatening them. They are afraid because you leave India, you Muslims India. இந்த நாட்டின் முஸ்லிம்கள் பயப்படுகிறார்கள். ஏனென்றால் சனாதனம் அவர்களை மிரட்டுகிறது. இந்தியாவை விட்டு வெளியேறுங்கள் என்று அவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறது. இது இப்படியே தொடர்ந்தால் சோவியத் யூனியனுக்கு நடந்த நிலைதான் இந்தியாவுக்கு நிகழும். இந்தியா பல நாடுகளாக பிரிந்து போகும். நீங்கள் நாட்டின் பெயரை யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா என்று மாற்றுங்கள். இல்லாவிட்டால் இந்தியா ஒரு நாடாக இருக்காது. நன்றி. Honorable members, there have been enough reflections on Dr. B.R. Ambedkar. Leader of the opposition was very focused. I hope he was here. But it was a glorious moment for me as a member parliament in 1989 that it was during our tenure of 9th Lok Sabha that we could give the great man something that was long overdue, Bharat Ratna. Professor Manoj Jha. शुक्रिया सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण दिन के नहीं शुक्रिया मैडम मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। मैं यहां से बोल रहा हूं, इधर मैं यहां से बोल रहा हूं। शुक्रिया, बहुत अच्छा अवसर है कि आप यहां आई हैं। कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता। आज सुबह माननीय सभापति महोदय ने कहा था कि ह्यूमर वगैरह हमारी जिंदगी से चला गया। तो मुझे स्मरण है, ये किताब मैं एक ही किताब लेके आया हूं, ऐसी 5 किताबें हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की। तो इसमें सर ऐसी 5 किताबें हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। सो माननीय उपसभापति जी, एक मिनट प्लीज। माननीय उपसभापति जी, 75 कैसे बनाया जा रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से 75 जोड़े तो 2021 में पूरा होता है, अगर आजादी से जोड़े तो 2022 में पूरा होता है, और अगर पहली लोकसभा से जोड़े तो वो 2027 में पूरा होता है। तो ये 75 की गणना कहां हुई, किस ज्योतिषी ने की मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से 75 नहीं है, लेकिन 75 वाली फील में अपनी बात रखूंगा। हाँ, तो माननीय उपसभापति जी, हुआ यूं कि सरोजनी नायडू जी को बुलाया गया बोलने के लिए संभवतः 11 दिसंबर 1946 को। कम लोगों को यहां पता होगा कि सरोजनी नायडू जी बिहार से चुनकर संविधान सभा में आई थी। तो उनको चेयरमैन साहब ने कहा कि अब बुलबुले हिंद, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया आएंगी, लेकिन कविता में अपनी बात कहेंगी, प्रोज में नहीं कहेंगी। उन्हें थोड़ा बुरा लगा, मजाक में ही सही। उन्होंने कहा कि आपका अब ये व्यवहार, आपका ये कहना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर भी सुनाना होगा। तो उन्होंने एक चीज सुनाई जो मैं पेश नजर कर रहा हूं माननीय सभापति जी को। सुबह
बड़ी बेसब्री से वो कह रहे थे कि ह्यूमर चला गया, तो उन्होंने सुनाया कि बुलबुल को गुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक, रंगीन तबीयतों को रंगे सुखन मुबारक। तो ये मैं ये बता रहा हूं कि ये हमारा ध्येय था। अब सुबह चर्चा की, हमारे लीडर ऑफ द हाउस ने बड़ी खूबसूरत चर्चा की और जिक्र किया सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। यहां ठीक सामने सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने एक बात कही थी और मैं वो श्लोक पढ़ना चाहता हूं। मृदुना दारुणं हंति मृदुना हंत्य दारुणम, मृदुना दारुण हंति मृदुना हंत्य दारुणम, ना साध्यं मृदुना किंचित तस्मात् तीव्रतरं मृदु। इसका आशय यह है माननीय सभापति, उप सभापति जी, कि अग्रेशन से, अग्रेसिव बिहेवियर से आप चीजें हासिल नहीं कर सकते। इस देश में मेरे विद्वान साथियों ने उधर से उपलब्धियां गिनाई, हमारे कुछ विद्वान साथियों ने यहां से कमियां गिनाई, मैं दोनों के बीच में चुनौतियां गिनाना चाहता हूं। चुनौतियों की वजह से आज हम यहां हैं, और सिर्फ हम ही नहीं हैं, 140 करोड़ लोगों का यह भवन है, चाहे नया वाला हो या पुराना वाला हो। तो आज के दिन ये मेरी ओर से एक विदाई भाषण भी है, अपने दल की ओर से इस इमारत को, जिस इमारत में हिंदुस्तान की तकदीर लिखी गई संविधान सभा के माध्यम से, और वो तकदीर लिखने वाले संकीर्ण दायरों में नहीं सोचते थे। मैं उस पर आऊंगा थोड़ा 2 मिनट के बाद। माननीय सभापति जी, बहुत चर्चा होती है, 47 में बंटवारा हुआ था इस देश का, बंटवारे के बावजूद उतनी घृणा, उतनी नफरत, पीड़ा के बावजूद नहीं थी। अभी हाल में एक रोमिला जी की किताब आई, वो कहती है बड़ी खूबसूरती से, हैव वी मूव्ड फ्रॉम इंटीग्रेटेड नेशनलिज्म टू सेग्रीगेटेड नेशनलिज्म? क्या हम एकीकृत राष्ट्रवाद से एक विभाजित, विखंडित राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं? क्योंकि यह इमारत, इसकी बुनियाद मेलजोल पे है, इसकी बुनियाद में बंटवारे के बावजूद बंटवारा नहीं हुआ। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, सरकार जरूर बनाइए, अगला चुनाव भी लड़ेंगे, खूब दिल से लड़ेंगे, इंडिया भी रहेगा, भारत भी रहेगा, कोई में से एक चॉइस नहीं है, क्योंकि हमको इंडिया भारत करके जम्बूद्वीप तक नहीं जाना है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वो जो मेलजोल की सीमेंट है, उसका खात्मा हो रहा है, उसको बचाइए। माननीय सभापति जी, मैं 2 व्यक्तियों के मध्य में अपनी कुछ बात रखना चाहता हूं। संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल जी लेके आए, और संविधान सभा में जब ड्राफ्ट सबमिट हुआ तो BR अंबेडकर ने वो ड्राफ्ट सबमिट किया। तो मैं सिर्फ कहता हूं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बहुत सारी बातें थी, ये प्रस्तावना के बारे में, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में काफी कुछ बोल चुके हैं, सॉवरेनिटी गिरवी ना चली जाए, मौलिक अधिकारों के बारे में। हमें आपके पीछे एक तराजू है, वो तराजू हमें लगाना होगा कि मौलिक अधिकार में कहां पहुंचे, सॉवरेनिटी में कहां पहुंचे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के मसले पे कहां पहुंचे। हाई फ्लाइंग वर्ड्स डोंट कवर अप आवर फेलियर्स, लेट्स नॉट लुक फॉर दैट। और एक मसला आया, उन्होंने एक जिक्र किया ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। माननीय सभापति जी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब बड़ी शिद्दत से लोग काम में लग गए अधिकारों पर बात करने के लिए, तो राजा को शुरू में परेशानी नहीं हुई, लेकिन राजा को लगा कि कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे खुराफात की बू आ रही है। उसने क्या किया, दरवाजे बंद करवा दिए, जिस हॉल में वो लोग बैठते थे, वो चले गए दूसरे दरवाजे रूम में, उसको भी बंद करवा दिया, तो वो चले गए टेनिस कोर्ट में, सारी कार्रवाई पूरी की, उसको कहा ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट का जिक्र जवाहरलाल जी ने इसलिए किया था कि हमारे अंदर वो जज्बा हो, इमारत बनाने बिगाड़ने से इबारतें नहीं बदलनी चाहिए, हमारा जज्बा वही होना चाहिए जो ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट में जवाहरलाल जी, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ने कहा। अब आते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा। माननीय सभापति जी, आप जिस इलाके से आती हैं, मैं जिस इलाके से आता हूं, वहां ये बातें बड़ी प्रबल है। आजादी का मूल्यांकन होगा तो इस आधार पर होगा कि राजनीतिक आजादी, सामाजिक आर्थिक आजादी में कितनी तब्दील हुई, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा था
एक दिन एक ज्वालामुखी बन जाएगा, और मैं उस ज्वालामुखी को बनते देख रहा हूं। वो इसलिए बनते देख रहा हूं कि जब मैं देखता हूं कि बिहार के जातिगत सर्वेक्षण पे देश के सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, तो मैं देखता हूं ब्लॉक करने की कोशिश हो रही है। यह एस्पिरेशनल वर्ग है, पिछड़ों की बड़ी आबादी, उसके एस्पिरेशन को आप सोशल डेमोक्रेसी के नजरिए से देखिए। जो बाबा साहब कह गए थे 31 में आखिरी हुई, उसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश बना। क्या इस देश को, यहां की सरकारों को, राज्यों की सरकार को वैज्ञानिक आंकड़े नहीं चाहिए? क्या आप आंकड़े आसमान से गिराएंगे? मैं समझता हूं आज के दिन यह भी हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम इन आंकड़ों को लाएं, उसके आधार पर अपनी नीतियां तय करें। एक माननीय सभापति जी, अंबेडकर साहब दो और चीज कह के गए, प्रिवेंटिंग टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी। मैं बार बार इस सदन में कह चुका हूं कि मेजॉरिटी बेहद आवश्यक चीज है, मेजॉरिटी के बिना सरकार नहीं चलती है, लेकिन मेजॉरिटी और मेजॉरिटेरियनिज्म में फर्क है। यह फर्क अगर हमारी सरकार भूल जाती है तो बहुत बड़ी पीड़ा होती है। जब मेरे मित्र ने कहा, मैं अक्सर देखता हूं हम जैसे लोग छोटी आलोचना भी करते हैं, छोटी मोटी आलोचना जो कभी व्यक्तिगत नहीं होती है। आप कहते हो कि पाकिस्तान चले जाओ, अरे कभी देखा भी हो कितनी जगह है वहां का भूगोल क्या है? इतने लोग नहीं अट पाएंगे। मान लीजिए कि 65% लोगों ने आपको पिछली बार वोट नहीं किया, सबको पाकिस्तान भेज दोगे? ऐसी कोई व्यवस्था होती है? यहीं मिलजुल से रहना है, यहीं मिलकर रहना है। और ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, खुद अंबेडकर साहब कह के गए थे। मैडम, आपकी तरफ से मैं एक और चीज, एक दो छोटी चीज कह करके, इस देश की एक बड़ी आबादी, सभापति महोदया, मैं आपका सभापति महोदया अभी बिल मत 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, आज पहली बार हैं, इतनी नजरिए इनाद कर दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी को लेकर के हमारा दृष्टिकोण साफ होना चाहिए। सरकार में आप हो, हम हो, बेरोजगारी हम सबकी पॉलिटिक्स खत्म कर देगा। राइट टू एम्प्लॉयमेंट के लिए हम क्या सोच रहे हैं? और इस देश की एक बड़ी आबादी से देशभक्ति का जो प्रमाण पत्र हम मांगते हैं ना मैडम, वो कहीं चलेगा नहीं। मैं आखिरी चीज कह करके एक सुनाना चाहता था। मैं इसलिए कहता हूं, वो एक घर में 5 सदस्य हैं, उसमें हर 5वां सदस्य उस आबादी का है। अगर उस घर में उस 5वें सदस्य को आप एलिनेट करेंगे, दूर करेंगे, घर कभी महफूज नहीं रह सकता। और आखिरी में मैं साहिर को जाता हूं और वहीं खत्म कर दूंगा, आपको घंटी बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। आओ कि आज गौर करें इस सवाल पर, देखे थे हमने वो हंसी ख्वाब क्या हुए। दौलत बढ़ी तो मुल्क में अफलास क्यों बढ़ा, खुशहाली आवाम के असबाब क्या हुए। जो अपने साथ साथ चले कुएदार तक, वो दोस्त, वो रफीक, वो अहबाब क्या हुए। क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम, वो सजाए याब क्या हुए। बेकस बरहनगी को कफन तक नहीं नसीब, वो बादा आए अतलसों के मुखाब क्या हुए। जमहूरियत नवाज बशर दोस्त अमन खां, खुद को जो खुद दिए थे वो अलकाब क्या हुए। मजहब का रोग आज भी क्यों लाइलाज है, मजहब का रोग आज भी क्यों लाइलाज है, वो नुस्खा हाय नादिर नायाब क्या हुए। हर कूचा शोला जा रहे, हर शहर कत्लगाह, यकजहतिया हयात के आदाब क्या हुए। सहराए तीरगी में भटकती है जिंदगी, उभरे थे जो उफक पे वो माताब क्या हुए। मुजरिम हूं अगर मैं तो गुनहगार तुम भी हो, मुजरिम हूं अगर मैं तो गुनहगार तुम भी हो, ए रहबराने कौम खताकार तुम भी हो। जय हिंद मैम, एंड सैल्यूट टू ऑल द फ्रीडम फाइटर्स, संविधान सभा के उन तमाम लोगों को। और मैं चाहूंगा कि सेंगोल के बगल में एक बड़ी आकृति में इनकी तस्वीरें वहां लगाई जाएं और हमें प्रेरणा देते रहें। जय हिंद। धन्यवाद। श्री वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। श्री वीरेंद्र प्रसाद। Yes, I'm here. Thank you, Madam Chairman, for allowing me to speak on the historic occasion. Today is the last day. If in our parliament life we are sitting, we all the members sitting for the last time in this building.
tomorrow, another journey will start. It is privilege for us. We are the person who got opportunity to speak, attend this old parliament, and we are going to get opportunity to speak in our new parliament. I remember, sir, when I was a student of class 8, for the first time in my life, I visited Delhi. So I am from Assam. You know, northeastern region, more than 2,000 kilometers away from the duty. Definitely, as a school student, I visited here, and we are traveling all the important parts, spots of Delhi, and in class 8, in my life, for the first time, physically, I seen our Parliament House. And it was from the outside, not from the inside. Sir, in 1996, I was elected Member of Parliament from Assam in Lok Sabha, sir, madam. In class 8, physically I have seen the Parliament House from the outside, and in 1996, physically for the first, I entered this house as a Member of Parliament. And fortunately, I was the took responsibility as a Cabinet Minister of the country in the year 1996, and it was my privilege to attend both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, although I was a member of Lok Sabha, but as a minister I was attended this house also. It is painful, no doubt, from tomorrow we are not here. But we are jubilant also. We are privileged, we are lucky. From the next day, tomorrow, we are going to attend the new Parliament House with modern art and technology. The Parliament has a long history. I remember many things. This is the Parliament, this is the building where first Indian financial budget was passed by then Prime Minister Jawaharlal Nehru. Again, I am speaking, I remembering, when China attacked my country, my motherland in 60s, then Prime Minister Jawaharlal Nehru given goodbye people of northeastern region from India. This is the sentiment of us. This is the sentiment of. After then, many things was discussed inside this parliament building. When China came to near to Tezpur, China came up to Bombila. People of Assam, people of northeastern region, especially Arunachal people, they are crying. We are not equipped to fight against China. And at that time, Assam was given farewell goodbye to then Prime Minister Jawaharlal Nehru. But sir, after 16th when session was assembled, at that time I salute great parliamentarian of India, great parliament from Assam, Hem Barua, who had fought for Assam and who have given one to the government from this house. Sir, this parliament also equally witness of imposing emergency in our country. Because for the first time emergency was declared in our country. And at that time, Parliament
was not functioning, Parliament was dissolved. Our Honorable Prime Minister always says, India is the mother of democracy. Yes, Prime Minister is very right, India is the mother of democracy. But one thing, Shantanu Sanjay, you should remember, but historians said, ancient Greece was the first country of the world who revoked democracy. But this is not correct. This is not correct. In Bihar, first Indian democracy started in Vaishali. It was started in Vaishali, not 500 years ago. It was started 600 years ago. And Vaishali of our country is the first place of democracy started, where in Vaishali town, it was 600 years ago, 707,000 people, locally elected people, selected people, sit together to make a decision, and this is the first democratical decision of our country. Madam, we are going to new house today. This house will be the witness of modern technology, modern art. We hope, we believe in coming house where we are going to tomorrow will bring more important law for our country, for develop our country, and financially to improve our country. Many more discussion will take place. I remember, I have seen very, very important person, dignitaries, functioning in this house. Just 2 minutes, then I come. 5 minutes. Okay, just 2 minutes. I remember K.K. Narayan as a vice president of our country who shared the house. I remember Pharaoh Singh Shekhawat. I remember Hamid Ansari. I remember Venkaiah Naidu ji for their contribution to our parliamentary democracy. Especially, I must speak one thing from my heart. I salute Venkaiah Naidu ji because from this year, always Venkaiah Naidu encouraging all the members of the House to speak their mother tongue. He was a very knowledgeable person. Always he encouraging about the mother tongue. Definitely Venkaiah Naidu has a great, great contribution to this House. Equally, our present chairman also always given us guidance, speaking about our history, especially in the legal side, he always given us the guidance. Ma'am, I remember, if I'm not speaking, this is not fair. I have got opportunity to witness the speech of Bajpayee, budget presentation of Pranab Mukherjee ji. Wonderful oratorist personality of Madam Sushma ji. Learned speaker Arun Jaitley ji. I am learned many, many, many things from these people, sir. Ma'am, I remembering my first day in the life when I was a student of class 8. I have seen this parliament building from the outside. And in the 1996, I entered this house as a member of parliament. And this is the beauty of our democracy. My family don't have any political background. I am not a son of any minister. I am not a son of any MP. I was not a son of any politician.
but I am a son of the soil of the soil. I am a son of the soil. And this is the beauty of democracy. I am elected from son of the soil of this wonderful parliament. Definitely, if I'm not speaking about my political party, then it will be not fair. I'm getting this opportunity. My political party, Assam Gana Parishad, is a regional political party with a national outlook. And I'm grateful for my country. In my life, I'm working only one party. This is my party. This is Assam Gana Parishad. Still, I am a member of Assam Gana Parishad. And I am really grateful to my party for send me to Lok Sabha, for send me to Rajya Sabha as a member of parliament. With this, I believe we all members gathering here in our last day of this building, we always remembering our memory in this building. And from tomorrow, in new building, we start our new parliamentary life, our new democratic life. With this word, I conclude. Thank you very much. Thank you. Sri Jose K. Boni. So today we gather here to reflect upon an extraordinary journey, more than 70 years of Indian Parliament. For 3/4 of a century, it has served as a cornerstone of our nation's governance. It is a journey marked by trials, triumphs, and unyielding commitment to the ideal of democratic republic. The framers of our Constitution envisioned a vibrant democracy where every citizen, irrespective of caste, creed, or gender, had a voice and a vote. Our Parliament was entrusted with the sacred duty of upholding these principles. In last 7 decades, many Latin American and Afro-Asian countries sailed along with us, sank and disappeared. Even the mighty USSR and the entire Eastern European nations collapsed like a palace of cards. But we keep on sailing because on the most of our ship, the flag of parliamentary democracy flutters. We have seen heated debates, fiery discussions, and passionate argument, the very essence of parliamentary democracy. Over the years, it has played a pivotal role in shaping India's destiny. It has been source of progressive legislation, from the eradication of untouchability to the establishment of gender equality, from comprehensive land reforms to the liberalization of our economy. As we celebrate the remarkable journey, let us also acknowledge the challenges we face. Our Parliament, like any other institutions, has had its share of ups and downs. It is an undeniable fact that recent years have witnessed instances of undemocratic parliamentary methods and procedures which threaten the very essence of democracy. There have been occasions where legislative debates have been curtailed, opposition's voice silenced, and crucial bills passed without due discussions and scrutiny. The integrity of the Parliament committee and internal part of our democratic system has at times been compromised. Delays in appointments and the politicization of these committees have hindered their effectiveness. Only 25% of the bills were referred to these committees. Such a low referral rate of bills to the committee during the 16th Lok Sabha clearly shows the government is not open to the scrutiny and engagement that the committee offers. The suppression of the dissent, be it from the civil society, academia, or the media, is a matter of deep concern. A thriving democracy encourages diverse perspective and respect the right of dissent.
recent incident involving curtailment of free speech cast doubt on the government's commitment to these democratic values. The robust democracy thrives on open communication and the free exchange of ideas. Curtailing these fundamental rights poses the threat to the health of our democracy. With the inauguration of the new parliament building, let us anticipate a transformative shift in our engagement with this paramount institution. May this symbol of progress empower us all to become the collective voice of the people of our nation, steering our democracy towards a brighter and more inclusive future. May our parliament continue to be the beacon of hope and the voice of the people for generations to come. Thank you. Mr. Praful Patel. Thank you, Chairman, sir. I get up to speak probably for the last. I get up to speak probably for the last time in this very august building. And how can you be so sure? Well, I said probably. And I'm sure we are all filled with a sense tomorrow of... we are meeting Dr. Keshav, therefore I'm saying. And of course we are all... Me and Praful Patel got together in Parliament as members of 9th Lok Sabha. So we have all assembled here, sir, and obviously this is a feeling and a sense of nostalgia. As you have very rightly pointed out, not only our long association, but my very own long association with Parliament, with many times in the Lok Sabha as well as in the Rajya Sabha, and having completed more than 32 years as a member of Parliament. So, sir, I definitely feel that I share the sentiments of most of my colleagues who have been speaking here, and definitely 75 years of independence, our country has really come a long way. And our democracy, no matter what the assaults have been from within and outside, has withstood the test of time and has got stronger by the passing day. And this democracy, which we pride ourselves in, and which the world also now looks up upon us as something to be cherished. Dr. Ambedkar gave us a wonderful constitution. Along with him, many other stalwarts joined him and presented the constitution to the Constituent Assembly. And certainly, our constitution can be rated as one of the finest constitutions drafted anywhere for any country in the world. And I think that is something we should be very proud of. And a country which is so diverse as India, as vast as India, as populous as India, certainly requires a binding force, a glue, and that our Constitution has very ably provided us and stood the test of time. A country, I think when we go abroad and we see many countries and we look at their democracies, of course, there are very many shining examples. But no country, as again I repeat, as populous as India, 140 crore people, speaking so many languages, so many dialects, so many religions, so many states, so many ethnicities, can be remaining together as one is sometimes, I think, really an astonishment for many people in the world. We recently had the G20 summit in India, and I'm sure whatever though we could not participate ourselves, but as government of India, as projected and as seen by us and all the world, I'm sure that every single leader who came to India would have been proud of what India has achieved in its last 75 years. It is not a mean feat, sir. We have ourselves, when we came to Parliament, I remember
we were, you and me and all of us, many who were in there in the past, राम गोपाल जी को भी याद होगा कि हम पहले 25 टेलीफोन के कनेक्शन किसको दें या गैस के सिलेंडर हम किसको हम अपने एमपी कोटा से दें, यहाँ से हमारी शुरुआत होती थी केशव राव जी। एंड वो दिन भी हमने देखे हैं कि टेलीफोन का कनेक्शन अगर नॉर्मल कोर्स में हम लगाएं तो 15-15, 20-20 साल के बाद हमको नंबर लगता था। तो उस और गैस के कनेक्शन की भी वही परिस्थिति थी और ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्रिविलेज माना जाता था। तो उस जमाने से लेकर आज, हरदीप जी आप पेट्रोलियम मंत्री हैं, आपको मालूम है कि आज कितने बड़े पैमाने पर हमारे देश में न केवल गैस की बात करें या टेलीफोन की बात करें, लेकिन पूरी तरह से हमारे देश की जो आम तौर पर जो प्रगति हुई है, ये एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा मिसाल बनी हुई है। और इसीलिए 75 वर्ष जब हम पूरे करते हैं, अमृतकाल की बात करते हैं और इस सदन से नए सदन में जाने की बात करते हैं, तो आज का भारत और भविष्य का भारत कैसा होना चाहिए, आधुनिक भारत कैसा होना चाहिए, इसके लिए निश्चित इस सदन में एक अच्छी चर्चा होनी चाहिए और मंथन होना चाहिए और हर व्यक्ति का यहाँ पर जो सुझाव है उसका एक अहम महत्व होता है। हर संसद सदस्य जो यहाँ पर बैठा है ये सदन में या उस सदन में, उनके अनुभव का पूरा इस्तेमाल करके देश हित में और जनहित में हम लोगों ने उसका इस्तेमाल करके उसका फायदा उठाने का काम करना चाहिए। आज देश में क्या क्या बातें नहीं होती है, आज हम देखते हैं कि कितना विषमताएं होने के बाद, कितनी मतलब गरीबी भी है, अमीरी भी है, सब कुछ होते हुए भी लोग मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते हैं। ये हमारे भारत की संस्कृति का बहुत बड़ा अभिन्न अंग है और तभी हम ये सारी बातों को, कोई भी समस्याएं आती है, बाधाएं आती, उसको पार कर पाते हैं क्योंकि हमारे देश में सहनशीलता और सबको एक दूसरे के साथ लेकर चलने की हमारे मन में भावना है। और यह हमारे संविधान ने भी हमको दिया है, जो एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार। बहुत लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा, हम अमेरिका के डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अमेरिका की डेमोक्रेसी में भी जो काली चमड़ी के लोग थे, जो अफ्रीकन डिसेंट के लोग थे, उनको भी वोट का अधिकार 1960 के दशक में जब मार्टिन लूथर किंग ने लड़ाई लड़ी उसके बाद मिला। तब तक उनको बराबरी का अधिकार नहीं था, लेकिन हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और उनके साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस देश में सभी को बराबरी का अधिकार हमारे संविधान में 1950 में हमको दिया, जो हमारे आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, जो और विश्व के कोई बड़े देशों में नहीं रही है। तो इसलिए बहुत बड़ी बड़ी बातें दूसरे देशों से हम तुलना करते हैं, लेकिन हमारे देश की जो गौरवशाली इतिहास है इसका स्मरण करने का आज वक्त है 75 वर्ष के हमारे इस कार्यकाल में। और अब हम नए सदन में जाएंगे सर, निश्चित आप तो वहीं विराजमान होंगे जहां आज है वो पीठासीन, आप वहां भी रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमने तो अभी तक वहां देखा नहीं है नया भवन, लेकिन निश्चित नए भवन में एक आधुनिक भारत की और भविष्य के भारत की, उसकी भी झलक हमको नजर आएगी। एक और हम चंद्रयान पहुंचे, एक और हम हमारे देश में इतना तंत्र और विज्ञान का आज उपयोग कर रहे हैं। आज हमारा देश टेक्नोलॉजी में विश्व में एक अग्रणी स्थान प्राप्त कर चुका है। अमेरिका की और विश्व की बड़ी बड़ी जो कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, उन सारे कंपनीज के जो प्रमुख लोग हैं, वहाँ के प्रमुख इनोवेटर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो हमारे भारतीय हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और ऐसे एक आधुनिक युग में जब हम जा रहे हैं और भविष्य के भारत का और नए भारत का सपना जब हम देख रहे हैं, नौजवान भारत का सपना देख रहे हैं, तो निश्चित नए सदन का भी एक अहम उसका एक महत्व रहेगा। और मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हमारे सदन का सुचारू रूप से नए सदन में भी कामकाज जारी रहेगा और नए सदन के माध्यम से हमारी जो देश की जो युवाओं की और भविष्य की पीढ़ी की जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसकी जरूर पूर्ति होगी। इसी विश्वास के साथ हमारे देश के 75 वर्ष पूरे हुए, हमारे देश के लोगों को
और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपने 2 शब्दों को विराम देता हूं। No, the honorable member has put across his points with positivity, and that is what is required. At an occasion like this, we all have to converge to see Bharat blossoms, politics apart. So that's a very important contribution. Sri Bhuvaneshwar Kalita. Thank you, Honorable Chairman, for giving me the opportunity. क्या पता कौन कितनी गलत जगह बैठा हुआ है? Thank you, sir, for giving me the opportunity to speak on this historic occasion of Rajya Sabha, to speak on the parliamentary journey of 75 years, starting from Samvidhan Sabha. Sir, today I remember when I came first to Rajya Sabha in 1984, when Justice Hidayatullah was presiding over that chair, and he was followed by, of course, R. Venkat Ramanji, Sangadal Sarmaji, and today you are in the seat, sir, and I thank you for that the Indian democracy and Indian Parliament has come over years of development and strengthening the democracy in this country. So today, I congratulate the new Vice Chairman for taking up the chair. Thank you. Today, as we assemble here to reflect upon the parliamentary journey of 75 years, starting from inception of the Samvidhan Sabha, we embark on a profound exploration of our nation's democratic evolution. This remarkable journey has been marked by achievements, experiences, memories, and invaluable lessons that have not only shaped our parliamentary institutions, but have also left an indelible imprint on the course of our nation's history. Madam Chair, while speaking on these 75 years of our journey, we must remember about some of the key milestones in the history of Indian Parliament. Madam, 1946, the Constituent Assembly convened for the first time on December 9th. So our journey starts from there. And in 1950, India adopted its constitution on January 26th, a momentous event for Indian parliamentary democracy. Madam, in 1952, the first general elections were held, marking the initiation of our democracy. And in 1956, the State Reorganizations Act has adopted, leading to reshaping of state boundaries. There was a struggle, and the then members of the Constituent Assembly had given shape to this country, and particularly by reorganizing the states for the convenience of the people and the administration. In 1957, with the second general election, the things have started moving, and in 1961, Goa, Daman and Diu were new states where the new states got liberation. They were liberated and they were recognized as state. Madam, one historic occasion we must remember in this regard is that for the first time, the preamble of the Constitution was amended. We all remember the 42nd Amendment. And in 75, 77, of course, that was the period that the Indian democracy will remember, and the parliamentarians particularly, and the people of this country will remember because of its effects on the people. Madam, in 1986, a historic bill was passed, the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act was enacted. This is one historic legislation where the women
of all religion, all communities were given equal power, and that is that equal power and equal opportunity and equal right. So this one we must remember during the discussion of this in this debate. And the economic liberalization came in 1991 during the Prime Ministership of P.V. Narasimha Raoji, and today we are step by step we are ahead to liberalize the economy and the benefits of the economy reaching to the poor and vulnerable sections because of that. And today the country is progressing. The country has got remarkable progress in the economic field, where today India is considered as the 5th largest economy in the world. And very soon, our Honorable Prime Minister has publicly announced that within next few years, India will be one of the 3 top economies of the world. Madam, another remarkable event during the progress of this democracy, during the progress of Parliament, was the GST. The GST was Goods and Services Tax was implemented and streamlining the taxation system. One nation, one tax was the motto, and today we have seen that the national exchequer is enriched by GST, and remarkable tax collection has been made, and which is helping the development of this country. So I remember, and the country will remember this GST taxation for the benefit and for the progress of this country. Madam, one nation, one tax. But till 2019, this country had 2 constitutions, 2 flags, and this was possible to make one nation, one flag, and one constitution by the amendment brought by and the abrogation act of Article 370, which was brought in 2019, which says we can be proud of being one nation, one flag, and one constitution. And I congratulate the government for that. Madam, I did not disturb you, although you said certain objectionable things, including balkanization of the country. So please don't do that. And Madam, the great thing, the great war that India fought was the COVID-19 pandemic. The India not only come out of this pandemic successfully, but also helped other nations, neighboring countries, to fight with this. And the biggest achievement was the vaccines that India manufactured, and vaccines, and the entire country was vaccinated, and today we are safe in terms of healthcare. Madam, while talking about the achievements, what during the 75 years of our journey, what achievements this country has made. Madam, the main achievement which we can today discuss is the inclusivity. This efforts towards inclusivity, one of our speakers was giving an example with a senior leader that it is not only India, other parts of the world also had the inclusivity in terms of women representation. The women representation
has increased from 5% in 1951 to 14% in 2019. And the number of voters increased dramatically from 173.2 million in 1951 to 912 million 2019. So this is not a less achievement. This has strengthened the democracy of this country. These things have improved, and this has brought achievement to our democracy, to our parliamentary democracy. Madam, some of the experience and some of the achievements that we have made is the 2023 where we are today. Today, we are sitting here in the Rajya Sabha chamber, and some of our members have become emotional also that maybe from tomorrow we will be going to the new building. This new building is that we have to cross a line. Up to this 75 years, we have achieved a lot. But from here, we have to make a leap forward so that this country becomes the developed economy. So next 25 years, in the new building of Parliament, we are having our Amrit Kal, where India will reach in the line of developed nation. So that will be our effort, and every one of us should make our efforts in our own way. Every Indian, every single citizen should make their own effort to make this country a developed nation by 2047, when we will be completing our 100 years of Indian Parliament and Indian democracy. So, now I am going to conclude because there are some more speakers. They are also and this special station is today convened to commemorate the 75-year of journey of our Parliament. What is our experience during this period? Sir, Madam, to conclude my speech here, I want to say that our journey through parliamentary evolution of India over past 75 years has been one of both reflection and insight. While we have witnessed certain challenges and shifts in the parliamentary dynamics, it is essential to recognize the significant efforts made to foster inclusivity within our democratic institutions. The rise of women's representation, the active engagement of citizens in public debates, the crucial role of parliamentary committees, and the passage of legislation aimed at social welfare and labor rights are testaments of our commitment to inclusivity. Madam, as we commemorate the key milestones in the history of the Indian Parliament, we are reminded of the enduring spirit of our democracy. From the adoption of Constitution in 1950 to the recent inauguration of a new Parliament building in 2023, these events signify our nation's growth, resilience, and adaptability in the face of challenges. As we move forward, Madam, it is imperative that we continue to uphold the principles of democracy, inclusivity, and transparency that have been the cornerstones of our parliamentary democracy. By learning from our past and embracing the opportunities of the future, we can ensure that our democratic institutions remain robust and responsive to the ever-changing needs and aspirations of our diverse and dynamic nation. Let us celebrate this journey, Madam.
Let us celebrate this journey with pride and commitment to a more inclusive and vibrant future for Indian democracy. Thank you, Vice Chair, for giving me the opportunity. Thank you very much. माननीय सदस्य विक्रमजीत सिंह साइनी। Honorable Chairman Sir and my fellow parliamentarians, today when I stand here to speak on this historic occasion of the transition from historic Parliament House to the iconic new Parliament building representing the new India as India approaches a major milestone in the 75th year of the Parliament. Ma'am, Parliament House is not just a building of brick and mortar, whereas it is a living institution which has to be safeguarded and embrace the idea of India. It's the fundamental temper of our world's largest democracy. Indian Parliament is an aspiring story of our civilization's strive for respect and resources with our values intact as the largest democracy in the world. We embody the unique fiber of our being, unity in diversity, secularism, pluralism, social justice, and equal fundamental rights for each citizen. On this historic occasion, Chairman, I would like to remember and pay a homage to our ancestors, and as my father used to narrate, the horrors of partition still haunt us. I think Punjab and Punjabis suffered the most out of it. There were about 2 million people who lost their lives, and about 14 million people had to abandon their homes in the giant exodus. लाखों लोग बेघर हो गए और उन्होंने भारत को, इंडिया को, भारत अपनी मातृभूमि को अपनी जन्मभूमि माना और अपना सब कुछ, अपना कारोबार, अपने बर्तन, अपना जायदादें, अपना सब कुछ छोड़ के लाखों पंजाबी सफर करते हुए भारत को चुना, भारत को माना और फिर एज ए रेफ्यूजी दे स्टार्टेड देयर कैरियर और फिर रेफ्यूजी से बिल्डअप किया। ये उनकी देशभक्ति की सबसे बड़ी निशानी है और उन्होंने इस देशभक्ति का अभी तक पैट्रियोटिज्म हमारे सामने है। I also pay homage to all the great Sikh leaders who spurned the offer of then Muhammad Ali Jinnah and decided to upkeep India as their motherland, and Punjabis and Sikhs have been proving their patriotism till today. We Sikhs are not by chance Indians, we are proudly by choice Indians. Honorable Chairman, sir, we also pay tribute to them. Dehe Shiva, Var Mohe Ehe, Shubh Karmante, Kabhu na Taru, Jab Aab ki Aud Nidhan Bane, At hi Ran Mein, Tab Jooj Maru. I would also like to remember on this historic occasion the Shaheed-e-Azam Bhagat Singh, who drew the attention of the British Samrajya and this very own Parliament to further strengthen the freedom struggle. In this same Parliament building, while presenting the Constitution to our country, Dr. Bhim Rao Ambedkar had said, however good a Constitution may be, if those who are implementing are not good, it will prove to be a bad. However bad a Constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be good. So onus is on us parliamentarians on 75th year of the Parliament. The dream, voice and aspirations of a nation suppressed by a colonial rule came to surface. As they say, with great power comes great responsibility. We all sit here as the public representatives. We are emblematic of the aspirations of 1.4 billion people who want us to serve them. We represent them. We are their voice. We are their eyes. We are their ears. Eradicating poverty, unemployment, corruption, agrarian crisis, casteism, communal hatred have no place for India, and this Parliament have to work for the fundamental things like ensuring health, education, infrastructure, nation's inclusive development, women empowerment, youth empowerment. ये अमृत काल तभी ही अमृत होगा अगर हम विद्या का, शिक्षा का अमृत, सेहत का अमृत,
हेल्थ का अमृत, रोजगार का अमृत हर एक गांव में हर एक भारतीय को पहुंचाएंगे. So we, as representatives of our nationals, we have to conduct ourselves, define the character of the august houses, and therefore our conduct withholds our respect to the underlying values and nobleness of this esteemed institution forged for our safeguarding by our four leaders. Honorable Chairman, the disruptions which happens in the Parliament act as a hurdle in this fundamental process for a smooth functioning of Parliament. I personally think, with my experience of 1 year, both Treasury and opposition have to together play a positive and constructive role so that optimum productivity of this institution is maintained. I take this historic opportunity to pay homage to stalwarts like my elder brother, Shri Arun Jaitley ji, my elder dearest sister who given me love as a brother for 25 years, Shrimati Sushma Swaraj ji, and we pray for the long life of stalwart Dr. Manmohan Singh ji, who is here with us despite his ill health. It was Dr. Manmohan Singh ji who brought radical changes to the economy in 91, and he had said, कुछ ऐसे भी मंजिर तारीख की नजरों में, कुछ ऐसे भी मंजिर हैं तारीख की नजरों में, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई. It is our humble invocation to every individual sitting here, both from government, treasury benches and opposition, that we all should commit to this parliament, that in the new parliament house we will ensure healthy debates, discussions, least disruptions and adjournments, and we do maximum work for the nation building. Jai Hind. Thank you. माननीय सदस्य श्रीमती ममता मोहंता. धन्यवाद आप सभी को मेरे साथ प्रणाम. मेरी पार्टी बीजू जनता दल की तरफ से इस पवित्र गृह में मुझे बोलने का मौका दिया, इसीलिए धन्यवाद देती हूँ. मेरा देश भारत धर्म, भाषा, वर्ण और जाति के दायरे में से आगे हम सभी एक हैं. हम केवल भारतीय हैं. आप सभी भारत वर्ष का इतिहास जानते हैं. भारत देश कैसे और कब स्वाधीन हुआ, कितने बलिदान, त्याग, समर्पण के बाद स्वाधीन भारत हमें हासिल हुआ. इन सभी संग्रामी व्यक्तित्व को मैं इस पवित्र गृह से नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि ज्ञापन करती हूँ. स्वाधीन भारत के सभी लोग को शासन पद्धति में रख के सुविधा देने की स्वाधीन भारत के सभी लोग को शासन पद्धति में रखकर सुविधा देने की समय में देश को संविधान की आवश्यकता पड़ी, जो सभी भारतीयों को समानता प्रदान करे. स्वाधीन प्रणेता बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर को भी इस गृह से नमन करती हूँ, जिसके कलम की ताकत से इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं भी समानता प्राप्त कर रहे हैं. 1950 जनवरी 26 को इस संविधान लागू होने के बाद गणतंत्र भारत का शुरुआत हुआ. तभी से जाति, वर्ण, धर्म, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में सभी को समान सुविधा मिला. इस संविधान के चलते हुए देश में शासन पद्धति लागू हुआ. इस प्रजातंत्र अर्थात गणतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को समान गुरुत्व दिया गया. आज हम 21 सेंचुरी में पहुंच गए. विश्व के अन्य देश के हिसाब से यहाँ का लोकतंत्र और सुदृढ़ हुआ है. एक आदिवासी महिला आज भारत देश का सबसे बड़ी पदवी महामहिम राष्ट्रपति की पदवी में अवस्थापित है. मैं एक आदिवासी जिला से आके यहाँ आप सबके सामने कुछ कह पा रही हूँ. इसी से बड़ी बात क्या है, महिला के विकास का और क्या उदाहरण दूँ. आज अगर आप कहीं भी जाओ तो ज़्यादातर इलाका में महिला जिला कलेक्टर, जिला एसपी, महिला सरकारी कर्मचारी ज़्यादा पाएंगे. शिक्षा क्षेत्र में आप देखें IIT, IIM,
MBBS, UPSC सभी क्षेत्रों में महिला को दबदबा है। भारत वर्ष में 700 से ज़्यादा आदिवासी वर्ग है। भारत के 8.6% इनका संख्या है। आज के हिसाब से संख्या बढ़ गई है। देश गठन के समय से ही इस वर्ग को गुरुत्व दिया गया है। सभी राज्य आदिवासी वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास तथा उनका संस्कृति की सुरक्षा, भाषा की सुरक्षा दिया जा रहा है। उनके विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि उनकी भाषा में उन्हें शिक्षा दिया जा रहा है। लेकिन आदिवासी संप्रदाय के आंचलिक भाषा को सुरक्षा देते हुए प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना जरूरी है और संविधान के 8वें परिच्छेद में शामिल करना आवश्यकता है। शिक्षा क्षेत्रों में भारत के पावन भूमि से चांद तक का यात्रा ही सबसे बड़ी उदाहरण है। यहाँ कितने विश्वविद्यालय, वैश्विक विश्वविद्यालय, भेषज विश्वविद्यालय समेत कितने अनुष्ठान हैं। यहाँ से लाखों संख्या में विद्यार्थी निकलते हैं जो देश विदेश में भारत का नाम रोशन करते हैं। इस देश में 77% से ज़्यादा शिक्षित है, 84% से ज़्यादा महिला और 71% से ज़्यादा पुरुष शिक्षित है। और कृषि क्षेत्र की बात कहूँ तो यहाँ 60% किसान हैं जिनको हम भगवान मानते हैं, क्योंकि ये लोग हमें 2 वक्त के खाने के व्यवस्था में जुटे हैं। सरकार भी इन किसानों के लिए बहुत योजना बनाए हैं। प्रति वर्ष स्वतंत्र बजट किया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बदलाव आया है। सभी रोग का इलाज तुरंत हो पा रहा है। गमनागमन, शिल्प, टेक्नोलॉजी, विज्ञान क्षेत्रों में हम बहुत आगे हैं। आज हमारा देश बहुत आगे है। इन नए संसद गृह से भारत वर्ष का नया इतिहास लिखा जाएगा। सबको बधाई देकर मेरा वक्तव्य रखती हूँ। नमस्कार। डॉक्टर अमर पटनायक। Sometimes it is very good to catch someone off guard. Then the productivity and contribution is more genuine and authentic. Okay. Go ahead. Thank you, sir. Thank you, Chairman, sir. So it's actually indeed a privilege for me to be present here, speaking about 75 years of Parliament, of the largest and one of the most diverse democracies of the world. It's no mean feat, sir, that parliamentary democracy has flourished in this country because of this Parliament. What is currently happening or is about to happen is that we would be moving in a symbolic fashion from old to the new, from new to the aspirational, and from a democracy which was marked by bills and acts which laid the foundation, or which will be the foundation for several such new bills and acts in the future in the new building. Sir, I would like to speak about a speech which Dr. Ambedkar made in the Law College of University of Delhi way back in 1948. He says, there could be no doubt that one of the countries which could boast of a great ancient civilization was India. It had parliamentary institutions when people of Europe were mere nomads. It is not that India did not know what is democracy. There was a time when India was studded with republics, and even where there were monarchies, they were either elected or limited. It is not that India did not know parliaments or parliamentary procedure. A study of the Vinaya Pitaka and the Buddhist Bhikshu Sanghas discloses that not only there were parliaments, for the Sanghas were nothing but parliaments, but the Sanghas knew and observed all the rules of parliamentary procedure known to modern times. So I would concur with what other members were referring to say that democracy did not really originate in Greece, but it originated many years before in this particular land. So if we are talking about parliament,
I would like to think that since we knew about the parliamentary functioning for a long time, and since we are talking about the Constituent Assembly, the Constituent Assembly gave us the Constitution. But it is the Parliament that helps to make the Constitution a living document by the process of amendments. And that is how each one has enabled and strengthened the other. And these amendments have actually made the Parliament, made the functioning of the Parliament closer to the socio-economic and political reality of each of the times, the entire history of this particular 75 years. So the role of Parliament, in a sense, anywhere in the world, would be fourfold. So one, to make laws, which will be evolving with the times. Second, to pass the budget. Third, to raise national, state and local issues. And number four, to hold the executive to account by various procedures of question and answer and committees and PSC and COPO and other such matters. Now, if we talk about the first and the foremost duty of Parliament, that is to make laws, I know that the Parliament has made several laws. There are more than 100 amendments which have been passed, but I would like to concentrate on a few. And those are, the first one, on the center-state relations. So the Parliament, right from the time the Constituent Assembly debates have taken place, has been cognizant of the fact that the states have a very important role to play in this in democracy. In fact, Renuka Ray, she was a member of the Constituent Assembly, while agreeing with Pandit Kunjru, she says it is necessary that the centre should be in a position to see that provinces do not fall behind in regard to the minimum standards of development. But agreeing with Pandit Kunjru, it is also not possible for a province to administer its responsibilities in an adequate manner if its financial position is unstable or uncertain. Therefore, the Parliament's job is threefold. One, legislative relations, administrative relations, and financial relations. While on the first two fronts, I think there has not been much divergence except occasional allegations of centre legislating on the state list, the problem has been the financial relations, the devolution of funds. And I think this is where our Chief Minister, my leader, Honorable Naveen Patnaik, has always been saying that the cess and surcharge which comes to the central kitty should be made a part of the divisible pool. I think this is what we have to look forward in the next 25 years to be happening, to make the states actually financially independent and financially sustainable to take the entire goal of the nation forward. The second aspect that I would like to talk about is on the issue of women, sir. So on the issue of women, the Parliament has passed several landmark legislations, and many of them have already been spoken about here. One is the Hindu Marriage Act. It removed polygamy, marriage of a maiden and that of a widow, the registration of Hindu marriage, the divorce, the Hindu Succession Act, which is very significant because it gave property rights to women, the Hindu Succession Amendment Act, Child Marriage Act, and several such acts relating to women. But I think it stopped short of one particular last legislation, and that is reservation for women in the parliaments and the assemblies. And that, you know, sir, our leader, Honorable Naveen Patnaik, has been taking it forward for a long period of time, sent emissaries to all political parties. We have spoken here all the time to bring this legislation so that women, the gender parity and the gender equity, the theme reaches its final conclusion by this parliament, whether here or in the new building. And the last point, sir, that I would like to talk about is environmental constitutionalism. Sir, this is the Parliament which has passed most of the environmental laws, starting with Air Pollution Act, Prevention of Air Pollution, Prevention of Water Pollution, Environmental Protection Act. Several such laws have been passed, and that is how the Parliament has responded to the existential crisis that is facing this world at large, which is happening because of climate change. I think the Parliament has responded very well, but there are two gaps which probably could be brought in, and that is how the Parliament of India would have responded to the world, and that is to bring in a legislation to ensure that net zero is reached in a fixed period of time, and incentives are given for proper environmental response. So last point
our parliament, while we transition from here to that building, would also mark a transition in the way the Parliament of India is responding to technology, sir. So we are moving from a physical, more of a physical parliament to a parliament which is both physical and digital, Sansad, sir. It will be it is not yet hybrid, but that will be the way forward, sir. So I think with this, I would end my speech. Thank you so much for giving me these opportunities. Well, you are very well audited. That's your background. Sri Tiruchi Shiva. Thank you, Chairman, sir. Sir. Thank you, Chairman, sir. Sir, called as a special session, sir. We are still not aware of the business to be transacted in the remaining 4 days. A shock or surprise may be awaited. We'll have a business advisory committee. Sir? And we'll have a business advisory committee, sir, tomorrow, and you'll be enlightened. As of now, and for tomorrow, you know everything. Okay, sir. Go ahead. As of now, I am telling. So a shock or surprise or nothing is awaiting, and we are also awaiting. Sir, we have completed 75 glorious years of independence and 72 successful years of journey of the Parliament. Sir, this milestone makes it important to recall the hopes, the ideals we have cherished, we have accomplished in this Parliament, fulfilling those visions of the people who fought for freedom and those who drafted the Constitution. Sir, at the outset, I would like to pay my tributes to those who laid down their lives for our freedom, the independence which we are enjoying. Starting from Pulitevan, Veerabande Kattapomman, Marudu Brothers, Velu Nachiyar, Kuyili, and Tilakar, Gokhale, Mahatma Gandhi, Nehru, Sardar Patel, VOC, and unsung heroes and unsung heroines, which is very, very important, sir. Sir, I think this is the right time to tell that. In a freedom struggle in Tamil Nadu, many women participated with involvement. One lady participated with a 1-year child in her hand. And when the police attempted to disperse the crowd, they opened fire. And when the crowd dispersed, she fell in a place. The flag which she was holding was in another place. The child fell in another place. And the bullet that was fired hit the infant, and the child died, sir. A child who knows nothing sacrificed his life, and that mother of the child named Kaliammal, she didn't hesitate. She again took the flag and marched on. So many unsung heroines or unsung heroes who have to be recollected at this very proud moment. So democracy is a popular sovereignty. The concept of this popular sovereignty is attaining its completion by way of the functioning of the Parliament. Sir, in post the first Indian general election in 1952, the Manchester Guardian commented, parliamentary institutions have not had a very good time in Asia. All that is happening in Asia throws a spotlight on the Parliament in Delhi as the one institution of the kind which is working in an exemplary way. So there are two salient features which has brought India to as a focus, as a largest democracy. One is our constitution and another is the Parliament. Sir, Thomas Jefferson, the architect of America, once said that no constitution will survive the test of time more than 20 years. But ours is very vibrant even after 72 years because of the amending provisions. We have changed to time. And ours is not only the longest, and it has been discussed with a very long period of nearly 3 years. Sir, democracy, when it came into existence, some people say Greece, some people say somewhere else, but we are the predecessors, we are the foreigners in everything. For example, in Tamil Nadu, sir, early Chola period, that was in 2nd, 3rd century, some excavations near Chennai, Uttarameru, brought out the fact that there was a Kudavoli system, that is a earthen part,
in which people will write on the palm leaves their choice of candidate and would deposit in that, and a child would pick up and that person will be the sarpanch of that area. So this democracy has been in India for more than 2000 years, that too from the southern end, sir. Sir, coming to the parliament. Sir, sentiments are not attached only to humans, of course to buildings too. I can recollect many things. And even if you move to a rich looking new parliament, sir, I think you or I, many of us would visit this parliament and especially the central hall. How can we forget that, sir? How many things have happened which is in history? Sir, the foundation stone for this parliament was laid in February 1921 by Duke of Connaught. And it was inaugurated by Viceroy Irwin in 1927. 6 years it took place. Sir, we should be very happy to note that the buildings were designed by Sir Herbert Bhaskar along with Edwin Llewellyn, architects of the new imperial capital. That is not the issue, sir. What I would like to highlight here is the sandstone columns in our parliament is a state of the art. And it is said that 2,500 stone cutters have been employed to design the top of the parliament, and almost it took so many years. 2,500 stone cutters and masons were employed to shape the marble there. And the central hall, sir, originally it was designated to be a library. Sir, you know very well everything. And later the Constituent Assembly sat there for 4 years, from 46 to 50. And after that, sir, it's a surprise that Supreme Court had its sittings here in the Central Hall, till it migrated to 1958 in the present building. 1958 உச்ச நீதிமன்றம் இப்போது இருக்கிற கட்டடத்திற்கு நகர்வதற்கு முன் இந்த பாராளுமன்ற கட்டடத்தின் மைய ஹாலில் செயல்பட்டு வந்தது. And thereafter in 2001, there was a terrorist attack in the parliament which was to foil our freedom and a challenge to democracy. But this parliament... பகத் சிங் அவருடைய கூட்டாளிகளோடு இங்கே பாராளுமன்றத்தில் குண்டு வீசியதாக சம்பவம் உண்டு. அது தேச விடுதலைக்காக செய்யப்பட்டது. ஆனால் 2001 இங்கே தீவிரவாதிகளின் தாக்குதல் நடைபெற்றது. ஆனால் அது தேசத்திற்கு எதிரானது. நான் இந்த கட்டிடத்தில் 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இருந்திருக்கிறேன். இந்த உலகத்தின் எந்த ஒரு இடத்தையும் விட நான் இந்த பாராளுமன்றத்தை மிகவும் விரும்புகிறேன். நாங்கள் எங்கள் மக்களின் எண்ணங்களை இங்கே சொல்கிறோம். So this is it. This is the setup of our parliament. We make the government accountable. And this way we have worked a lot and have contributed, and we are setting a trend to the whole world, sir. And this central hall has seen so many. Again, sir, you know very well, it starts from Richard Nixon, then Eisenhower, then Khrushchev, sir. Many have come. Khrushchev, sir, Margaret Thatcher. இந்த பாராளுமன்ற மைய ஹாலில் ரிச்சர்ட் நிக்சன், ஐசனோவர் போன்ற பல தலைவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். குருசேவ் அவர்கள் வந்திருக்கிறார். And people like you, sir, as vice presidents, what all they have done, sir, all these are remedies. So what's your point, sir? Sir, I am pricing about this building. When we are celebrating 75 years of independence, sir, I have to exalt the building, sir, the parliament. It's not just a building, sir. How many laws? See, in the first 2 terms of this parliament, 1952 and 57, it's only 700 laws have been enacted in this parliament. 700 laws. And moreover, இந்த பாராளுமன்றத்தின் முதல் 2 till 67, the legacy of the freedom struggle continued by Congress. பாராளுமன்றங்களில் 700 சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டன. The socialists as well as the culturally conservative Jansen. You are getting sentimental beyond sentiment. Sir, what is liberal, focusing on party, and sir,
After the DMK entered into the parliament, the doors were open for the regional parties. In a திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் பாராளுமன்றத்தில் நுழைந்த பிறகு மாநில கட்சிகளுக்கு இங்கே only after DMK came, இடம் our first ஏற்பட்டது. leader Anna, how his voice echoed in this upper house, sir, எங்களுடைய தலைவர் in the annals of history. அண்ணாதுரை அவர்கள் இந்த பாராளுமன்றத்தில் பேசியதெல்லாம் இன்னும் இங்கே இருக்கிறது. Dr. Ambedkar, Lal Bahadur Shastri, பண்டிட் நேரு, அம்பேத்கர், லால் பகதூர் சாஸ்திரி, கிருபாலினி, மது தண்டவதே, வாஜ்பாயி, அத்வானி, ராம் மனோகர் லோகியா, அண்ணாதுரை, முரசொலி மாறன் his performance in Doha conference is still a history. போன்றவர்கள் இங்கேதான் இந்த பாராளுமன்றத்தில் பணிபுரிந்தார்கள். I think I have some time. No, what I am doing is that the main opposition party, their entire time had been taken by the Honorable LOP. But I would still accommodate some of them, given their huge experience. That being the situation, I am rationally, uniformly curtailing time, more of the ruling party, but of others also. So please cooperate with me. Sir, I could hear, though I was not there, the Tryst with Destiny speech of Pandit Nehru. The Tryst with Destiny, the speech delivered by Pandit Nehru at the stroke of the midnight hour, sir. No, what I said was that we had a tryst with destiny. Sir? We had tryst with destiny in 15th August to 1947. Yes, sir. Long years Again, the ago, parliament we had a met here at midnight, rolling out a GST regime. When I was the whole saying, world sleeps, India after a gap of 70 will years. awake to life and freedom, sir. He started his speech. Sir, I had the privilege of being here during the golden jubilee of the independence, sir. And in the central hall, we heard the speeches of Mahatma Gandhi and Netaji Subhash Chandra Bose. And that's a very green memory. So also these speeches, sir. பாராளுமன்றத்தின் பொன்விழா ஆண்டின் போது இந்த மைய ஹாலில் நான் இருந்தேன். அப்போது மகாத்மா காந்தி, சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஆகியோரின் பேச்சுக்களை எல்லாம் நான் கேட்டேன். Because this is the right time when we are speaking about constitution, we have to preserve also. So I have to quote only two things, one of Ambedkar's and another of Anna. பாராளுமன்றத்தை பாதுகாக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம். Dr. Ambedkar. டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் சொன்னதையும் அண்ணா அவர்கள் சொன்னதையும் இங்கே நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். இந்த அரசியல் சட்டத்தை அமல்படுத்துபவர்கள் சரியாக இல்லை என்றால் அது மிகவும் மோசமானதாக இருக்கும். ஆனால் இந்த சட்டத்தை அமல்படுத்துபவர்கள் நல்லவர்களாக இருந்தால் அது நல்ல சட்டமாக இருக்கும். The factors on which the working of those organs of the state depends are the people and the political parties. They will set up as their instruments to carry out their wishes and their politics. Climax is, sir, if I find the constitution misused, I shall be the first to burn it. இந்த அரசியல் சட்டம் Sir, it was said by none other than Dr. தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டால் நான் அதனை எரிக்கின்ற முதல் மனிதனாக இருப்பேன் என்று அம்பேத்கர் அவர்கள் சொன்னார். He congratulated everyone, those who supported and those who dissented. The proceedings of this Constituent Assembly would have been very dull if all members had yielded to the rule of party discipline. Party discipline in all its rigidity would have converted this assembly into a gathering of yes men. So he says that, he goes on to thank all those who dissented also. It has a relevance, sir. It has a relevance. All I can say, Everything has a relevance, sir. all I can say, Dr. Ambedkar had been very prophetic. Very? Yes, very, very Yes. prophetic. Yes. Yes. I wish That's why I quote, people sir. sitting in this house would be in a position to take a call while being here. That's something which has eluded us. Two things I quoted very much, sir, here. However, a constitution may be good, if those who are implementing it are not good, it won't prove to be bad, number one. And second, he has said if it is misused, he will be number one to blame. Sir, and our late leader Anna, very important, sir, he entered into this parliament and said, I am from the Dravidian stock,
have something distinct and different. அண்ணா இந்த பாராளுமன்றத்திற்குள் நுழைந்து நான் திராவிட ஸ்டாக்கிலிருந்து வருகிறேன் என்று சொன்னார். Languages Amendment Act, sir. Sorry. Please conclude. Sir. Yeah. If it is uniformity, quote, Anna spoke. If it is uniformity that you are going to aim at, you are not going to achieve it, come what may. This country consists of different ethnic elements, different cultural elements, and different linguistics groups. It is only unity within this diversity that we should. இந்த நாடு பல பாரம்பரிய முறைகளையும் கலாச்சார வழக்கங்களையும் மொழி இனங்களையும் கொண்டது. இதிலே இத்தனை வேற்றுமைக்கு இடையே தான் ஒற்றுமையை பார்க்க வேண்டுமே ஒழிய ஒற்றுமை என்ற பெயரில் எதையாவது திணிக்கக்கூடாது என்று அண்ணா அவர்கள் சொன்னார். There are regional imbalances, there are regional leanings, there are linguistic leanings. All these things have got to be bridged if you want to have a sort of unity without uniformity for this country. Unquote. Thank you. Unquote, sir. Sir, this parliament has experienced very well. It has flourished all the diversities. Our social, regional, linguistic, ethnic, religion, everything that has to be maintained. That is our foremost wish, sir. Sir, இந்த பாராளுமன்றம் ரீஜனல் எண்ணங்களை எல்லாம் மாநிலங்களின் எண்ணங்களை எல்லாம் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நான் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். Give me 2 more minutes. Let me conclude, sir. Let me conclude, sir. Sir, everyone is optimistic that when we move to the new parliament, it's a new building, but our convention will be the same, our functioning will be the same. புதிய பாராளுமன்றத்திற்கு நாம் செல்லும்போது ஏற்கனவே இருந்த பழக்க வழக்கங்கள் விதிமுறைகள் எல்லாம் அப்படியே தொடரப் போகின்றது. It is a responsibility and duty of everyone. Sir, the parliament understands and establishes whoever is in the opposition will be the ruling party next time. So this is, of course, democracy. The parliament understands, it has been repeated. இப்போது எதிர்க்கட்சி வரிசையில் இருப்பவர்கள் அடுத்த தேர்தலிற்கு பிறகு ஆளுங்கட்சியாக மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. There has been a decline in the ability of the parliament to hold the government accountable with fewer days of working. Scrutiny of legislative proposals is weakening. Expansive executive control over the legislative process persists. They got frequent government resorts to ordinances than legislation. Sir, this is only our concern, sir. At least, sir, we have to be free. Because, sir, you, sir, you know very well. This is a journey. You are right. Yes, sir. But when I look within, yes, sir, I find lost opportunities. Enough opportunity was available. Why that was not availed? We have to be very rational, committed. It is good to speak these things. Yes, sir. Good to talk of sublimity. But I keep a diary. And mind you, I am in pain. Sir, I did everything in spite of perception, whatever may be around, sir, to make available platform to have people out there. Let us hope, pray, and wish that we will avail every opportunity to make a contribution in this great theatre. Sir, we repose our confidence without disturbance, without disruption. Siri as Niranjan Reddy. Sir, only last sentence. Sir, the ideals of Anna, the Dravidian policy, and sir, we are second to none in upholding the sovereignty of this country, sir. When Chinese aggression came, we gave up our policy, the individual Dravidanar. And when the Bangladesh war came, our then Chief Minister, Dr. Kalinga, gave 6 crore rupees, the first ever in the state. Siri as Niranjan Reddy, 5 minutes. Go ahead. Thank you. Thank you, Chairperson. Sir, I think it is my fortune that I finally got to address the House with you being in the chair, maybe on the last day of the House being in session. In this House. Sir, parliamentary journey of 75 years is quite a historic occasion for someone like me to have an opportunity to speak.
Sir, I regard myself as someone who is relatively inexperienced and young parliamentarian because I have only completed 1 year. Maybe I bring the advantage of fresh eyes to see the ongoings of the parliament, to maybe give some inputs of mine, sir. And sir, but I have been an old student of the Constitution. I was going to actually speak little more about it, sir, until I realized you have much more experience than me about understanding the Constitution. Sir, I think the single biggest achievement of our Constitution has been that it has managed to survive. It has managed to survive, sir, despite some challenges it faced during some emergencies. It has managed to survive despite it being tested during a long coalition period when the country came out democratically rich. Sir, it has continued to serve the country most positively. Sir, while we speak of the new Parliament House and where the functioning may shift, sir, I remind myself that we belong to the Rajya Sabha, which is a continuous house, and we are serving under a constitution which is a continuous document. So both of these are going to be permanent features, sir, that would possibly guide the functioning of our house even in the new parliament. Sir, my passion with this constitution subject started with my reading of the Constituent Assembly debates. Sir. Today's topic is Samvidhan Sabha and the Constitution working for 75 years. Sir, every time I read the Constituent Assembly debates, they are an education in itself because the quality of debates, the kind of divergent views that were expressed in a very productive manner and the symbiotic manner in which the Constitution came to be forged, sir, resulted in the most prolix Constitution and the most living and breathing Constitution, sir. So in my view, when someone says that the Indian Constitution is possibly one of the most amended Constitution with more than 100 amendments, it is a salute to the Constitution that the Constitution permits such changes to be made having regard to the diversity and the advances of the society. Sir, we have remained up to date with our Constitution. It is possibly the most brilliant legal document that the world has seen, sir. Sir, in terms of the learnings and challenges, sir, I think we have completed 72 years of being a republic. We have completed more than 75 years from the time the Constituent Assembly originally sat to prepare the Constitution document. Sir, I think when we now move into the new house with possibly new infrastructure and digital infrastructure, so we may have to be mindful of a few challenges we may have having regard to the learnings of the past. Sir, one of the challenges that I would be looking at, and I'm quite sure, sir, the government would steer us through these challenges, would be the role of states. Sir, I would like to just maybe, sir, my inexperience and my green eyes, it allows me to see something where I find that Rajya Sabha increasingly is becoming like an echo chamber of the Lok Sabha where we debate the same issues on the same footings and on the same concerns. Sir, we are a council of states. We represent the states, so I would, sir, prefer and I would suggest, but subject to correction by all the seniors here who are much more experienced than me, that when we possibly move into the new house, we look at our role as a council of states more seriously. We may have to look at representing the interests of states. So when I speak of representing the interests of states, I do not speak in terms of a divisive central versus state sphere, sir, because I also understand that the same party which is ruling the central government is in power in majority of the states. So when we speak of state subject, state interests being protected, it is not a divisive debate that I am trying to provoke, sir, but I am trying to say that it can be done in a constructive manner. So one other challenge that may be facing us, yes, sir, I am taking only 1 more minute, sir. One other challenge that we may have to encounter, sir, with the enlarged space in the new Lok Sabha, there are a few concerns about the South Indian states and the more developed states feeling that will they be in that sense outnumbered because Article 82 gives a protection up till 2026. Would that be balanced in some manner? Sir, I'm sure we'll have an opportunity to debate it, but I think it's a matter of concern which I just wanted to place for the House to consider in due course. Sir, then the last point I want to make, sir, is we are now moving towards a developed
nation, sir. We have that 25-year goal. We would want to commend the government and support it fully. As Indians, everyone wants India to be a developed country. But development, sir, in many respects, apart from the material development that we are gaining, sir, I would think that the very fact that we are preserving the constitutional ethos in its fullest form is possibly the greatest tribute to India as a democracy. And sir, the most satisfying thing for me about G20 was India calling itself as a mother of democracy, because that clearly shows the path India wants to take going forward as a democratic country. Sir, I thank you for granting me an opportunity for speaking on such an important occasion. Sri Rajiv Shukla, very brief. सबसे पहले तो ये डिबेट कराने के लिए कि जिसमें संसद भवन से आज हम सबकी विदाई हो रही, कल से नए संसद भवन में जाएंगे, तो इसकी ऐतिहासिक यादें सब उनका यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं। इस छत के नीचे एक से एक महान लोग आए, एक से एक लोग यहाँ से रह के गए, उनके भाषणों की प्रतिध्वनियाँ आज तक यहाँ गूंज रही हैं। और जब कोई आता है सर तो बड़ा उत्साह होता है, और जब जाता है तो विछोह का दुख होता है। यहाँ से जिस तरह की स्थितियाँ होती, हमने वो झेला है, दोनों स्थितियों और दोनों बार भाषण किए हैं। तो ये सर जो है एक ऐसी जगह है जो एक मिलन केंद्र है। आपकी बाहर कितनी भी शत्रुता हो, कितनी भी कटुता हो, कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन यहाँ आके सब एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, और ये लोगों को जोड़ता है। ये स्थान वो होता है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि राजनीति में, लोकतंत्र में कटुता के लिए कोई स्थान नहीं। देयर इज नो प्लेस फॉर एक्रिमोनी इन इंडियन पॉलिटिक्स। आप देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हमारी विचारधारा के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन शत्रुता दुश्मनी के स्थान नहीं होना चाहिए। यही चीजें सभी सिखाती हैं। और मैंने देखा कि एक बार सर मधुलिमा जी नए एमपी होके आए, लोकसभा में उन्होंने जोरदार भाषण पंडित नेहरू के खिलाफ दिया, और उन्होंने सुना। और जब शाम को वो घर जाने लगे तो उन्हें कहीं पता लगा ये नया जो युवा आज बोला ये कहाँ रहता है। तो उन्होंने कहा जी वो साउथ मेन्यू में रहते हैं। बोले उसके घर ले चलो। प्रधानमंत्री उनके घर पहुंच गए और उन्होंने घंटी बजाई, दरवाजा खुला तो नेहरू का व्यक्तित्व था ही। मधुलिमा जी नए एमपी आए, एकदम घबरा से गए कि आप सब कैसे यहाँ पे। प्रधानमंत्री पहुंच के उनके कहले चाय पिलाओ तुम। उनके यहाँ बैठ के जब उन्होंने कहा तो चाय पी, उनके साथ कहा कि तुम जो है ना बहुत अच्छा बोलते हो, और तुमने हाँ चाय पे डिस्कशन में उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो और जो है तुम्हारे अंदर क्षमता है। लेकिन एक चीज मैं सलाह दूंगा एक उसके नाते, एक राजनीतिक के नाते, कि तुम थोड़े फैक्ट्स आगे से करेक्ट करके लाओ। तुम्हारे ये फैक्ट्स गलत थे। तो मधुलिमा जी ने अपनी किताब में लिखा संस्मरण में, कुछ दिन के बाद से मैंने तय किया कि जब मैं संसद में बोलूंगा तो अपने तथ्यों को बिल्कुल ठीक करके बोलूंगा। और उसके बाद बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन हुए लिमा जी। इसी तरह से क्या ना कि यहाँ पे जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब मैं संसदीय कार्य मंत्री बना तो प्रणब मुखर्जी जी थे, उन्हीं के उसमें हम लोग काम करते थे, उनका बहुत अनुभव था। तो मुझे बोले कि देखो वही सबसे अच्छा पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है जो रघुराम मैया होते थे, कि जो हमेशा अपोजिशन बेंच में बैठा दिखाई दे। तुम्हारा इस चीज से जाना जाएगा कि विपक्ष के साथ तुम्हारे रिश्ते कितने अच्छे हैं। और अगर इसके लिए नहीं जाने जाओगे कि तुम बैठ के सत्ता पक्ष की तरफ क्या कर रहे हो, तो ये सब चीजें संसद को उसमें देखने को सीखने को मिलती हैं। ये स्थान सर सेंट्रल हॉल जैसी चीज का प्रतीक है। कितनी भी शत्रुता हो, आमने सामने पड़ जाते हैं, बैठ के चाय कॉफी पी लेते हैं, वहां से बात खुल जाती है और आपस में मेल जोल हो जाता है। तो ये संविधान भी जो यहाँ पे बना वो हर प्रधानमंत्री का योगदान है, चाहे नेहरू जी का हो, चाहे शास्त्री जी का हो, चाहे मोरारजी देसाई का हो, चाहे जो है इंदिरा जी का हो, चाहे राजीव जी का हो, चाहे चौधरी चरण सिंह का हो, चाहे नरसिम्हा राव जी का हो, चाहे देवगौड़ा जी का हो, गुजराल साहब का हो, अटल जी का हो, मनमोहन सिंह जी का हो, और अब मोदी जी का। सब जो है आते हैं, सब काम करते हैं। तो ये सब जो है हमें आपस के यही संकल्प लेना चाहिए। आज के नए भवन में जा रहे हैं तो हम ये मन बदलें, दिल बदलें। जैसे अटल जी ने कहा था कि जो है ये ऐसी सत्ता आती हो जाती हैं, पार्टियां बनती बिगड़ती हैं, लेकिन जो है मन मुटाव नहीं होता। दिल जो है हम लोगों के उसी तरह रहने चाहिए, आपस में मिलजुल करके। और विपक्ष के पास है क्या सर? डिप्टी चेयरमैन सर, विपक्ष के पास क्या है? सिर्फ संसद में बोलने के लिए। उसके पास न ऑफिस, न दफ्तर है, न ऑर्डर करने के लिए फाइल है, कुछ तो नहीं है। सिर्फ अपनी बात कह सकता। अगर वो बात कहने का भी अवसर विपक्ष को ना मिले तो फिर विपक्ष के पास रह क्या गया? तो ये जो है संसद में ही होना चाहिए कि नई बिल्डिंग में नए बड़े दिल के साथ जाएं, कटुता छोड़ें,
शत्रुता छोड़ें, हैं, मिलजुल के और काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। 1 मिनट सिर्फ लास्ट मेरा है। और परिवार की तरह रहे, क्योंकि दुश्मनी 1 कदम 2 कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे, उससे क्या फायदा। राजनीति में दुश्मनी की तो कोई गुंजाइश होती नहीं, और लोग तो लगे रहते हैं चारों तरफ लकड़हारे हैं, फिर भी पेड़ कहाँ हरे हैं। तो यहाँ लोग जुटे रहते हैं, यहाँ पे कहाँ वो ये करके, और जो भी आता है चाहे हम इधर रहें चाहे उधर रहें, सबको एहसास होना चाहिए कि जो है ना कि शोहरत की बुलंदी भी एक पल का तमाशा है, जिस साग पे बैठे हो टूट भी सकती है। ये सब एहसास हमें रहने चाहिए। तो बस जो संकल्प है नई संसद में जो हम जा रहे हैं तो उसका ही होना चाहिए। मैं उसको स्वागत करते हुए यही कहूँगा कि वहाँ जाके हम अपने मन बदलें, दिल बदल के बैठें, और दूसरी चीज वहाँ पे आके हम गरीब कल्याण के लिए काम करें, महंगाई पर काबू करें, युवाओं को रोजगार दें, सबको न्याय दें। एक और बात कहूँगा कि जुडिशियल रिफॉर्म्स आनी चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स अभी तक नहीं आए, वो काम नई संसद घुमाना चाहिए। राजीव जी, अनेक और वक्ता हैं, प्लीज। और आपके माध्यम से इस बिल्डिंग का उपयोग क्या हो, ये ऐतिहासिक बिल्डिंग, यहाँ सब कुछ हुआ, सबने बताया, लेकिन इस बिल्डिंग का उपयोग क्या होगा, इसके उपयोग पे भी सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी ऐतिहासिक धरोहर, इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल होना चाहिए, व्हाइट एलिफेंट बन के न रह जाए। धन्यवाद। संसदीय कार्य के लिए किसी न किसी कार्य, धन्यवाद माननीय राजीव जी, धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय फौजिया खान जी, माननीय फौजिया खान। सर, ये लोग नहीं हैं। जिस इमारत में हम आज जिसको अलविदा करने जा रहे हैं सर, ये इमारत सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये हमारे संसदीय लोकतंत्र का मंदिर है सर। ये हमारे संसदीय परंपराओं का खजाना है, ये हमारे प्यारे भारत के सपनों का गुलिस्तान है सर, जिस इमारत को आज हम अलविदा कह रहे हैं। सर, द सोल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी dwells here. It is through this parliament that India has lived by our constitution. Sir, Constituent Assembly में 15 महिला सदस्य थे, उनमें से एक महिला सदस्य दक्षिणयानी वेलियुंदन, इन्होंने कहा था, a Constituent Assembly not only frames a constitution but also gives the people a new framework of life. Sir, it is by this framework of life that we are living in this parliament. This is certainly, sir, not like an old faded garment which we discard and it is replaced by a glittering attire. This institution has a history. It has sanctity. The soul of democracy, sir, is important. डर ये है कि कहीं सर जब हम अपने इमारत का शरीर बदलने जा रहे हैं तो कहीं लोकतंत्र की आत्मा यही न रह जाए सर, ये डर है। The Constitution of India came into force on 26 January 1950. The first general elections under the new constitution were held during the year 1951 and 52, and the first elected parliament came into existence in April 1952, sir. Since then, this parliament has been the custodian of democracy. Sir, this has been the custodian of the dreams and aspirations of the people of India. This has been the custodian of the rights of men and women and children, sir. This has been the custodian of equality and justice. Several prime ministers have led this country. Several prime ministers have led this glorious nation, sir. Their vision, their contribution has made India grow like a 75-floor skyscraper. We are a skyscraper now. But that foundation, sir, is very, very important. And this foundation was laid by Shri Jawaharlal Nehru, who was 16 years Prime Minister of India, who has been called the father of modern India, sir, who carried forward the noble ideals of Mahatma Gandhi and laid the foundation of socialist, secular values and communal harmony. Sir, we cannot forget, sir, that it was his vision of modern India
and his decisions of starting IITs, IIMs. Madam, please conclude, madam. Sir, it's over. Yes, 3 to 4 minutes. जो others में 3 to 4 minutes, please. All right, sir. Sir, I will say that coming back to the context of the present times, I will say many prime ministers have led this country. Rajiv Gandhi ji has brought about the IT revolution, sir. He has brought reservation for women in the local self-government. There are so many decisions taken. Indira Gandhi was a prime minister who broke Pakistan into two. वो Iron Lady जिसकी वजह से पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए हैं, sir. ऐसे Sir, please give me a minute at least. Please. It's already 4 minutes, madam. Please give me a minute, sir. This has been the time which has been allocated here. 3 to 4 minutes, please. Please cooperate, please. Should I conclude or should I please stop? Conclude. Please conclude. Okay, sir. Last में इतना ही कहूँगी कि आज हम मन की बात कर रहे हैं. आज सरकार मन की बात करती है, लोग सरकार के मन की बात करते हैं. सर, लेकिन हमारे जो तिरंगे के रंग है, आज वो सरकार को नजर नहीं आ रहे हैं. सर, जो 3 रंग है वो नहीं दिख रहे हैं. शायद कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी हो गई है, क्योंकि सर ये कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी आज जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं, जो सीबीआई है, ईडी है, हमारे जो अलग अलग ऑटोनमस एजेंसीज है, आज उनको एक ही रंग नजर आ रहा है. सर, मैडम, इट्स ऑलरेडी 5 minutes. 3 मिनट के बजाय 5 मिनट आप बोली. थैंक यू. डॉक्टर रामगोपाल यादव जी, प्लीज. को हिट करने को लगे तो श्रीमान, समय तो है नहीं, टॉपिक ऐसा है जिस पे पूरे दिन बोला जा सकता है, लेकिन बहुत जो लिमिटेड टाइम होगा 2-3 मिनट का, मैं उसमें ही अपनी बात खत्म करूँगा. हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे, यात्रा यही है. यात्रा की बिगिनिंग होती है, यहाँ से शुरू की थी, कहाँ पहुँचे, अभी ख़त्म नहीं हुई है. नेहरू जी से चले, मोदी जी तक आ गए, आगे कहाँ पहुँचेंगे वो तो आगे की बात है. मैं 2-3-4 उदाहरण दूंगा. ये ज्ञान देने के लिए आज खड़ा नहीं हूं. एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, इलाहाबाद गए. समाजवादी युवजन सभा के लोग जनेश्वर मिश्र, मोहन सिंह, ब्रजभूषण तिवारी के नेतृत्व में उन्होंने काले झंडे दिखाए थे. नेहरू जी ने अपनी गाड़ी रुकवाई, उतर के आए, बोले इन लड़कों को बुलाओ, और पूछा कि भाई क्यों काले झंडे दिखा रहे. लड़कों ने कहा कि हमारे यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ा दी और हॉस्टल की फीस बढ़ा दी. हम गरीब लड़के आसपास के गांव के जहाँ रहते हैं, हॉस्टल में कोई पढ़ने की स्थिति में नहीं. नेहरू जी ने तब सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन पंडित जी तो वहाँ के लिए कह ही सकते, तो कोई बात नहीं. नेहरू जी ने कहा कि भाई वाइस चांसलर को बुलाओ. बीसी से कहा कि आपने फीस क्यों बढ़ा दी. कल तक ये आदेश वापस हो जाना चाहिए. आदेश वापस हो. एक बार जनेश्वर जी को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बाहर निकाल दिया, एडमिशन दोबारा ले नहीं रहे. पंडित कमलापत त्रिपाठी उत्तर प्रदेश से शिक्षा मंत्री थे. पंडित जी के पास लड़के गए तो उन्होंने बीसी से कहा कि इसे दाखिला दीजिए, कि नहीं ये लड़का आंदोलन बहुत करता है. तो पंडित कमलापत त्रिपाठी ने कहा कि आंदोलन नहीं करेंगे तो नेता कैसे निकलेंगे इस यूनिवर्सिटी से, और दाखिला किया. फिर जनेश्वर जी इस देश के कई मंत्रालयों के मंत्री भी रहे. मैं कहना ये चाहता हूं कि उस अब 300 दिन से ज्यादा से लड़के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अनशन किए हुए हैं कि स्टूडेंट यूनियन का गठन होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए. 300 दिन से ज्यादा हो गए, बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं. अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में होने जा रहे हैं स्टूडेंट यूनियन के चुनाव, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है प्रयागराज यूनिवर्सिटी, उसमें नहीं करने जा रहे. और 2 उदाहरण और देंगे, रूपाला साहब नाराज मत होना. पूर्वांचल उसका एक्सप्रेस का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री जी गए. हमारे मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने के लिए खड़े हुए थे. तो स्वाभाविक गाड़ी आगे चली गई, हमारा मुख्यमंत्री पैदल पीछे पीछे चला. तो कब तक चलता रहा.
कोई केयर करता है? नेहरू जी लड़कों के लिए खड़े हो जाते, लेकिन प्रधानमंत्री गाड़ी मुख्यमंत्री के लिए नहीं खड़ी हो। तो आपके यहाँ क्या हुआ गुजरात में? उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद अगले दिन ही या दूसरे दिन गुजरात में प्रधानमंत्री का रोड शो था। सारे देश ने देखा कि नहीं, आपके मुख्यमंत्री खड़े हुए तो एसपीजी ने साइड करके चला गया, हटा दिया और सीधे गाड़ी चली गई कारवां, मुख्यमंत्री खड़े रह गए। तो एक हम चले वहां से थे और पहुंच गए यहां। इसलिए अब विचार कीजिए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को कायम रखना है कि नहीं रखना है। नए सदन में जा रहे हैं, इसमें तो बहुत बड़े बड़े लोग रहे, बहुत बड़े मन के लोग रहे, बहुत उच्च कोटि की यहाँ बहसें हमेशा हुई हैं। इसने देश को बहुत कुछ दिया। संविधान सभा में तो हमारा लोगों ने कहा ही, आप सब जानते हैं कि दुनिया का जब बना तो ये सर्वश्रेष्ठ संविधान था। क्या हम उस संविधान को ठीक तरीके से रख सके, उसमें कुछ जोड़ सके? सिर्फ रोजाना घटाने का काम कर रहे हैं। अगर हम सत्ता में बैठे हुए लोग देश के हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखेंगे तो काम नहीं चल सकता है। कानून बनता है कुछ चीजों को रोकने के लिए। कानून सारे देश की जनता को आतंकित करने के लिए नहीं बनाया जाता है। ऐसे ऐसे कानून बने, अपराधियों पर लगना चाहिए, आर्थिक अपराधियों पर लगना चाहिए, लेकिन कहीं व्याख्या नहीं है जिस पे चाहें, जिसको चाहें उस पर पुलिस जाके पकड़ लेगी, ईडी पहुंच जाएगी, ईडी पहुंच जाएगी। क्या ये संविधान की मंशा संविधान निर्माताओं की इस तरह के कानून बनाने की रही थी? कभी नहीं रही होगी। बहुत डेमोक्रेट थे और सारे लोग थे, और इस संसद में बैठकर भी इस तरह के कानून नहीं बने। कोटा बना, टाडा बना, सब बने, लेकिन वापस हुए कि नहीं हुए? अटल बिहारी वाजपेयी बड़े आदमी थे, अडवाणी जी थे, या उस सदन में इंद्रजीत गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी से लेके बहुत बड़े बड़े लोग थे विपक्ष में, डॉक्टर लोहिया रहे और पहले रहे। संविधान सभा में तो थे ही सारी इंटेलेक्चुअल क्रीम देश की, लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़े लोग रहे, अच्छे कानून बने। कल यहाँ से आपके कम्युनिस्ट पार्टी के हिरेन मुखर्जी, यहाँ भूपेश गुप्ता, तो जाने कौन कौन रहे, हर क्षेत्र के लोग रहे, बहुत बड़े लोग रहे। कभी इस तरह के कानून फ्रेम नहीं हुए, बस मैं खत्म कर रहा हूं, कभी इस तरह के कानून फ्रेम नहीं हुए कि हम जिन कानूनों से आम लोग डरने लगे। आम लोग जब कानून से डरने लगे तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक चीज होती है। इस सदन में, इस संसद में मैं 30 साल से ज्यादा रहा, लगाव तो है ही। अब कल दूसरे में चले जाएंगे। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि नए संसद भवन में जो भी आगे चल के नए लोग आए, उनमें से कुछ बड़े लोग पैदा हों और देश के संविधान को, देश की व्यवस्था को ठीक रास्ते पर ले चलें। थैंक यू सर। धन्यवाद। आपका वही लगाव वहां भी रहेगा, मुझे उम्मीद है। डॉक्टर सस्मित पात्रा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक विशेष दिन है, और वो दिन जब ये सदन आखिरी बार बैठ रहा है इस बिल्डिंग में, और 24 घंटे बाद इस बिल्डिंग की लाइट्स बंद हो जाएंगी, और 75 साल का जो काम हुआ है वो आगे चलता रहेगा नए बिल्डिंग में। मैं अपना वक्तव्य, क्योंकि बहुत कम समय है, 3 मिनट है, अपना वक्तव्य जो है हमारे देश के जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं, संविधान सभा के सारे मेंबर्स जो थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को खड़ा किया, उन सबको मैं नमन करते हुए अपना वक्तव्य शुरू करता हूं। मान्यवर, 75 साल और 3 मिनट वो करना बहुत मुश्किल है, बट मेरे सामने मेरे 2 वक्ता ऑलरेडी मेरी पार्टी के बोल चुके हैं। 75 साल में बहुत कुछ हुआ है, और बोलना शुरू किया जाए तो खत्म होने का नाम न लेगा। मगर 75 साल में जो चीज कर सके थे, एक चीज छूट गया मान्यवर। इस सदन में एक वो चीज छूट गई है जो अगर शायद हम कर जाते तो शायद पूरा लगता कि आज हम कुछ पूरा करके वापस जा रहे हैं नए सदन में, ये एहसास होता। वो क्या छूट गया मान्यवर? क्या रह गया? 1996 में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जब आया था, उसको पारित नहीं हो पाया। 1996 में आया, 1998 में आया, 1999 में आया, 3 बार इसी पार्लियामेंट में, बट पारित नहीं हो पाया।
फिर मान्यवर ये वो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है जो मैं लेके आया हूं आपके पास, जो कि 9 मार्च 2010 को इस सदन ने पारित किया और लोकसभा में भेजा कि हमारी महिलाओं को इस देश के 33% संरक्षण मिलना चाहिए लोकसभा और विधानसभाओं में। अगर ये उस दिन पारित हो जाता तो शायद 75 साल में जितना काम किया है उन 75 सालों के साथ अगर ये जुड़ जाता तो मुकम्मल लगता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्या हम आज ये जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 9 मार्च 2010 को इस सदन ने, इस राज्यसभा ने पारित किया था और आज लंबित है, क्या उस पर हम शपथ लेके ये पढ़ लें और सरकार से दरखास्त करें कि मुकम्मल अगर करना है तो महिला संरक्षण बिल को पहले दिन नए वाले बिल्डिंग में लाइए, हम सब मिलके जो है उस दिन को स्वीकार करेंगे, स्वीकृत करेंगे, साकार करेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं महिला संरक्षण बिल को पारित करते हुए ये प्रण ले सकते हैं। अगर ये प्रण हम ले सकते हैं, ये विचार ले सकते हैं, हमारे 66 करोड़ मां और बहनें जो वहां पर देख रही हैं हमें, उनकी एक सोच है, उनकी एक मंशा है कि पिछले 27 सालों से जो लंबित है अगर उसको मुकम्मल करना है तो एक सोच, एक नए विश्वास, एक नए ऊर्जा के साथ हम चलें। क्योंकि एक छोटा सा विषय कह के अपना बात रखता हूं, समय समाप्त हो चुका है। हम तो चले थे जानिबे मंजिल, लोग आते रहे, कारवा बनता रहा, कारवा बनता रहा। मान्यवर, ये सदन 75 साल का जो एक जर्नी रहा है, ये सब एक साथ मुकम्मल होके चले हैं। मगर एक विश्वास है कि हम हमारी माओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, 66 करोड़ उस लोगों के लिए आज तक भी हमने कई प्रॉमिसेस किए हैं, उसको साकार नहीं किया है। ये वो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है जो सदन ने पास किया था, इसको नए सदन में लाइए, पारित करिए और जो विश्वास एक नई भारत का हम देना चाहते हैं, उस ऊर्जा के साथ, उस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ें और देश नहीं पूरी दुनिया में जब हम नंबर 1 बनने का काम रखते हैं, इस विश्वास को कायम करें। अगर ये करते हैं तो आने वाली पीढ़ियां सच में सोचेंगी कुछ ऐतिहासिक हुआ था। सिर्फ बिल्डिंग नहीं थी, सोच ने आता, विश्वास ने आता, एक नया आयाम था कि हम महिला संरक्षण बिल को पारित करते हुए नई ऊर्जा, नए विश्वास, नए भविष्य की तरफ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। Honorable members, this is indeed a momentous occasion, and the House has the benefit of having 2 of its members who had the occasion to be Prime Minister of this country. And it is gratifying for all of us that both of them were present. I will now give floor to Sri S.D. Dev Gowda. Kind permission. Sir, while sitting. Only few minutes. Yesterday, the leaders of all political parties were summoned by the Parliamentary Affairs Minister. In that meeting, it was chaired by our Defence Minister, Sri Rajnath Singh ji. Sir, in that meeting, some of our friends from the neighboring state on the Kaveri issue they raised. I didn't raise any objection while they were speaking. It is my misfortune for having served in this parliament for 40 years. Yesterday, all electronic media in Karnataka, it was highlighted, they was not interested to protect the interests of the Kaveri waters, which the people are suffering today. I don't want to go to the merits and demerits of what is going on, what all the people from Tamil Nadu, which was fought from last 60 years, the battle, I don't want to go back to all those things. Sir, I would like to just only one point, whatever the unity that they have been exposed. When Kharge was speaking, I was watching. Your good self said, I will give opportunity for all the members, few minutes.
Sir, lastly, I have come here with your kind permission. I only say I would like to stand by the problem that has been created by the unity of our friends. Yes, they have the majority, 40 members. We are only 26 or 28 members. There is no unity among ourselves in Karnataka. The people are suffering, but I would like, as a single member whom I have fought the battle from last 60 years. Sir, I don't want to go back to all those old histories. My friends knows this. When Manmohan Singh ji was the Prime Minister, what has happened? I do not want to take much time. Just only one word I would like to say. This quarrel will not be solved legally. If at all, if our friends wants to have some sort of smooth understanding, let all of us sit together and sort out the problem. Otherwise, things will continue and the struggle from both sides will go on, and this will not going to solve the problem. This type of fight on both sides. I only humble request, I pray all our colleagues from Tamil Nadu are, unfortunately, Karnataka is surrounded by all the projects. On one side Goa, on the other side what is Telangana, on this Almaty issue and Kaveri issue. Sir, we are the people who are suffering now. I only pray this problem will not be solved unless we sit together, try to sort out the problem ourselves. Legal battle certainly will not going to solve this problem. We have 200 years back the issue started on Kaveri. I don't want to take much of the time. I can go on, give all the details. You have permitted me. I only say what I would like to say. I also stand by the people of Karnataka who are suffering, and I will pray all our colleagues, if they are going to sit together and solve the problem among ourselves, it will be one of the most brilliant issues, sir. I only pray all of our friends. All the rivers are surrounded. Karnataka is the worst sufferer. That's the position, sir. Sir. Only I request. I don't want to make any. It's already settled the issue. The issue has been already settled based on the Supreme Court direction. Tribunal has been ordered that Karnataka not obeyed. Karnataka not obeyed the Tribunal's order, Supreme Court's order, and we have respect on him. We have respect on the former Prime Minister Devagowda. But it is a sympathy has been created in this house. I'll come. Lot of suffering. Okay. Tamil Nadu farmers Please. You see, on this day, when we are trying to reflect, introspect, and talk out a path for way forward approach. Let 5 members of this house. Sir, I get your point. Sir, please, let 5 members of this house. Please, let them send go. it to me. Sir, Prime Minister, but our farmers. Sir, I would like to request, let 5 members of this house on both sides not belongs to either Karnataka or to Tamil Nadu. Mr. Vaiko, please. 5 members of this Would you house. please take your seat, all of you? You please delegate Take them. your seat. Let them go and see the condition, what the people are suffering, and then let them report to this house. I will accept that. Sir, let us not unnecessarily quarrel. Those people who are not concerned about this problem. Please, sir, I beg of you, the members who are not concerned, let them go and study the situation, what is there, and then report it back to the house. Honorable members, I will accept it.
This is not the way. What is it? Because of your strength, you have got 40 members, you are united, and we are divided. No. Would you please? Advantage you want to. Would you please be good enough in taking your seat? Taking your seat. Take your seat. Not going to solve Please, the problem. take your seat. Let me say. Take your seat. Take your seat. This is not going to solve the problem. If they want to go on like this, Honorable members. This is not going to solve the Honorable problem. members. And I will say. I do not wish to. I am 91. I don't know how many years I am going to survive. Only I only made an appeal. 5 members of those people who are not belongs to Karnataka or Tamil Nadu. Let them go and study the situation. Report to your good self. Sir, first you finally decide. First, we I all. The request I make. Thank you very much. We all wish. 1 second. We all wish Dev Gowdaji a very long, healthy life. And honorable members, I was carefully listening to every word which the former Prime Minister spoke. The underlying concept was that these issues need to be determined consensually. That being the situation, we must leave it at that. Shri Pramod Tiwari. माननीय सभापति जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। कल हम सब नए भवन में जाएंगे। ढेर सारी व्यक्तिगत यादें यहां से जुड़ी हैं और देश के इतिहास को देखें तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हम सब उस सदन के सदस्य हैं जिसने इस देश का गौरवशाली इतिहास रचा है राज्यसभा में। मतलब कैसे भूल सकते हैं हम इस संसद भवन को 14 और 15 अगस्त की रात में पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो भाषण, जब आजादी का उद्घोष हो रहा था तो उन्होंने कहा था जब सारी दुनिया सो रही है तो उस समय हिंदुस्तान जाग रहा है एक नया डेस्टिनी, एक नया अध्याय लिखने के लिए। ये साक्षी है उन घटनाओं का, ये साक्षी है संविधान बनाने का। मैं इस विवाद में नहीं पढ़ूंगा कि 75 साल 2 साल पहले पूरे हुए या 75 साल 2 साल बाद पूरे होंगे। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, इसके निर्माताओं को प्रणाम करते हुए कि आपने एक ऐसा संविधान दिया। इस संविधान की खूबसूरती के लिए तो मैं एक जिक्र करना चाहता हूं कि भारत का नक्शा देखें। भारत में लोकतंत्र पहले दिन से जिंदा है, 15 अगस्त 1947 से आज तक जिंदा है। एक क्षण के लिए यहां लोकतंत्र कभी समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन जरा भारत का नक्शा उठा के देख लीजिए, बगल में नेपाल में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, चीन में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ। तो ये संविधान निर्माताओं ने जो बनाया था, ये उसकी खूबसूरती है कि आज तक हमारा जो सबसे अनमोल रतन था लोकतंत्र, वो जिंदा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये दोनों सदन साक्षी हैं उस घटना के। मानव, मैं एक चीज जो कहूंगा, कुछ लोगों की आदत होती है बीच में बेतुका बोलने की, बेसुरा। रुक जाओ मानवर, मैं तो बहुत प्यार से बोल रहा था, लेकिन कुछ लोग होते हैं, अब जब ये बोल दिए तो इनको बता दूं, उस आपातकाल को संविधान के दायरे में लगाया गया था। आपने जो लगाया है उस संविधान के दायरे में नहीं, बल्कि संविधान का ताना बाना पहन के लगाया है। और आज आपातकाल जैसी। तिवारी जी, कई बार प्यार से बहुत डर लगता है। सही बात है सर, अपना अपना अनुभव। देखिए, यदि अगर हम आज के दिन राजनीतिक दायरे में रहकर बात करेंगे तो आगे का रास्ता साफ नहीं निकलेगा। सर, आज की हकीकत जब मैं यहां सुनता हूं और दुनिया के लोगों से सुनता हूं तो मुझे लगता है मैं कहां आ गया। सर, लेट अस बी प्राउड of our accomplishments. They are product of our human resource, sir, our bureaucratic system,
Sir. Our visionary leadership, where is the harm in it? मैं वही काम कर रहा था, बीच में विघ्न हो गई। आप वो नहीं कर। मैं तो तारीफ कर रहा था लोकतंत्र के निर्माताओं को, संविधान के निर्माताओं का। ठीक है सर, विघ्न कौन डालते हैं आप भी जानते हैं, हम भी डालते हैं। सर, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है सर? ये एक ऐसा चमन है जिसमें रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। हर रंग के फूल को जब खिलने दिया जाता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। मैं फिर किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, पर सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी बूटी यही थी कि यहां हर धर्म को, हर भाषा को, हर जात को फूलने फलने का अधिकार मिला था। और जब धर्म के नाम पर हुकूमतें बांटेंगी लोगों को तो लोकतंत्र पर सवालिया निशान लगेगा और जिन्होंने ये संविधान बनाया है उसके प्रति अनादर का भाव जाहिर होता है। मैं जरूर कहना चाहता हूं इस बात को कि जहां हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि आज भी हम लोकतंत्र में जिंदा हैं, आगे भी रहेंगे, चाहे जितने दौर आए आके चले जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान का लोकतंत्र कभी नहीं मिटेगा, ये मैं विश्वास पूर्वक और दावे पूर्वक कहता हूं। अनवर, जब इतिहास पढ़े तो एक लाइन में ये कह के बर्खास्त न कर दें कि 70 सालों में क्या हुआ था। अरे 1947 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता संभाली थी तो हिंदुस्तान के पास क्या था? कितने गांव में बिजली थी, कितनी हम बिजली पैदा करते थे, कै गांव में हमारा टेलीफोन सेवाएं थी, कै गांव में मानवर विकास के लिए सड़कें थी। आज अगर है तो सारे लोगों ने मिलकर काम किया है, इसलिए आज ये दौर आया हुआ है। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जब गौरवशाली इतिहास पढ़ा जाए तो प्रधानमंत्री नेहरू के किए कार्यों की सराहना के बने हिंदुस्तान का इतिहास अधूरा रहेगा। उन्होंने जो योगदान दिया, शास्त्री जी का संक्षिप्त कार्यकाल था। आपको बधाई, शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि आप याद रखेंगे कि अभी मेरा 10 मिनट बाकी। धन्यवाद। मानवर, भूल गए हो तो मैं बता दूं, मानवर शास्त्री जी का, मानिया जी, शास्त्री जी का कार्यकाल बहुत संक्षिप्त था। 18 महीने में उस शख्सियत को हमेशा हिंदुस्तान याद रखे जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तब वो हिंदुस्तान था, तब वो हिंदुस्तान था जब युद्ध रोकने के लिए 65 का हम पर PL 480 की धमकी दी गई थी, उससे भी हम निकले। मानवर, इंदिरा जी के बगैर इंडिया का इतिहास अधूरा रहेगा। अरे ये वो इंदिरा गांधी है जिसने महिला सशक्तिकरण किया, बांग्लादेश का निर्माण किया। अरे लोग तो इतिहास में कुछ पन्ने लिखते हैं, उन्होंने तो ज्योग्राफिया बदलकर दुनिया के नक्शे में जब तक बांग्लादेश रहेगा इंदिरा गांधी का नाम रहेगा। और इंदिरा गांधी की कोई ताकत तो थी, इंसानियत थी, शराफत थी, संसदीय मर्यादाएं थी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी तुलना दुर्गा मां से की थी। ये है देश का लोकतंत्र। मानवर, आज बड़ी बात होती है डिजिटल इंडिया। इसका जन्मदाता कौन था? राजीव गांधी। क्या हम उनके योगदान को भुला सकते हैं? पिछड़े वर्गों को, दलित वर्ग को, महिलाओं को अगर पंचायत राज में, नगर निकाय में आज वो मेयर के पद पे बैठी हैं, बड़े बड़े पदों पे जिला पंचायत अध्यक्ष बैठी हैं, तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी का योगदान है उसमें। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं आपसे, आज युवा आभारी है। 18 साल के नौजवान को अगर मिला है तो इन्हीं 70 वर्षों में मिला है मताधिकार। मानो मैं आगे बात बढ़ाऊं अगर तो इतना जरूर कहना चाहता हूं, PV नरसिंह राव जी ने आर्थिक उदारीकरण शुरू किया। उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने उसको परवान चढ़ाया। आज भारत की जो ताकत है ना दुनिया में, वो सपनों से नहीं आई है, इन दोनों के उदारीकरण के कारण आई है। हम इनके योगदान को नहीं भूल सकते। पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपसे, उदारीकरण का जो आज स्वरूप है वो उधारीकरण और बेचीकरण में तब्दील हो रहा है, उसे रोका जाना चाहिए। हमारा उदारीकरण और बेचीकरण के बीच में बहुत बड़ा फासला है। मानवर, मैं ये जरूर कहूंगा कि इस संविधान की तीसरी सबसे बड़ी मर्यादा है कि फेडरल स्ट्रक्चर, हाँ वही आप शुरू कर दीजिए 10 मिनट। फेडरल स्ट्रक्चर, राज्यों के मिलकर ही ये संघ बना है और इसीलिए हम यहां बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपसे
इतना विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं आपसे कि फेडरल स्ट्रक्चर को राज्यों के अधिकार के साथ खिलवाड़ न किया जाए। जो हो रहा है, चुनी हुई सरकारों को गिराते हैं आप गोवा में, चुनी हुई सरकारों को मध्य प्रदेश में गिराते हैं आप। जिस तरीके से भिन्न राज्यों में गिराई जा रही है, यह खतरनाक लक्षण है जिसका जिक्र मेरे भाई कर रहे थे। वही आपातकाल की तानाशाही जो बिना लगाए आई जा रही है। मैं सिर्फ इतना कम करना चाहता हूं, दो बात कह के मैं समाप्त कर दूंगा, सिर्फ 2 मिनट, कि एक खतरनाक बात की ओर मैं इशारा कर रहा हूं। दिल में सबको अच्छी लगेगी, मेरी 2 ही मिनट की बात थी, सबको अच्छी लगेगी, लेकिन बोलेंगे नहीं पार्टी प्रतिबद्धताओं से। पहले सांसद के अधिकार होते थे, विधायक के अधिकार होते थे, मंत्री के अधिकार होते थे, इससे लोकतंत्र की ताकत बढ़ती थी। आज इन तीनों ताकतों को, विधायिका को कमजोर किया जा रहा है। ये एक खतरनाक लक्षण है, ये उचित नहीं। हमारी सोनिया जी ने, कृपया खत्म करें, आप हम जो बात कह रही है आपको अच्छी लगेगी। सोनिया जी ने एक पत्र लिखा है 9 पॉइंट, बहुत अच्छा है, आप भी पढ़ लीजिएगा और इनको भी पढ़ा दीजिए, कह दीजिए उसको मान जाए तो 75 साल का सब कुछ पूरा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर आपको बधाई। ये कहते हुए, जो लोग लोकतंत्र को कैद करना चाहते हैं वो इंडिया आ रही है और आप जा रहे हैं, ये उद्घोष करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आपकी ताकत दिन ब दिन कमजोर हो रही है, आप समाप्त होंगे, देश अब आपको नहीं चाहता। इंडिया आएगा, इंडिया जीतेगा। माननीय सांसद करोड़ीलाल मीणा जी, माननीय सांसद करोड़ीलाल मीणा जी, माननीय सांसद करोड़ीलाल मीणा जी, देखिए दूसरा नाम लीजिए। माननीय विजय सिंह रेड्डी जी, विजय शाही रेड्डी जी। Thank you, Deputy Vice Chairperson, sir. Madam, in many ways, the parliamentary journey represents so many struggles and so many achievements and also aspirations of people of India. And I have no hesitation to refer to the struggles that I have undergone during the 75 years, more particularly the struggles relating to the 1976 represents the darkest year of our parliamentary democracy, and the Congress party was responsible for it. Sir, the 42nd Constitution Amendment was passed by the then ruling Congress party in a most controversial circumstances. This has to be taken note of, madam. If the subsequent governments had not undone the horrors that have of the 42nd Amendment, the Congress party would have passed an unsavory laws to institutionalize the emergency in the country forever. So it is because of the anomalies that they have introduced have been undone. That is the reason why we are still here and our democracy is saved. Madam, the UPA regime was marred by capitalism, corruption, policy paralysis, and decline in economic growth. This is what their achievement is. The struggles I have already explained, and their achievements I have already explained, and more particularly in relation to Andhra Pradesh, what Congress party has done during the bifurcation has to be explained. Madam, despite protests, Andhra Pradesh reorganization bill was passed in a most unruly manner, and which is a black mark for the democracy, and Andhra Pradesh hence was the biggest victim of the misuse of power by the Congress party. Madam, the live telecast of the parliamentary proceedings were cut off. A demand for the division of voting has been denied.
all Andhra member of parliaments were unfairly suspended and doors of Lok Sabha were closed. The passage of Andhra Pradesh reorganization bill was based on unscientific, irrational considerations, which has been authored by my friend Jairam Ramesh ji. Madam, the next point. You can go ahead with your comments, but I'll continue my observations. Madam, the governments may come and governments may go, but for sitting government, that is BJP government, is under an obligation to fulfill the statutory promises made by the previous government, that is Congress government, madam. Madam, the Congress party, one important point, madam, the Congress party has held the power for 50 years. 50 years out of the 75 years, and if any other party had been in place other than Congress party, I have no hesitation to say that India would have been a developed country by now, not a developing country, madam. It would have been a developed country. That is the achievement of the Congress party, insofar as democracy is concerned. This you can go ahead. The evidence of this is in front of our eyes now. Madam, the non-Congress government in the past 10 years, you have been seeing, we have been watching, and what the performance is. Madam, parliamentary productivity. Average number of sitting days per year has decreased from 120 in 1950s to roughly 70 days at present, which is really alarming, madam. Madam, I'll have to give the comparative figures. In 2022, the Indian Parliament sat for 56 days, and US Congress sat for 158 days, and British Parliament sat for 137 days, and the Canadian Parliament sat for 96 days. I request the BJP government to increase the number of sittings of the Parliament so as to make the justice to the people of this country, madam. Madam, there is youth particularly. The youth at present, the significance of youth and importance of youth is coming down slowly, and the participation in youth is also coming down. MPs in 25 to 40 age bracket has fallen from 26% in first Lok Sabha to 1 to 12% in 17th Lok Sabha, madam. Madam, welfare of backward classes. I request the government, Honorable Finance Minister is sitting here. I request the Honorable Finance Minister and also Prime Minister and BJP government to introduce reservation for BCs based on the population of BC population in this country. BCs constitute more than 50% in this country. Therefore, the reservation has to be given to the BCs based on the proportion of population. And no caste census has been conducted, and the last caste census has been done in 1931. Socio-economic population data on BCs has been released, madam. Madam, women reservation bill. The women constitute 50% in the population. YSR Congress Party, under the leadership of Jagan Mohan Reddy Garu, right from day one, since inception of the party, has been demanding reservation for women, and as of today, in the state assemblies, the percentage of women is only 8%, and in Lok Sabha it is 15%. Women, therefore, the women reservation bill has to be passed. We request the government of India to, BJP particularly, to pass the women reservation bill. Madam, in fact, even in the yesterday's meeting, yesterday all-party meeting has been held, wherein my colleague, my friend from Andhra Pradesh, MP, has vociferously raised the issue of arrest of Chandrababu Naidu. Though it is not relevant here, since he has raised the issue in the all-party meeting, and also he is going to raise the issue again on the floor of this House, I have no other option but to address this issue. Madam, Chandrababu Naidu has been arrested by the CID department of Andhra Pradesh government
on the charges of corruption in a particular case relating to Siemens India. And there is an ample evidence which has been produced to the court, and court has remanded him to judicial custody. Now that arrest has been made and the remand has been given by the judiciary and the court proceedings have started, it is for the court to decide. And court has also observed that there is a prima facie case against Chandrababu Naidu, and the court will decide the matter. Madam, it is Chandrababu Naidu who, this is the book, madam. This is the book. Chandrababu Naidu has resorted to corruption of 1,44,577 crores. This is an old book, and subsequently, this amount of corruption, the quantum of corruption has gone up to 6 lakh crore, madam. And again, madam, it is not one case or two cases against Chandrababu Naidu. There are number of cases. It is his own affidavit, madam. It is his own affidavit which has been filed before the Election Commission, wherein he has stated that there are 9 cases against him, 9 criminal cases against Chandrababu Naidu. Therefore, when he himself has declared that there are criminal cases against Chandrababu Naidu, I have no hesitation to call Chandrababu Naidu as a criminal, madam. He has been implicated in a criminal conspiracy and resorted to corruption. Therefore, he has been implicated in the corruption case, madam. One more point, madam. Madam, he has not only that. Politically, Chandrababu Naidu has backstabbed everybody. He has backstabbed BJP. He was with BJP, he has backstabbed. He was with Congress Party, he has backstabbed Congress Party. He was with communists, and he has backstabbed communists. So therefore, there is nothing wrong in calling him as backstabber, madam. And he is the king of all scams. I have no hesitation to say that he is king of all the scams. This is the fate of the democracy, and therefore this type of politicians, particularly who has ruled the state of Andhra Pradesh for a period of 14 years as a chief minister, has spoiled the state of Andhra Pradesh, and Andhra Pradesh is looking backward only because of Chandrababu Naidu, madam. Thank you very much. Thank you. Please. Shri Samir Rao. आदरणीय उपसभापति महोदया, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक विषय पर बोलने का अवसर आपने प्रदान किया है। महोदया, सांसद भवन भारत के वर्तमान और भविष्य की परिस्थितियों तथा देश की समस्याओं पर चिंतन मनन के साथ ही शासन चलाने के लिए विधान निर्माण का एक केंद्र रहा है। महोदया 1927 में बनकर तैयार हुआ संसद भवन 1947 तक ये अंग्रेजों के गुलाम में रहा था। 1947 से लेकर के आज तक यह संसद भवन आम जन के लिए होने वाली नीति का एक प्रमुख केंद्र बनकर ये काम निरंतर कर रहा है। महोदया, यह संसद भवन देश के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस संसद भवन में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की संविधान सभा की बैठकें हुई। तत्पश्चात 1950 में भारत के संविधान को इसी भवन में लागू किया गया। महोदया, संविधान लागू होने के पश्चात महामहिम राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा को मिलाकर भारतीय संसद का निर्माण किया गया। यह तीनों ही भारतीय संसदीय प्रणाली के अभिन्न अंग बनाए गए। मुझे गर्व है कि मैं इस राज्यसभा के सदस्य के रूप में इस सदन का हिस्सा बना, क्योंकि पिछले 75 वर्षों में राज्यसभा ने संसद के अस्थायी सदन के रूप में कभी भंग हुए बिना निरंतर
देश की चिंताएं ये करता रहा है। परंतु महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्यों ने पूर्व में इस सदन का बहुत सारे उपलब्धियां और बहुत सारे जो अनुभव है इन बातों को बताने का काम किया है, लेकिन मुझे लगता है मैं जो अनुभव करता हूं उसमें यह भी है कि बहुत सारे ऐसे उपलब्धियां तो हुए, यहां बहुत ऐसे विद्वान माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को यहां पर विचार किया, लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें हुए जो कि इस सदन के अंदर में यह सदन जो गवाह बना हुआ है, जो कि बहुत से सारे ऐसे गरिमाएं भी खंडित हुई है। महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि इसी प्रकार से यह जो है अगर हम कहें तो इस सदन भवन के अंदर में जो है आपातकालीन जैसी जो बातें हैं वह भी मतलब यह सदन ने देखा है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो 370 जैसे जो एक समस्या थी, अगर उन दिनों में ये नहीं रहता तो ये जम्मू कश्मीर जो है ये अलग नहीं होता। इसी प्रकार से ये लगातार ये 75 वर्षों में सदन ने अनेक उदाहरण है जो कि इस प्रकार से चीजें हुई है। मैं जनजाति मामले के विषय में भी मैं जब विचार करता हूं, देखता हूं, तो 1969 में सदन के एक माननीय तत्कालीन सदस्य स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी ने जनजाति हित के लिए एक विशेष बिल जो लाया था, वो बिल भी उस समय के कौन से ऐसे राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इस सदन के अंदर दफन हो गया। महोदया, इस प्रकार से कई ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बीच के समय में हमारे इस सदन के अंदर में भी एक अच्छे उदाहरण, अच्छे जो है अचीवमेंट जो हुए हैं, जो मैं बताना चाहता हूं कि आजाद भारत में पहली बार ये जनजातियों के विकास के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनजाति मामले का मंत्रालय का स्थापना किया और ये जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए कई प्रकार के योजनाएं हुए। महोदया, उस समय जो है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, आदिवासी बच्चों का ठीक से पढ़ाई हो, ज्ञान हो और जो है अपने बढ़े, अपने परिवार को बढ़ाए और देश के सेवा में भी वो शामिल हो, आगे बढ़े। इसलिए ऐसे जो है महत्वपूर्ण एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की स्थापना करके आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आगे बढ़ा है। निश्चित रूप से महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो है यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये जो है देश के आजादी के लड़ाई के लिए लड़ने वाले जो है उन दिनों के जो अनसंग हीरोज थे आदिवासी, उन लोग के नाम से भी जो है संग्रहालय बनाने का काम किया और जो है भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के 15 नवंबर के दिन में राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाने का यह काम प्रारंभ हुआ। देश के जनजातियों को भी सम्मान मिलने का काम इसी संसद में यह गवाह रहा है। महोदया, ये मैं बताना चाहता हूं कि जनजाति लोग जंगल पहाड़ों में रहते हैं। ये जो है FRA, CFR जैसे जो है प्रावधान किया फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत, सामुदायिक जो है वनाधिकार का यह प्रावधान जो हुआ है, आज जनजाति अपने वन क्षेत्रों के में अंदर में रह करके कैसे जो है जो नन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को संकलन करके, संकलित करके अपने जो वैल्यू एडिशन करते हुए अपने आमदनी को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी आदि आदर्श ग्राम विकास योजना करके जनजातियों के गांवों में किस प्रकार से सभी प्रकार के विकास का काम हो, इसके लिए ऐसे योजनाएं किया है। और तो और ये जो है आदि महोत्सव जैसे जो है योजनाएं करके
हमारे जनजातियों के जो वोकल फॉर लोकल जो स्थानीय उत्पाद है उसको कैसे हम ट्राइफेड के माध्यम से हम उनके आमदनी को बढ़ाएंगे और जो है आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से जो है योजनाएं प्रारंभ किया है। महोदया, कहने को बहुत है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये सदन ने इन सारे चीजों का गवाह बना है और आज हम इस सदन से कल दूसरे नए सदन पर जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि ये नए सदन में भी बहुत नए नए कीर्तिमान स्थापित हो, ऐसा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। श्री अब्दुल बहाक जी। All the praises to Almighty God for giving me a wonderful time to be here at this last moment of this last Rajya Sabha in this hall. My leader, two leaders were here in the first day of this building when it started in 1952. There's Qaid-e Millat Muhammad Ismail Sahib and B. Poker Sahib. They were in the Constituent Assembly also. So now our party also completing 75 years, Amritakal. November 16th, we are coming to Delhi to inaugurate our new office, and also to us also this is Amritakal. And this building, it is very, very dear to me also because my leaders came here first day itself in Rajya Sabha, and now I am also in Rajya Sabha. So many people predicted 75 years Indian Union Muslim League will be here. Yes, we proved that we are here, we are very much here, and we are looking after the minorities, causes, and the Dalits and what you call SC, STs. We are working heavily in our area in skill development for minorities and for Dalits and for SC, STs. Thank you very much for giving me a time of this one. Before, I think when our chairman is coming, we will get some more time. Then Karji, I only just now started. I don't know, in between the transition came. Just now I started only. So I was telling, for your information, this is a wonderful moment for me, especially personally, because my leaders came here first day. Now the last day also I am here. So I will be here till the end of the session, just to say bye-bye Rajya Sabha. Bye-bye Rajya Sabha, I will be here. Thank you very much once again for giving me the wonderful chance. Thank you all. We hope the very best in new Rajya Sabha. Thank you. Shri Narayan Das Gupta. Thank you very much, sir, for giving me this opportunity to speak on this special session on a very important subject. Sir, I would like to share that this Parliament building, which is a historical landmark that has guided India's destiny before and after independence. That is that this house, which was constructed in 1927, it was occupied originally by the Imperial Legislative Council from 2027 till 15th August 47, and after that by the Constituent Assembly till January 50, and then thereafter we are occupying this. They said this independence was achieved after sacrifice by our forefathers and leaders. And the constitution which was laid down and adopted in 1950, it has given the rights to the citizen, every citizen of this country, of liberty, of the free speech, justice, and to promote the fraternity among the citizens. And there's a lot of this development has taken place in the last 75 years. That it may be on account of agriculture, it may be on account of IT, it may be on account of that power sectors, industry sectors, and the cooperative movements that have taken place. And during this period that this country has won the
war also, that is a war of 1971 Bangladesh, and this constitution which has provided the liberty and that the rights to the citizens. I would like to say, sir, because this is a system which has been provided in the constitution, the federal system too, because that the powers has been defined between state and center. But what we have seen, because I am from the Aam Aadmi Party, which came into being in 2000, 10 years back, 2012. And after that, it has constituted 3 elections in Delhi, and every time it has formed the government also. And because this is my first tenure, even my party was the first time in this house as Rajya Sabha members. And I was nominated by our Chief Minister, Sri Arvind Kejriwal ji, and I will express thanks for that, considering me as a member of this house. Sir, every time I would like to share that in 2015, the first time when contested, and got 67 seats out of the 70 of the assembly total number of seats. It was almost 95%, which was the unprecedented victory. But what we have seen, the moment we have this our government that was, and Chief Minister took oath in February 15, in May 15, through notifications, the power which were available and given as per the Delhi State Act, they were withdrawn. I think it was a very, I will say, it is contrary to what provided under the Constitution rights, and the separate powers has been defined, both for the state and central government. And again, there was an election in February 2020. Again, there was an unprecedented victory that the Delhi people, they just voted for the Aam Aadmi Party government. And again, it was the 86% out of the 70 seats, total number of seats, that we won 62 seats. This was again, I will say, unprecedented. That was the faith and confidence expressed by the citizens of Delhi in the Aam Aadmi Party government. But what happened, sir, we have seen only in the last session that first through ordinance, the powers what were given under the Delhi State Act, they were withdrawn. Later, bill was introduced here, and it was passed. And this is total against the federal system of the country. I think this is contrary what is provided there. And what I would like to say here, that this type of attitude, this type of behavior, this type of system which is prevailing here, this should be that we should go according to what provided under the articles of the Constitution. Even there was an amendment in the Constitution articles also, besides the Delhi State Act. This is again the federal system, cooperative system of what is defined there. But what I like to say, but the way this Parliament building, this is a historical building, it has been shared by our earlier speakers, and that has guided India's destiny before and after independence. This is that because of these constitutions and the provisions, and which was laid down by the writer of this constitution, the architect of this constitution, Ambedkar. What I will say that we should go, we are going to the new building, we should go with new thoughts and with a full confidence. New positive thoughts. But we should go with a positive thought. Yes, I'm positive thought there, and the things which have taken place in the past, we should try to avoid them. With this, thank you very much, sir. Giving me the person. Shri Prakash Javadekar, not present. Shri Thambi Durai, Shri Vivek Tankha. No, he has to speak from his seat. Sorry.
And you are not on your seat. So actually, I'd given up the hope. So that's why I was sitting with Mr. Sibbal. So I'm going to be very, very short, sir. Why should a distinguished lawyer like you give up hope? No, it's a question of time, sir. You see, you wait till the judgment is pronounced. You are in a very sound company of Kapil Sibal ji. So you can't give up hope. Anyway, sir, what I'm going to say today is 6 hours is too short for a history of 75 years. The history starts with the Constituent Assembly sitting and deliberating over a document which was one of the most well-drafted document at that time, at that period of time, and continues to be so even today. Our constitution, I would say, is amongst the best in the world. UK didn't have a constitution. American constitution is a very short constitution. So this constitution served us so well. So that is why I say Parliament is the voice of the people, which it expresses through the constitution, and the Supreme Court is the voice of law. Now, the one good point is, sir, that roughly 105 constitutional amendments have happened, roughly. But in this history of 105 constitutional amendments, only one amendment has been struck down fully. That is the NJC. 6 or 7 amendments were partially struck down or clarified. So the test of law has also been good for the purposes of testing the constitutional amendments, sir. Another thing I would like to say, that it is very good to see a lot of lawyers in the constitution, sir, in the parliament, because if you see even at the time of drafting. Vivek ji, there are very distinguished lawyers here. They contribute from outside. On the floor of the House, I have analyzed their contribution is either by absence or silence. And this is a very painful scenario, and I have no difficulty in saying, because we have a distinguished legal luminary, Kapil Sibal here. Mr. Sibal knows it. On Monday and Friday, this House is not your priority. And therefore, I would particularly appeal to the fraternity to which I belonged, that please introspect and reflect. And you see, regional consideration. Secondly, there is so much legal talent in the House of a global repute, which can enlighten the Supreme Court also as to what are the jurisdictional limits in separation of powers doctrine. Fact is that distinguished senior advocates are performing outside on television channels. Coming to Dr. Singhvi, he was on a television channel, Kapilji, talking about parliamentary working. I immediately sent to the other person contribution of the gentleman for past 10 months, now it is nearly a year, what he has done. Therefore, when a message came to me that Kapil Sibal wants to make a contribution, obviously I should have not taken a second, and believing in the system as I do, and you know, precedence could have been given. I told my assistant, he looked at me like this. I said, let Mr. Kapil Sibal sit for some time. His presence here physically will send a good signal. And that applied to you also. Otherwise, make a speech and walk away. I'm so sorry, but I am spelling out my heart. Let me share that in these 75 years of glorious history, lawyers and non-lawyers, everybody has contributed in a very beautiful way, sir. And see the way all your laws, as I said, have been upheld by the Supreme Court. Out of 105 amendments to the Constitution, only one was struck down fully, that is NJC. But NJC, Supreme Court had its own views on it, so I would not call it a truly... But one thing, and let me reveal my mind. You are a member of this House. Sir.
everyone here passed that bill, only with one abstention. Lok Sabha passed it unanimously. What has happened to that? Did this august House ever concern itself with what they have done? How can you countenance a scenario like this? It is prime obligation of everyone in this House that if this House has sanctified, and by that majority, only one abstention, and Lok Sabha, total unanimity, 16 state assemblies endorsing it, and my very distinguished legal luminaries, they have to be on front foot. I await what Kapil Sibal ji would say. Go ahead, Vivek ji. So Your name signifies everything that you have. Sir, let me try and complete my speech, sir. So I'm now taking the chairman and the House to another aspect, sir. I felt that there are three issues which need your kind attention and which need the attention of this House, sir. One is that working days, a good parliament has at least 100 working days. UK has about 100, but it should be 100 plus. Our working days have been abysmally low and getting lower and lower by the year. And out of that also, I'm not a votary who supports disruption. I'm not votary. I can never be a votary of disruption because I believe in debate. But my point is, sir, that the three suggestions I'm making, that in UK there is a tradition and a law which has now been given a shape of a rule that 20 days out of 100 days are allotted to the opposition to make the agenda. That means if I have 20 days in 100 days, I can't blame the ruling party. If I want a certain agenda to be discussed, it has to be discussed. And out of that 20 days, 17 days are given to the largest party, but we have many parties, and 3 days are given to the second largest party. Maybe we could think of this, it may stop or reduce disruption, because if opposition parties have the authority or the right to also set the agenda of the day, they will bring the topics which they want to discuss, which otherwise the ruling party may not find very compatible. Number two, I'm saying, sir, that there should be a rule that if 10 to 20% of MPs want a motion to be discussed, it should be accepted. It is otherwise a very demeaning thing that you give it in writing. 20 people are giving it in writing, and we are not getting a discussion. Ultimately, what are we wanting? Only a discussion. So I feel that it needs a review whether if a certain percentage of MPs make a request, it should be accepted or not accepted, but I feel it should be accepted, sir. Third is, today a special session of the Parliament can only be summoned by the government. That is the law in this country. But now a lot of jurists have been saying, and it may get adopted in Europe very soon, that if 25 to 35% of MPs want a special session of a Parliament for a special reason, it can get summoned. What I'm trying to say, sir, as we move into a new building, let us go for new thoughts. Let us go for new ways of dealing with problems that are going to face us or confront us very soon. It can't be a system where only the government decides. It should also not be a system where we only disrupt. It should be a system where we can also decide, they can also decide, and we can all try and work together, sir. Thank you, sir. Priyanka Chaturvedi. Sir, not used to be called out so soon. I thought end में आऊँगी. Mic on. Some mic. Sir, 75 साल की parliamentary democracy. Very briefly. Very brief, sir. 2 minute. आदत पड़ गई है. You are right. Repeated walkout का मतलब ये हुआ है जी सर कि डिबेट करने की आदत नहीं है. करती हूँ, बहुत सारी करती हूँ सर, पर पार्लियामेंट में करने का मौका नहीं मिलता है. करती हूँ सर, पर पार्लियामेंट के बाहर करने का मौका जरूर मिलता है. Go ahead. सर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के 75 साल की जर्नी के बारे में चर्चा करने का मुझे सौभाग्य मिला है. ये मैं मानती हूँ जो हमारे संविधान को बनाने में जिन्होंने योगदान दिया है
उन्होंने मुझे इतना सपना देखने का मौका दिया कि कभी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हिस्सा बनने का सपना सोच सकूं और वो सपने को पूरा भी कर सकूं। मेरी पार्टी ने मुझे ये मौका दिया है। सर, 3 साल की मेरी जर्नी रही है। उस 3 साल में सेंट्रल हॉल हो या इम्पोर्टेंट डिस्कशंस में चर्चा हो या महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा है उस पर समय बिताने का मुझे मौका मिला हो। पूरे एक सेशन में काफ़ी घंटे बिताए थे, क्योंकि राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, और मैं तो एक तिनका हूँ इस समुंदर में, पर क्योंकि ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, इस 3 साल में हमने ये भी देखा किस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार को गिराया गया, पार्टियों को तोड़ा गया, और अब 2 साल होने आ गए हैं। बहुत सारी जो लोकल गवर्नमेंट्स की हम बात करते हैं, लोकल गवर्नमेंट्स के चुनाव भी नहीं हो रहे हैं। बाय इलेक्शंस आ जाते हैं, बाय इलेक्शंस की भी नोटिफिकेशन महाराष्ट्र को लेकर नहीं आता है। तो ये एक सेंस ऑफ कंसर्न है। नए पार्लियामेंट में जा रहे हैं। हर डेकेड में 75 साल की जब हम बात करते हैं, हर डेकेड में हमने एक ऐतिहासिक बिल पास किए हैं, ऐतिहासिक कानून बनाए हैं। पर एक कानून जो मैं उम्मीद कर रही थी कि यहाँ से हम पास कर हम नए पार्लियामेंट की शुरुआत करेंगे, वो है महिलाओं के अधिकारों की बिल की बात सर, 33% रिजर्वेशन। पर वो मैं उम्मीद करती हूँ सर ना उम्मीद मत होइए, सब कुछ मुमकिन है। नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, मुमकिन है, पर यहाँ से मुमकिन होता तो ज्यादा और इस पार्लियामेंट की शान बढ़ती सर। नहीं, इंडिया है तो मुमकिन है। सर मैं बस यही कहना चाहूंगी। I got a letter from a boy of 13 years and he wrote to me that, sir, India, I dot and dot, how can it be India? You will reflect on that. सर इंडिया बोल लो, भारत बोल लो, हिंदुस्तान बोल लो, उसका जो डेमोक्रेसी का एसेंस है उसको मत तोड़ो। बस यही कहना चाह रही हूँ। बस सर वो ये पार्लियामेंट सेशंस में मैं उम्मीद है, क्योंकि एक स्पेशल सेशन है, महिलाओं के अधिकारों का समय पे चर्चा होगी और वो बिल को पास किया जाएगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के भी मैनिफेस्टो में रहा है। और हम सब विपक्ष में हम बार बार यही कहते रहते हैं कि अगर इस बिल पे चर्चा होगी, समर्थन चाहिए, हम सब मिलकर इसका समर्थन करेंगे और ऐतिहासिक स्पेशल सेशन बनाएंगे, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। माननीय सभापति महोदय, आज हम सब लोग इस संसद में इस देश के 75 वर्ष लोकतंत्र के होने पर चर्चा करने के लिए एकत्र हैं। जब हम 75 वर्ष की इस यात्रा का सिंहावलोकन करते हैं तो स्वतंत्रता से लेकर आज तक के सभी बड़े निर्णय और बड़ी घटनाएं बरबस हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं। यदि हम स्वतंत्रता से प्रारंभ करें तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि महर्षि अरविंद ने यह कहा था कि जो स्थान इस शरीर में आत्मा का है, वो स्थान भारत का पूरे विश्व में है। अर्थात आज से 75 वर्ष पूर्व सिर्फ भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, पूरे विश्व की मानवता की सोई हुई आत्मा जीवंत हुई थी। और भारत की वह जीवंतता किस रूप में आती थी, यानी हम क्या थे? 2000 वर्ष से अधिक के आक्रमण, 800 वर्ष से अधिक की गुलामी, उसके बाद जब हमने स्वतंत्रता का सवेरा देखा तो हमें समझना चाहिए वो देश था कि श्री अरविंदो ने ऐसे ही नहीं कहा था। इसके लिए कहा गया है, गायन्ति देवाः किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गापवर्गास्पद भाग हेतो भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। अर्थात वह भारत भूमि धन्य है, देवता जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं, जो स्वर्ग के समस्त पदों पे रहने के बाद मनुष्य के रूप में जन्म लेने को यहां लालायित रहते हैं। तो आप समझिए, क्योंकि मोक्ष भूमि यही है और यहीं से मोक्ष मिलता था, तो उस देश के हम प्रतीक थे जिसने आजादी की वो पहली किरण देखी। मैं मानता हूं कि लोकमान्य तिलक का पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज,
सुभाष चंद्र बोस जी की सैन्य शक्ति और बाबा साहब अंबेडकर की लेखनी की शक्ति, ये सब के सब कहीं ना कहीं इसी विचार से प्रेरित थे। और जब उस समय हम लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में यह देश ने आधी रात को नियति के साथ अपना पहला मिलन देखा, तो उसकी हमें एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के दौर में दुनिया के कई देश तबाह भी हुए, डिवाइड भी हुए। कोरिया डिवाइड हुआ, जर्मनी डिवाइड हुआ, जापान तबाह हुआ था, इजराइल ने होलोकॉस्ट सह के एक नया अस्तित्व पाया था, चीन में बड़ा परिवर्तन आया था। परंतु हम कह सकते हैं कि हमने भी उस आजादी की बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, जिसमें लाखों लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे और 1.5 से 2 करोड़ लोग बेघर बार होकर इधर से उधर गए थे, विच इज द बिगेस्ट एक्सोडस इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जब इतनी बड़ी कीमत चुका के हमें आजादी मिली तो हमें उसके मूल्य को समझना चाहिए। हां, ये सारे देश जो हमारे साथ आजाद हुए थे, ये एक दौर में बहुत तेजी से आगे हुए थे, पर आज हम कह सकते हैं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में हम उस पंक्ति में आकर खड़े हुए हैं जब उन सारे देशों के साथ भारत की गणना अग्रणी देशों में होती। अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता मनोज झा जी ने उल्लेख किया था कि आज समाज में उतनी कटुता उनको दिखाई पड़ती है जितनी विभाजन के समय भी नहीं थी। मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, विभाजन के समय कटुता की बात नहीं, दृढ़ता की कमी थी। जो दृढ़ता आज है, अगर ये होती तो शायद विभाजन का विधान ही पास नहीं होता। यदि देश विभाजन का स्वीकार विधान नहीं होता तो भारत मां का अंचल पाकिस्तान नहीं होता। अब 75 वर्ष के इस कालखंड को मैं ये कह सकता हूं तीन कालखंड में विभाजित करना चाहूंगा। पहले 25 वर्ष 1947 से 72, दूसरे 25 वर्ष 72 से 97 और तीसरे 25 वर्ष 98 से आज का समय। पहले 25 वर्ष हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय खड़गे जी ने कहा कि दुनिया को इस बात को लेकर संदेह था कि भारत लोकतंत्र रह पाएगा या नहीं। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि उस समय लोकतंत्र को लेकर भारत की डेमोक्रेसी, यदि यह कहा जाए एम्ब्रॉयनिक स्टेज में थी, यानी गर्भावस्था में थी, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी लोगों को यह शक था कि यह लोकतंत्र रहेगा, उठ पाएगा या नहीं। मगर जानते हैं किसको शक था? केवल उन्हीं को शक था जिन्हें भारत की परंपरा और भारत की व्यवस्था के बारे में नहीं था। उस गर्भावस्था के संस्कार इतने प्रबल थे हजारों वर्षों से कि मैं कोट करना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने 28 अक्टूबर 1951 को यह कहा कि डेमोक्रेसी आज भले ही हमारे लिए नई दिखाई पड़ती हो, परंतु हमारा इतना गहरा प्रभाव है कि उन्होंने कहा कि महापरिनिर्वाण सूक्त में लिखा है, जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो रहा था तो उन्होंने कहा कि जहां पर समिति बैठी हुई थी, जहां उन्होंने कहा कि वह कार्रवाई पूरी करे और उसके उपरांत ही लोग यहां पर आए, अर्थात व्यवस्था के तहत बैठकर लोकतांत्रिक निर्णय किस प्रकार से होते थे, उन्होंने इस विषय को रेखांकित किया। और नेता सदन पीयूष गोयल जी ने जब इस बात का उल्लेख किया था कि वैदिक काल में भी सभा और समिति थी, चोल साम्राज्य में हमारे कई प्रतिपक्षी लोगों ने बोला गांवों में समितियों का चयन जैसे वोट के द्वारा होता था, भगवान बासवन्ना के अनुभव मंडपम जिसमें 12वीं शताब्दी में बैठकर निर्णय होता था, वैशाली का वह गणराज्य जिसे दुनिया का पहला गणराज्य कहा जाता है, इतनी बड़ी परंपरा थी। इसीलिए सिर्फ उनको संदेह था जो भारत को भारत की दृष्टि से नहीं समझ पा रहे थे। जो भारत की दृष्टि से समझ पा रहे थे उन्हें पूरा यह यकीन था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। लोग ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी की शुरुआत, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सिर्फ हमारे यहां थी। ऐसा नहीं था। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं और देश थी उनमें कहीं भी धार्मिक विषय पे, रिलीजियस विषय के ऊपर डेमोक्रेसी का कोई उल्लेख नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। सिर्फ जो कहा गया उसे सुन लो, इसके अलावा कोई डिस्कशन का उल्लेख नहीं है। परंतु सिर्फ हमारे यहां था। वैदिक काल में शास्त्रार्थ होता था, एक ही धर्म ग्रंथ के एक हिस्से को लेकर एक द्वैत का मत है, एक अद्वैत का मत है, एक विशिष्टाद्वैत का मत है, और जो कहा गया कस्मै देवाय हविषा विधेम, यानी प्रश्न और उसके बाद निर्णय। तो मैं कह सकता हूं इंडिया
is the mother of political democracy, but also the foundation head of religious and spiritual democracy in the world, which is not found anywhere in the world. और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस भाव को भली भांति समझा, परंतु जब डेमोक्रेसी अपने प्रारंभिक कालखंड में थी 25 वर्ष के, तब उस समय यदि यह विचार किया जाए तो कहा जाता है कि सत्ता पक्ष के बहुत से लोगों ने बड़ा योगदान दिया। तो मैं भी याद दिलाना चाहता हूं हमने क्या योगदान दिया। प्रतिपक्ष के रूप में जब देश के सामने चुनौती आई तो हमने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि हम प्रतिपक्ष में हैं या हमारे साथ क्या हुआ है। 1962 की चाइना वॉर हुई तो भारतीय जनसंघ के रूप में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी का जो हमने सहयोग और समर्थन किया, और जनसंघ ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इतना सहयोग किया कि गांधी नेहरू जी ने पूरी प्रशंसा की और 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस परेड में बुलाया। 1965 वॉर में लाल बहादुर शास्त्री जी का जिस प्रकार से सहयोग किया, यह पूरी तरीके से ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में जनसंघ के अध्यक्ष नहीं, गुरुजी को भी बुलाया था। ये पहले 25 वर्ष में आगे बढ़ते हुए जब हम 1972 के पास पहुंचे तो आप सभी बड़े गर्व से कहते हैं कि 71 की वॉर के समय अटल जी ने इंदिरा जी की भूरी प्रशंसा की थी। ये होता है विपक्ष के रूप में लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए एक सकारात्मक भूमिका निभाना, और कैसे उस प्रारंभिक अवस्था में हमने आगे किया। वैसे मैं ये भी कह दूं, वो अटल जी ने वो नहीं बोला था जिसके बारे में बहुत ज्यादा बोला जाता है, क्योंकि इंदिरा जी की ऑफिशियल जीवनी पुपुल जयकर जी ने लिखी थी और उन्होंने बहुत खोजा था मगर वो चीज नहीं मिली थी जो कहा जाता। परंतु ये ईमानदारी की बात है कि वह प्रशंसा की थी और उसके द्वारा देश बढ़ता हुआ आगे तक पहुंचा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि पहले कालखंड में विपक्ष के रूप में हमने डेमोक्रेसी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला कालखंड आता है 72 to 97। इसे मैं कह सकता हूं कि दिस इज द नेसेंट स्टेज ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि पहले कालखंड के 25 वर्ष में चुनाव होते थे, सरकार नहीं बदलती थी। तो सरकार नहीं बदलती थी तो लोकतंत्र का दूसरा स्वरूप नहीं आता था। अब 72 से 97 वाले कालखंड में सरकारें बदलनी शुरू हुई। लोकतंत्र ने इमरजेंसी का वह काला अध्याय देखा जो कि बहुत दर्दनाक और दुखद था। परंतु आज के इस अवसर पे मैं उसके डिटेल में न जाते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारत का लोकतंत्र इतना जीवंत था कि जेपी के नेतृत्व में हम लोगों ने वो आंदोलन खड़ा किया कि चाहे जितनी भी दमनकारी शक्ति थी, अंततः भारत में पहली बार केंद्र में सत्ता का परिवर्तन 1977 में हुआ। ये बदलाव आया और उसके बाद एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं कि जब एक गठबंधन बना था सभी लोगों को मिलके, मगर बहुत जल्द ही वो गठबंधन कुछ छल में, कुछ प्रपंच में, कुछ अहम मान्यता में बिखर गया था 1979 में। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं इस संसद ने वो भी देखा कि ये 24 दिन की सरकार बनी, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए, और उस समय अटल जी ने दुखी होकर एक कविता लिखी थी। आप सबने वो तो सुना होगा ना, गीत नया गाता हूं, पर उन्होंने लिखा था गीत नहीं गाता हूं। उन्होंने लिखा था उस समय की घटना से दुखी होकर कि लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। आज मेला कई बार लग चुका है, पटना से लेके बेंगलुरु से लेके मुंबई तक। मेले में कौन किसका मीत है ये तो शायद अंदर बैठे वालों को ही पता होगा कि उन्हें मीत मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो मैं कहता हूं कि अटल जी की यह बात हमें एकदम उचित और उपयुक्त नजर आती है। इसके बाद उस कालखंड में 1980 का दशक आया जब इस देश ने एक ऐसा दौर भी देखा जब 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सत्ता में वापसी हुई। तो अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता और कई लोग कहते थे कि सरकारों को हटाया गया, विपक्ष की तमाम सरकारें केवल इस आधार पर बर्खास्त कर दी गई कि केंद्र में आपकी पार्टी चुनाव हार गई है तो राज्यों में आपको शासन करने का अधिकार नहीं रह गया है। मुझे लगता है कि इस आधार के ऊपर सरकार केंद्र में आई और उसने विपक्ष की सारी सरकारों को एक झटके में बर्खास्त कर दिया। यह भी लोकतंत्र के लिए एक चुनौती का दौर था। और 80 के दशक में दो सबसे शक्तिशाली सरकारें हम लोगों ने देखी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 2/3 बहुमत की सरकार और राजीव गांधी जी की 80% बहुमत की सरकार। मगर इसी समय में देश ने बहुत बड़ी चुनौतियां, यह भी विडंबना थी कि सबसे शक्तिशाली बहुमत की सरकारों के दौर में आतंकवाद भी देश ने सबसे भयानक रूप में उठता हुआ देखा।
फिर एक दौर आया जब 1980 के दशक का अंत हुआ और उस समय राष्ट्रवाद एक नए स्वरूप में उभरा, भारत के समाज में भी परिवर्तन आया, सामाजिक न्याय एक नए स्वरूप में उभरा, श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन उभरा और इस देश की पॉलिटिक्स यूनिपोलर से बाइपोलर हुई। जब 1991 में हम लोग मुख्य विपक्षी दल बने 120 सीटों के साथ और उसी समय अर्थव्यवस्था का भी पुराना ढांचा टूटा। जो नेहरूवियन मॉडल था वो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और श्री पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसको समाप्त किया। और मुझे याद है, मैं तो बहुत बच्चा था उस समय, स्टूडेंट था, उस खुली अर्थव्यवस्था में भाषण देते हुए सदन में अटल जी ने बड़े चुटीले अंदाज में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिए गए हैं, कह दिया गया अब खुली अर्थव्यवस्था आ गई है, मगर उन्होंने कहा सभापति महोदय जितने दरवाजे आगे के खोले गए उतने पीछे के दरवाजे भी खोल दिए गए। और फिर उन्होंने कहा कुछ तो ऐसे भी हैं जो पीछे के दरवाजे ही नहीं रोशनदान से भी अंदर आने के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। इस प्रकार से उन्होंने उस खुली अर्थव्यवस्था का समर्थन और उसकी विद्रूपता के ऊपर एक अटैक भी करने का कार्य किया। और फिर इस देश ने वो दौर भी देखा जब 13 दिन की सरकार बनी और उस 13 दिन की सरकार ने इस संसद के इतिहास में मील का पत्थर स्थापित कर दिया। जब संसद की सीधी कार्रवाई का प्रसारण हमने उस 13 दिन की सरकार में प्रारंभ किया तो लोकतंत्र में पारदर्शिता और संसदीय कार्य की पारदर्शिता में मील का पत्थर हमने 1996 में 13 दिन की सरकार में स्थापित किया। फिर 97 में चूंकि अब हम उत्तरोत्तर शक्तिशाली होते जा रहे थे तो सब मिलकर हमारे खिलाफ एकजुट थे और इस संसद में वो दृश्य भी देखा कि सामान्यतः सरकार में एक दल होता है और बाकी सब दल विपक्ष में होते हैं। इस 50वें साल में हमने वो दृश्य देखा कि विपक्ष में एक दल था और बाकी सारे दल सरकार में थे, सरकार के साथ थे या सरकार के अंदर थे या सरकार के बाहर थे। जिसमें आप सबको वह ध्यान होगा जो प्रमोद महाजन जी ने बोला था कि वो विदेश में गए और उनका परिचय हुआ चाइना में कि साहब हम सबसे बड़े दल हैं और हम सरकार से बाहर है, विपक्षी दल है। फिर उन्होंने कांग्रेस के सदस्य का परिचय कराया, दूसरे सबसे बड़े दल हैं मगर ये सरकार में नहीं है, समर्थन कर रहे हैं। फिर तीसरे व्यक्ति का परिचय कराया और कहा कि साहब ये सरकार के साथ है मगर मंत्री नहीं है, सरकार में नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि रमाकांत कलब जी थे, उन्होंने कहा जी ये एकमात्र सांसद हैं अपने दल के और ये सरकार है। तो मेरे विचार से संसद का यह स्वरूप भी उस समय हमने देखा। वैसे इस अवसर के ऊपर मैं कोई चुभती बात नहीं करना चाहता, पर यह भी याद है कि 97 में गुजराल जी की सरकार किस मामले पे गई थी। जैन कमीशन की रिपोर्ट, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की दुखद हत्या और उसको लेकर कुछ लोगों के पार्टियों के नेताओं के साथ संबंध को लेकर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार गिराई गई थी और कहा गया था कि यह सरकार नहीं चल सकती यदि डीएमके के साथ समर्थन वापस नहीं लेते। परंतु कोई बात नहीं, आज 25 साल के बाद राजीव गांधी जी के प्रति श्रद्धा का ज्वार गठबंधन के खुमार में कहीं दब गया है और इसलिए अब परिस्थिति भिन्न है। अब मैं आता हूं इस कालखंड पे 1998 से 2023, ये तीसरा कालखंड जो हमारा हुआ, इसकी शुरुआत हुई पोखरण के विस्फोट के साथ। भारत की शक्ति का उदय हुआ और भारत में एक अंतर मैं और स्पष्ट कर दूं, 1974 में भी इंदिरा जी ने परमाणु विस्फोट किया था और 98 दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस यह था कि 1974 में हमारे घोषणा करने से पहले सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों ने घोषित कर दिया था कि भारत ने टेस्ट किया है। परंतु जब हमने 98 में किया तो जब अटल जी ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तब तक अमेरिका को भी नहीं पता था कि परमाणु विस्फोट हो गया है। और दूसरा, 98 में हमने 5 एक्सप्लोजन किए थे जिसमें हाइड्रोजन बम से लेके सब किलो टन तक के थे और अंतर यह था कि 74 में हमने कहा था कि हमने शांतिपूर्ण पर्पस के लिए किया है। 98 में हमने कहा नाउ वी आर द न्यूक्लियर स्टेट और हमने अपने को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया था। फिर इसी सदन में एक और भी चीज हुई जो सभापति महोदय, कभी कभी क्या होता है टेक्निकलिटी और मॉरलिटी के बीच की धारा बहुत छोटी होती है। अप्रैल 1999 में एक वोट से सरकार गिरी और वो एक वोट किसका था? उस समय श्री गिरधर गोमांग जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन चुके थे, तो टेक्निकली तो वो संसद के में वोट कर सकते थे, पर मैंने कहा ना टेक्निकलिटी और मॉरलिटी के बीच की जो धारा होती है
वो बहुत हल्की होती है। खैर कोई बात नहीं, 1 फुट से सरकार गिरी, परंतु उसके बाद पुनः हम लोग आए पुनः हम लोग सत्ता में आए। उसके बाद 2004 का दौर आया। 2004 में हम 7 सीटों के अंतर से चूक गए, परंतु मैं यह भी कहना चाहूंगा उस दौर में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज बहुत सारे विदेश के अखबारों संस्थानों को लोग कोट करते हैं, कई विदेशी अखबारों ने और कई अंतरराष्ट्रीय बुद्धिजीवियों ने, जिसमें भारत के भी थे, नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे, उन्होंने 2004 में कहा था एक बात कि इंडिया इज अ मार्वेल ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि उन्होंने कहा a leader of the ruling party who is a Christian lady is asking a Muslim president to appoint a Sikh as prime minister of the country when 80% are Hindus. That's why India is a marvel of democracy. और मैं कह सकता हूं यही crux of democracy है, ये मूल भाव है जिसकी वजह से यहां सबको समान रूप से रहने का मौका मिलता है और आगे चलने का मौका मिलता है। आगे के 10 वर्षों के ऊपर मैं इस समय में बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे विचार से इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। वो सबको यह बात पता है कि उस कालखंड में क्या हुआ। अब मैं आता हूं 2014 पे। जब 2014 में 16 मई 2014 को श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला, तो उस समय परिस्थिति यह थी कि मैं याद दिलाना चाहता हूं 18 मई 2014 लंदन के संडे गार्डियन ने अपने आर्टिकल में लिखा, सिर्फ पहली लाइन बोलूंगा, आगे का नहीं बोलता हूं। उन्होंने कहा दिस इज द इंडिया सेकंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। यह नियति के साथ दूसरा मिलन था, क्योंकि पहली बार एक ऐसे दल को सत्ता मिली थी जिसका उत्पत्ति विचार स्वतंत्र भारत में हुआ और पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को स्पष्ट बहुमत मिला। परंतु यह सरकार सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं थी, यह विचार बदलने के लिए थी। और इसीलिए मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद वो कुछ ऐसे विषय उठाए जो कहा गया नॉन पॉलिटिकल है। जैसे उन्होंने कहा स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विषय कहा, परंतु ये विचार बदलने के लिए था। आज आप देखिए हमारे आप में से किसी के भी हाथ में कोई पैकेट और रैपर होता, जैसे पहले कोई आसानी से लोग फेंक दिया करते थे, अब ऐसा नहीं होता। और अगर उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा तो नवजात शिशुओं के लिंग अनुपात में भारी परिवर्तन दर्ज किया गया है और इस साल पहली बार ऐसा हुआ है नवजात शिशुओं में लड़कियों की संख्या अधिक आई है। यानी ये इतना बड़ा परिवर्तन आया। और अभी उदारता की बात कर रहे थे हमारे खड़गे जी, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इसी दरमियान स्टैंडिंग कमेटीज की जब बात होती है तो जो बिल आए हैं 2014 के बाद सरकार की तरफ से, तो उसमें 46 बिल्स आए हैं, जिसमें 14 स्टैंडिंग कमेटी को और 23 सेलेक्ट कमेटीज को गए। यानी 46 में 37, 80% बिल पार्लियामेंट्री कमेटीज को गए हैं। यह फैक्ट भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसी के साथ मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा था थोड़ा बड़ा हृदय होना चाहिए। तो याद करिए मोदी जी का पहला भाषण 2014 में जब उन्होंने क्या कहा कि हम तो समाज के सबसे गरीब व्यक्ति की तरफ नजर रखते हैं, क्योंकि हम दीनदयाल जी के अंत्योदय से प्रेरित हैं। और आगे उन्होंने कहा महात्मा गांधी हो, लोहिया जी हो या दीनदयाल जी हो, सभी का विचार इसी भाव से प्रेरित था। हमने इसकी कोई चिंता नहीं की कि कौन हमारी पार्टी का है कौन हमारी पार्टी का नहीं। और विशाल हृदय तो इतना दिखाया कि सरदार पटेल की दुनिया की सबसे विशाल मूर्ति बनाकर दिखाई। हमें इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि उनके कालखंड में भले ही आरएसएस पे बैन लगा हो, परंतु जिसने देश के लिए इतना ऊंचा काम किया उसका मुकाम भी उतना ऊंचा होना चाहिए। फिर मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, मोदी जी के ही कालखंड में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, हमने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न नहीं दिया, प्रणब मुखर्जी जी को भी भारत रत्न दिया। हमने तरुण गोगोई जी को भी पद्म भूषण दिया, एससी जमीर जी को भी पद्म भूषण दिया। मुझे लगता है शायद इससे ज्यादा उदारता बगैर इस बात की चिंता किए हुए कि कौन हमारी पार्टी का है कौन हमारी पार्टी का नहीं है, भारत के इतिहास में यह देखने को नहीं मिलता है जो उदाहरण उन्होंने दिया। हां, यह जरूर कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे लोग, उनको इसमें भी उदारता न नजर आई हो जो बाबा साहब का बहुत उल्लेख करते हैं, और बाबा साहब को भारत रत्न देने में इतना लंबा समय लग गया था, उनके कालखंड में नहीं मिला था। हमारी जब सरकार आई तो अटल जी की सरकार के समय में जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी, उस अलीपुर रोड बंगले को सरकार ने लेकर उसको स्मारक बनाया। मोदी जी ने मुंबई में
और लंदन तक जाके जिस मकान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर रहे थे, भारत सरकार ने उसको लेकर उसे स्मारक बनाने का काम किया और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में उसको स्थापित किया। तो यह दर्शाता है कि हमने सभी के प्रति जिसने इस देश के लिए जो योगदान दिया, उन सब के प्रति हमने ईमानदारी से और पूरी दृढ़ता के साथ इन 75 वर्षों में यह करने का प्रयास किया है। और एक और बड़ा परिवर्तन आया। देखिए, जब इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने, परंतु वो ईश्वर की कृपा से एक समृद्ध परिवार से आते थे। उनके बचपन से उनके मुंह में सोने का चम्मच था और आज 75 वर्ष के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने बचपन प्लेटफॉर्म पे दौड़ते हुए चम्मच और चाय के गिलास को लेकर दौड़ते हुए गुजारा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अंतर यह आया है कि यह लोकतंत्र की परिपक्वता है। इसका हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि अब लोकतंत्र लक्ष्मी नारायण की कृपा से लेके दरिद्र नारायण के सम्मान तक आके खड़ा हो गया है। यह परिवर्तन इस 75 वर्ष में लोकतंत्र में आया है। और इस संसद में भी जो 4 सर्वोच्च पद माने जाते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, आज राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आज हम कह सकते हैं कि जनरल क्लास हो, शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी क्लास हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो या माइनॉरिटीज हो, आज अब कोई भी वर्ग ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे संसद के 4 सर्वोच्च पदों में से किसी एक पर कभी प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। ये लोकतंत्र में को हमने उस मुकाम तक पहुंचाया है इस अमृत काल में। मेरे विचार से इसके लिए भी मोदी सरकार का अभिनंदन किया जाना चाहिए। और यह भी मैं बताना चाहता हूं, इस समय यह भी एक सुखद संयोग देखिए कि सभी पदों पर बैठे हुए लोग वो हैं जो आजादी के बाद उत्पन्न हुए हैं। अर्थात अब स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भाव का नेतृत्व इस समय संसद में भिन्न भिन्न रूप में आगे चल रहा है। शक्ति सिंह गोयल जी ने कुछ बात बोली थी, मैं उनका भी जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने एक दोहा बोला था, हम लोग इधर भी गांवों में बोला जाता है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया जी, आपके एक वाक्य को देखकर बाहर गए। नहीं मान्यवर, उन्होंने एक सेंटेंस बोला था, हम लोग इधर भी गांवों में कहा जाता है, कहे घाघ सुन भट्टरी यही गांव में रहना है और ऊंट बिलारी ले गई हाजी हाजी कहना है। वो कह रहे थे कि हाजी हाजी कहना पड़ता है, ये तो उनके मन की कल्पना थी। मैं सिर्फ 3 चीजें कोट करता हूं, किसी के प्रति कुछ नहीं। मौलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम, उसके आखिरी वो 30 पन्ने जो उन्होंने कहा था मेरी मृत्यु के 30 वर्ष के बाद पब्लिश हो, उसको पढ़ लीजिए। श्री पीवी नरसिम्हा राव की किताब द इनसाइडर, जिसका हिंदी अनुवाद अंतर्गाथा के रूप में भी विद्यमान है, वो भी पढ़ लीजिए। और श्री नटवर सिंह जी की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ पढ़ लीजिए। तो फिर मेरे विचार से शक्ति सिंह गोयल जी को वह शक्ति मिलेगी कि हाँ जी कैसे कहना है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, खड़गे जी ने G20 पे कहा कि कमल का फूल दिख रहा था। मान्यवर, G20 में जो कमल का फूल था वो 5 पंखुड़ियों वाला फूल है जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। हमारा कमल का फूल 8 पंखुड़ियों वाला है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उनको ध्यान रखना चाहिए कि आज अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो हमें इंटेलेक्चुअली भी आगे बढ़ना है, फाइनेंशियली भी। हमें लक्ष्मी जी की भी कृपा चाहिए। सर 1 मिनट और, हम कंक्लूड कर रहे हैं सर। हमें लक्ष्मी जी की भी कृपा चाहिए और सरस्वती जी की भी कृपा चाहिए, और दोनों ही कमल पे विराजती हैं। तो जितना कमल खिला रहेगा हमारा प्रगति का मार्ग उतना ही प्रशस्त रहेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, बस समराइज कर रहा हूं सर 1 मिनट में, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर G20 में हमने वो विकास दिखाया कि आज 7.8% के साथ हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती व्यवस्थाएं। आज दुनिया में क्या स्थिति है, चाइना की, अमेरिका की, यूरोप की, पाकिस्तान और श्रीलंका छोड़ दीजिए। तो मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा मोदी जी के लिए, और सर एक लाइन उसके बाद और आपसे मैं मोदी जी के लिए जो आप लोगों के मन में भाव आता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस विपरीत परिस्थिति में जैसे देश को चलाया है, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी चिराग अक्सर हमने जलाए। मेरे को अंत में सर 1 मिनट, अंत में मैं अटल जी की उस पंक्ति से समाप्त करता हूं। आप सबसे आह्वान करता हूं, नई संसद में जा रहे हैं तो वो जो उनकी पंक्ति थी कि आओ मिलकर दिया जलाएं,
तो मैं ये कहना चाहता हूं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अपने लोग ही कुछ विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। और यज्ञ का धुआं उन सारे वायरस को नष्ट करे जिसमें डेंगू भी है, मलेरिया भी है, कोरोना भी है, HIV भी है। जो मन में बैठा उस वायरस को नष्ट करे और एक भारत श्रेष्ठ भारत का मार्ग प्रशस्त करे। Mr. Derek O'Brien, 10 minutes, please. So how many minutes? 10 minutes, 10 minutes. So we had 21. No. My colleague has spoken for 4. No, I adjusted most people. So that's not how we have done it. My colleague, we have 21 minutes. No. My colleague has spoken Mr. for Derek, 3. I've got 18 minutes, sir. Mr. Derek O'Brien, the time so of 18 minutes. One second. Listen to me now. The board is saying 18 minutes, sir. Look at I have not even started. The board is saying 18 minutes, sir. You are telling me 10 minutes. I am aware of it. The ruling party time is still left for 1 hour because I have accommodated the opposition. Sir, my board is saying 18 minutes. Okay, please go ahead. If you can't understand this simple thing that I have accommodated opposition out of ruling party time of more than 1 hour. I can only understand. Okay, please. I can only understand my Trinamool Congress was given 21 minutes. Okay. My colleague has spoken for 3. Please, your time is already on. Give me back my parliament. Please. Okay, go ahead. Give me back my parliament, which is not mocked. Give me back my parliament, which is not undermined. Give me back my parliament, where prime ministers come and answer questions on the floor of Lok Sabha and on the floor of Rajya Sabha. Last 7 years, not a single question answered on the floor of parliament. Give me back my parliament, where urgent national issues can be discussed from 11 o'clock in the morning on a special rule. Last 7 years, not one notice given by the opposition has been accepted. Give me back my parliament, where we get to see the Honorable Prime Minister regularly here with us. In 2021, our Honorable Prime Minister was here in 1 year for 4 hours and 3 minutes between 2 houses. Give me back my parliament, where members are allowed to vote when bills are put to vote and not the sacrilege which happened during the farm bills. Give me back my parliament, where we have a deputy speaker in the Lok Sabha. 5 years, still no deputy speaker. Give me back my parliament, where policy making is collaborative, not dictatorial. On record, I say, not from 2014 to now, 1 out of 10 bills are sent to parliamentary standing committees for scrutiny. Give me back my parliament, where legislation undergoes rigorous stakeholder evaluation. On record, I say, 9 out of 10 bills marked by 0 or incomplete pre-legislative consultation. 9 out of 10. Give me back my parliament, where bills are passed, keeping this House in mind the Council of States, the federal structure. On record, I say, about 1 out of 3 bills passed have been anti-federal, hurting the states. Shame. And on a personal note, we may be going to the new building. Give me back my parliament. We may be in the new building, sir, but so many bonds, so many friendships, so many crossing of ideological barriers, so many times where we've condoled with colleagues from different parties who've lost their loved ones or celebrated the births of grandchildren. We used to do this in Central Hall. Sir, give me back my parliament. Let's go to the new parliament, but keep our Central Hall alive. Give me back my India. Give me back my Bharat. Give me back my India, where a state is not consumed by violence for 5 months. Sorry, Manipur, we still haven't managed to send our Honorable Prime Minister to you. From all of us, sorry.
Give me back my India, where 1 out of 3 youth are not unemployed. Give me back my India, when double-digit food price inflation does not lead to 3 out of 4 people here who cannot afford a healthy diet. Give me back my India, where crimes against women are met with the harshest punishments, where our champion athletes don't get sexually harassed, where abusive men in power are not shielded. Yes, my party doesn't, All India Trinamool Congress led by Mamata Banerjee needs no lectures on women's reservation bill. Whether you bring the bill, don't bring the bill. We already have 1/3 of our elected representatives here in Parliament. But don't spare the men who have done what they have done. Doesn't matter whichever party they come from. Give me back my India, where farmers are guaranteed MSP for crops, where farmer suicides are a thing of the past, where farmers get prioritized over large corporations. 10,000 farmers committed suicide in 2021. Give me back my India, where the Prime Minister pays condolences when Jawans are martyred and not attend party functions. Don't show us hollow nationalism to win political points. Give me back my India, where states, and I say this from the Council of States, are not deprived of funds because a state's political ideology is different from the union's political ideology, and my Bengal, our Bengal, is deprived of 10,000s of crores of funds. Give me back my India, where its crown profitable PSUs, where its crown jewels, rail, SAIL, BHEL, BSNL, are not privatized. Give me back my India, where people's hard-earned money is not used to cover up frauds and corporate losses amounting to about 13 lakh crores. Give me back my India, where economic offenders loot this country and then flee to another land, while the common people here have to face gas cylinder and price rise. Give me back my India, where institutions are systematically weakened to be subservient to the ruling dispensation. Give me back my India, give me back my Bharat. You have lost your track. Where the subject is specific. Yes, Mr. Derek O'Brien, don't look around. Each word you said had nothing to do with the subject. Sir, I am on this, just 1 minute. Sir, my subject is, sir, discussions. 2 minutes, 2 minutes. What is 2 minutes, sir? 2 minutes. What is 2 minutes? I have got 16. Sir, I'm reading from here, sir. Parliamentary journey of 75 years, achievements, experiences, memories, and learnings. Yes. As a parliamentarian of 13 years, I'm sharing my learnings here in the Council of States. Please allow me, sir, to express myself. I disagreed with a lot of what the BJP spokesperson said. Brilliant speaker. I disagreed with his ideology. We quietly sat. No one disturbed him. He spoke. That was his view. Let me express my view. Give me back my... I'll conclude at 6 o'clock. You can continue to 5:58. Give me back my India, where media owners, let's not blame the journalists, where media owners are enslaved by the party in power. Real journalists will remain real journalists. The real villains are the media owners. You say party in power in Delhi or Give state? me back, sir, I'm making a speech. If it's somebody's right to make a speech, it is your right also to give commentary. I will keep quiet and sit down then, sir. Humbly I say. We don't interrupt, we expect not to be interrupted. I was just getting informed. When you say party in power, we are a federal structure. Right, sir. You're right. Is it center or so state right, also? You're right. So the party in power... And you know why I'm asking? It's a 75... No one knows better than you do why I'm asking. Okay, sir.
Mr. Modi's Bharatiya Janata Party. Give me back my India, where the government does not have to revise the methodology of calculating GDP to make its numbers appear artificially higher. This has been changed. Give me back my India, where slums are not covered with green curtains when we are hosting international events. Give me back my India, where dissent does not mean jail. Father Scan, Siddiq Kappan, Barbara Rao, Gautam Navalkha, Anant Teldumbe, and so many. Give me back my India, where religious propaganda does not trump science. Champions we have, sir, the champions of Chandrayaan. Give me back my India, where citizens do not die because of one man's whimsical announcements of demonetization at 8 p.m. And if we are talking about positive, look at the policies by some state governments like in Bengal, where there's a migrant policy in place, there's a migrant board in place. Please, let's learn from states. Sir, give me back my India, where statistics and data were not the enemy of the state. Give me back my India when the environment wasn't sacrificed at the altar of corporate profit. Give me back my India where language was a means of communication and not for Siva and not for everybody else who are now marked out. Thank you. As Thank you. Sir, I don't believe this. Sir, I do not believe this. I humbly appeal to you. My party has 18 minutes. 1 second. No, sir. How much more humility do you want us to show? 1 second. Sir, my party has 1 second. Honorable members, throughout the discussion today, valuable inputs have been provided by members by stating their experience and memories. Some inputs have also been provided. Nothing will go on record. Some inputs have been provided on the future of roadmap. In all, we had a very meaningful and purposeful discussion on parliamentary journey of 75 years, starting from Sindhan Sabha, achievement, experience, memory, and learning. Honorable members, 1 second. Honorable members, I could not have been more fair to the opposition. Sir, you have not given me my time. What are you talking about? Of this. What do you want me to be? Sit like a pussycat. You've taken my time. The House stands adjourned to meet at 2:15 p.m. tomorrow, Tuesday, the 19th September 2023, in Rajya Sabha chamber of the new building of Parliament. 1 second. If you want to hear me, leader of the opposition, would you take your seat? Take your seat. Leader of the opposition took his entire time. I accommodated them. The House stands adjourned to meet on Tuesday at 2:15 p.m. 19 September 2023 in Rajya Sabha chamber of the new building of Parliament.